at 9:30. The participants over here and at Bharatpur also, please be on time from tomorrow. Okay, yesterday my session was a little, incomplete. I'll complete my session and then I'll take another session, which is a sort of, a relevant session to this session only. So I take the session which is in the schedule a little later, but I will just continue. Okay. Okay. The next is the need for entrepreneurship education, or need for entrepreneurship development. So the first is unemployment, because we have a lot of unemployment in the country. I mean, you know very well. Many people are unemployed. And we need to divert some of the people towards self-employment or basically entrepreneurship. So that they can become the entrepreneurs, and then they can in turn further have some, they can employ some more people also. Next is promoting economic development in the country. We want the country to grow basically, so not only for the sake of removing the unemployment, but even for the sake of letting the country grow. We need some more entrepreneurs. See, the countries which have grown in the entire world, you talk of the USA, talk of all these countries, they have lots of entrepreneurs. So it is, sorry. So it is basically the entrepreneurs which take the country forward. So you see, any developed country, you will find a lot of people who are entrepreneurs over there. So that is the second reason basically. Then we talk of this poverty. We say why entrepreneurship? Poverty exists everywhere and is a big challenge. In fact, if you see this entire this this South Asian continent, many countries are like developing or underdeveloped, and there's a lot of poverty here. In our country, we have almost 26% people below the poverty line. Our country is a huge country, almost 125, 126, this thing, crore people, and 26% of that is a huge figure. I was in the Philippines for 3 years, and there around 40% of the people are below the poverty line. I mean, a whole country's 40% population is below the poverty line. So this is a very big challenge there. And even this United Nations MDG, Millennium Development Goal, they aim to eradicate extreme poverty and the hunger. So how to eradicate the poverty? If you listen to some of the great speakers, they'll talk of only two to three things only. One is they'll talk of the skills, the technical vocational skills. Then they talk of this entrepreneurship or self-employment basically. Make the people skillful, give them hands-on skills, teach them how to become a self-employed or an entrepreneur, and then they can remove their poverty. Thus, poverty has, they say, says a vicious cycle is there. There's a low saving and low this thing. When you have a low income, this value this thing, then there are low savings because income is not there. Low savings, low pace of capital formation. You do not have the capital. You cannot buy the latest machinery, so you have a low productivity, and again you have a this thing, low income. So it's a vicious cycle. So there's a need to break this vicious cycle of poverty by promoting entrepreneurship, by promoting self-employment, and by promoting technical vocational skills basically. This is a vicious cycle of poverty, illiteracy, low technology, and rapid population growth. The combination of all these things. We have a poverty. Poverty leads to the low level of education. People are not that much educated because they do not have the money to pay for the education. Low level of literacy, low level of skills. People do not have the skills. Hurdles in the use of technology because they do not have the skills, so they cannot use the latest technology also. In addition, there is a rapid growth of population in our countries, in all this, this Asian, South Asian countries basically, and inadequate output and food, and then there's a poverty. So again, this is a vicious circle. We need to break this, vicious circle by promoting, of course, all this, entrepreneurship and all those things. Okay. The role of TVET, Technical Vocational Education and Training Sector. This is the quotation by Dr. Quisem Bing. Dr. Quisem Bing is a former Minister of Education in the Philippines. She is around 81 years of plus, this young lady, but very energetic. I have been with her to many of the conferences in different parts of the world. So she gave this statement in one of the German conferences at Univoc, German. And this became a part of their declaration basically, UNESCO Univoc Declaration. She said that if education is the key to the development, then TVET, which is Technical Vocational Education and Training, is the master key, which opens the doors to the poverty alleviation and greater equity, justice,
and fairness, particularly for the most vulnerable and marginalized groups in our societies. So if education is the key, then the technical vocational education is the master key, you know, because you make a people more, hands-on, more, skillful person through this technical vocational area basically. And that once the people are skillful, once the people they have the hands on this thing, practical training, then they can remove their poverty, of course, because if people are, like right now, if you, you see if people, they just let us say, get some IT, let us say, some vocational this thing, some IT they get, they can go to any part of this world. They can go to Canada, they can go to Dubai, they can go to any part of the world, then they can earn over there. So that is the benefit of having a skill, basically. The only way to reduce poverty in a sustainable way is to promote economic growth through wealth and employment creation. In developing countries, SMEs, small and medium enterprises, are the major source of income, a breeding ground for the entrepreneurs, and a provider of the employment. So the SMEs, the basic purpose is to promote this SMEs or the MSMEs we say in our country, the micro, small, and the medium enterprises. So that is the purpose of promoting this entrepreneurship, to promote micro or the tiny, small, medium enterprises basically. That is, that is a way, once then grow to the large scale sector also. So we need to, this promote this entrepreneurship so that the people can set up their own MSMEs and then they can, the country can grow. This is again a quotation by Ronald Reagan, the US president in 1987. He said, "A healthy small business sector is more than a reflection of the national well-being. It is an active force for change. Half of all the major innovations in the past 30 years were generated in small companies. So it's a breeding ground for the innovations also. Most of the innovations, they do take place in the small businesses basically. The result of all this innovative activity is new companies and more employment for our workers." Some statistics, the importance of the SMEs to the national economy. If you see certain countries like Hong Kong, Japan, SMEs as a percentage of the enterprises. So more than 95% is basically the SME sector only. In any country, more than 95% is the SME sector. It looks a little small and medium, but it is not that small. And the employment which they generate, it's like 60%, 69%, 45%, 70%. So they generate more employment as compared to the large scale sector. The SME sector has more propensity to have more employment, generate more employment as compared to the large scale sector basically. 140 million SMEs in 130 countries employ 65% of the total labor force. So almost 65% of the total labor is being employed by the SME sector, and that is a very the purpose of promoting this entrepreneurship. People should set up their own small and medium enterprises. In Asia Pacific region, the SMEs contribute 30 to 60% of the GDP and 35% of the region exports. They provide high employment opportunities at lower capital investment. If you put the same amount of money in a small scale sector and the same amount of money in a large scale sector, the small scale sector will generate more employment as compared to the large scale sector. So employment generation is more in a small scale sector or a medium scale sector rather than a large scale sector. They harness the locally available resources and local entrepreneurship. The local resources, if you are, in let us say Rajasthan, so the local resources, the stones, the marbles, the granites, you use the local resources basically, the local people basically. That is a benefit. They provide balanced economic and regional development because a SME or an MSME can be set up anywhere, in any part of the, whether it's urban or rural or semi-urban or semi-rural, So there's a balanced sort of, regional development and economic development. They help in reducing unrest and social tension amongst the youth because many people are, right now unemployed. They people have done their degrees and master's degrees, but they are unemployed. So if they can be channelized towards, setting up their own small businesses, so the so-called problems, of this unrest and social tension, they can be removed because once the people are employed productively in any field, so they will, they will do a lot of constructive work over there, creating more innovations in the enterprises. This is the distinction between the entrepreneurship and self-employment because people sometimes tend to, use it interchangeably. But there is a distinction. If you see the bigger circle, that is the income generation activities, which includes all the wage employment, that is a job, self-employment, and then the entrepreneurship. So the bigger circle contains all the three activities: the jobs, self-employment, and the entrepreneurship.
The next is the self-employment. What is self-employment basically? What is self-employment? Who is a self-employed person? No, not the entrepreneur. Okay. Uh, okay. See, the person who starts a very small sort of you can say an activity or a business basically, just for the sake of his own survival or for his family member survival. So any small redi wala, pan wala, bedi wala, small shopkeeper who is just managing on his own, he is a self-employed person. But the person who expands his business, who employs more people, who generates employment, he becomes an entrepreneur. So you see, all the entrepreneurs are basically self-employed people. But all these self-employed people, they are not the entrepreneurs. They are not the entrepreneurs. Okay. This is the characteristics of the wage employment and entrepreneurship. You can see the comparisons. The nature, wage employment is a job basically. First is the self-saturating. That means if you enter into a job, till the time you leave that position, the job is occupied. The seat is occupied. The position is occupied. Okay. In entrepreneurship, is self-generating because you generate more and more employment. You expand. You generate more employment. Scope is limited. You get a limited sort of salary in any job, whether you are the director or the vice chancellor. This fixed salary is there. There it is unlimited. I was talking of Dhirubhai money yesterday. So unlimited. People can earn in lakhs and lakhs of crores of rupees. Orientation is a routine type. We do a routine type of job. Status quo, we want to maintain a status quo. Problem avoiding, normally attitude in the job sector, and we are dependent on the seniors or bosses. We're dependent. In entrepreneurship, you are creative, you are innovative, you are a problem solver, and then you take independent sort of decisions basically. Satisfaction is through compliance. You get some orders from your bosses, from your HOD or from your director. You comply, and then you feel very happy. Okay, I've done my job. There it is through pursuing new goals basically. They have to have new goals. Contributions, we are consuming wealth, they are generating wealth. Earnings are fixed, there it is growing and generating surplus. And most importantly, the status is of that of an employee. And there you are the employer. So you become an employer. Many people and their families are dependent on you because you are an employer basically. The factors influencing entrepreneurship, many factors they influence entrepreneurship. I'll take them just one by one. You see, first is individual factors. Individual factors means your nature basically. If you are a risk taker, if you are a creative person, if you are an innovative person, so you have a more propensity to become the entrepreneur. But if you are not a risk taker, if you are not a hard worker, if you are not sincere, if you do not have a vision, you may not be able to become an entrepreneur. So your personal, individual, characteristics they affect. Then the environment where you are living, the entire environment of that place or your home or that city or that country, where you are living, that definitely makes an impact. Support systems. Support system is there are many agencies like banks are there, financial corporations are there who give a lot of facilities and incentives to the people. If there are no facilities, no incentives, then you may not be able to set up a business. Because you want to set up a business, you have everything with you, but do not have the money, and there's nobody to fund this thing, or there's no place to set up a business over there. Okay, and then the social culture. Social culture they affect indirectly. The society in which you live, basically, your cultural, because like in some of the cultures, like in Hindu culture, we say that getting high profit is unethical. So that is basically an anti-entrepreneurial thought. Because when you are ठीक है जो है बस मिला उसी में अपने खुश रहो वही satisfaction, तो वो फिर it becomes a little anti-entrepreneurial. Society, there are certain societies which are basically entrepreneurial. You go to any part of the world, you will find people, certain societies which are basically entrepreneurial. Like in our country, if you talk of the northern region, the people who are Punjabis, they are basically entrepreneurial. The Kais community, the Kais, this Baniya community, they are very good entrepreneurs. You go to the western part of the country, the Marwadis, the Sindhis, they are good entrepreneurs. You go to the southern part of the country, the Naidus, the Chetias, they are good entrepreneurs. You go to eastern part of the country, the migrated Marwadis, so they are all good entrepreneurs. So some societies, are basically entrepreneurial.
So that makes a difference. Yeah. Okay, the current approaches to entrepreneurship education. Right now, what happens in our institutions. So we conduct, entrepreneurship awareness camps, which is like a 1 day or a 3 days camp. It is mainly for the final year. We conduct them in a very big group, so sometimes 100 people are sitting, 150 people are students are sitting. The thrust is more on imparting the information rather than on motivating the students. So you just impart some information. So that is only for the awareness. It's just like an awareness program basically. So you just make the people aware. The people will not become the entrepreneurs after attending the awareness camps. That is just an awareness session basically. Then extension lectures, sometimes we call the people from outside to get the, some of the extension lectures. They are conducted at irregular intervals and in two large groups. They need to, we need to conduct it this more frequently. Invite some of the successful entrepreneurs for sharing experiences. People should come and they should share the experiences, both successful and unsuccessful also. The size of the batch of the students should be kept small in order to increase the effectiveness of these lectures. Then we have this entrepreneurship development programs. EDPs of 4 to 6 weeks duration are being organized in some of the institutions. It has been seen that these EDPs are being organized by some institutions more as a matter of fulfilling their obligations or generating funds because you get it sponsored, rather than as a serious attempt to divert some of the students from wage employment to entrepreneurship. You see, if you want to conduct a training program for the prospective or for the potential entrepreneurs, students basically, unless you know that he is a prospective entrepreneur, how can you train that person? So like we do programs over here. So we have say around 30 seats in a program, which is a 6 weeks, let us say, training program, which is not meant for the teachers, it's meant for the students basically. I mean for the general public basically. So we invite the applications, we get say 200 applications. Then we screen those people. Who are this? We screen them through, we have certain selection tools. We take almost a week to screen the people, and then we choose those 30 potential entrepreneurs who have the potential to become the entrepreneurs. It takes almost a week for us to screen all of them. There are certain, it's a 3-tier system is there, some writing parts, some lot of things are there basically, and then you can have a better success rate. But if you just take everybody and anybody and then you train them, there's no point of training all these people. So that thing has to be this. The selection of the proper candidates will enhance the success rate of this programs multifold. Then we have sometimes entrepreneurship as a subject, like you teach in your things also. It has turned into a knowledge acquiring subject, and the students feel happy to just pass it. You have a subject, you read it, and then give the examination, and then you just pass it. So that's all. There's a need to change it to a competency based from the conventional subject. Rather than just you're teaching and then let the people have this final question paper at the end of the semester and just letting it pass. There's no point. So it can be this could be the possible evaluation criteria, like identification of a product or a service. So let the person identify a product where he wants to venture into, what he wants to set up basically. Let him take some time, so he can get a 10% weightage for that, let us assume. This is again, I'm just suggesting only. The market survey of product and the marketability aspects. So he does a market survey for the specific product and sees the marketability. He gets another, let us say 10%. He does a detailed survey of the financial and other support organizations, which are their organizations, like banks are there, financial corporations are there, DIC is there, KV, so many organizations are there. So he gets another 10%. Study of the managerial aspects, industrial legislations, taxation, etc. He gets another 10%. Then he makes a business plan at the end of everything. He makes a project proposal basically, business plan he makes, and presentation of the seminar. He gets around 30%, and then maybe an examination also. So if you follow this criteria, it is much more comprehensive rather than having just a question paper at the end of this semester basically. Okay. Actions required at the institute level for entrepreneurship education. The faculty should contact large and medium scale industries within the vicinity of the institute and explore the possibilities of products for the items which could be manufactured in a small scale industry, on a long term basis. So periodic seminars on vendor development may also be organized for this purpose in collaboration with the large scale industries. So the big industries, they can come, they can deliver a seminar that what sort of vendors do they want. So you can be a vendor to the big industry.
like an ancillary or like a vendor basically. So that can be one of the this thing, criteria. The institute should prepare a directory of well-known resource persons in the field of entrepreneurship and management who can be invited for delivering expert lectures and interaction with the students. Successful entrepreneurs, preferably the alumni, should also be identified for sharing their experiences with the students. Because motivation is not only one time; it has to be on a continuous basis. You keep on calling the people, almost on a weekly basis or let us say fortnightly basis, and they keep on talking to the students. They keep on motivating them. Some of them they will become entrepreneurs. So it has to be on a continuous basis, not a one time or say once in a semester or twice in a semester. No, it has to be on a continuous basis. The institute's library should be suitably strengthened by adding books, journals, periodicals, handbooks, and directories, films, and other teaching and training aids in the field of entrepreneurship development. The library may also procure literature from the support agencies. So, should be a separate. There could be separate, a section on entrepreneurship, and not only the conventional books. You have some of the unconventional books also. Some of the novels, which basically promote entrepreneurship. Some of the movies, some of the video films, you can also procure as a part of the that specific library section. Okay, for effective implementation of this entrepreneurial training, it is essential that the suitable instructional material be developed. In addition, suitable faculty in the area of entrepreneurship should be hired for running these activities. Normally, they have the faculty in different disciplines, say electronics or let us say mechanical, this thing. So they'll get some additional charge. Okay, you take entrepreneurship also. But entrepreneurship is not that additional. It's basically specialized sort of an area. So the faculty should also be specialized. A department of entrepreneurship development should be set up to coordinate all the activities. This department should work in close liaison with other departments of the institute, especially the department arranging industrial training of the students for effective implementation of its programs, projects, and the other activities. A new concept of entrepreneurial circles. You can float this concept. Like we have this quality circles in the industry. You can have some entrepreneurial circles, in which you can make a group of say 5 to 6 people, some 3 to 4 students who want to become, let us say, entrepreneurs. You can put a teacher along with that circle in that circle and one industry person from some nearby area. So these people, they becomes like a group. So they can meet periodically, they can discuss, and then they can, share their thoughts basically. Special training programs may be organized for the women to encourage them to opt for entrepreneurial career. Now we need to train even the women also with a view to help the passed out students who wish to undergo entrepreneurial training. The Department of Entrepreneurship Development may also organize part-time EDPs for them. The people who are already passed out, who are the alumni, or the people who are from the market also. I mean from general public also. Those who want to become the entrepreneurs, you can have the part-time. Like in the evenings, you can have the EDPs also. Like we did a part-time EDP in Kota. We have I think somebody from Kota also over here. Yeah, we did a 6 weeks part-time EDP in Kota, long time back, I think in 1992, 1993. Yeah, 1992. So we were there for 6 weeks in Kota only. Development of entrepreneurial attitudes. Select a career which will allow you freedom to express yourself creatively. Do not underestimate your abilities and the talent. You see, people have a lot of talent, lot of, even students are very, very capable people, they have a lot of abilities, but somehow they are not aware of. As a teacher, it becomes our duty to make them aware of that what, talents, hidden talents, latent talents they have, so that they can grow. They are not even aware of all those things. Pattern out your activities after successful entrepreneurs who are in the same kind of occupation, and the people who want to become the entrepreneurs. They can make a person who's already a very successful entrepreneur as like their mentor or a guru basically, and then they can follow him. Yesterday, I was when I was sitting in my office yesterday in the evening, I had a visitor, Mr. Tarun Banerjee, who is our resource person also in some of the programs. He said recently we had one Nobel laureate, Dr. Venkataraman, in Chandigarh, and he gave a lot of lectures in Chandigarh, and he was also attending those lectures. He said that he put a question to that Nobel laureate. He's an Indian basically. That how did you get this Nobel Prize? Because there are many people who are vying for Nobel Prize, and there were many colleagues of his who were almost equally competent. He said, when I was small,
I used to think of getting a Nobel Prize. I mean, when he was small, he used to think of getting a Nobel Prize. So you see his thought process basically. So even if they had almost similar type of expertise people who are his colleagues and friends, but he was the one who was able to get a Nobel Prize. So your thought process also makes a lot of difference. If you think, at the very early that you want to become a very successful, let us say, entrepreneur, and then your entire thinking and then entire actions, they start moving in the same direction only. And if you follow a successful person who's already an entrepreneur, and then by default you try to imbibe his all these qualities, and then and then you become start on the same way only. So that is how people become successful actually. So it is not always the competence per se which makes you as a successful person. Sometimes your thinking process, your thought process, the one whom you are following basically, who is advising you, and your right direction also makes a lot of difference. So develop positive traits. Know as much about your career as possible to become an expert. Always try to improve, because improvement is a daily process. Sometimes people think that they are already they know everything. So that is, I think, the end of this thing. Accept change and use it to motivate you to achieve high level goals. Be action oriented. Have good understanding of your strengths and the weaknesses, and find the right place for you. What are your strengths? What are your weaknesses? How you can eliminate your weaknesses? How you can work on your strengths. Take personal responsibility. Exhibit confidence in yourself. Have a good self image. If you do not think good of you, people will not think good of you also. So you have to have a good self image. Make decisions within the constraints. The constraints are everywhere. If you think that वो नहीं तो कहता ना normal तेल ना राधा नाचेगी. So you have to work within the same constraints. If you say that no, it's very difficult to become because in India a lot of problem, a lot of corruption, but the people who became, they became the same circumstances only. So you have to work within the constraints only. So look to the future with hope and keep on reinventing yourself from time to time. You have to keep on reinventing. And there's a very interesting story also, which I will just narrate. The story of the eagle. What is the speciality of the eagle? Have you thought of? Huh? Very nice eyesight. Focused view. Always fly very high. Yes, she's apart from the competitors. You see, yeah, I'll come to that, sir. You see, when it rains, most of the birds, in fact, all of the birds, they go to their nest. Eagle is the only bird which goes above the clouds, where there's no rain. So the same problem, but the way you see a problem is different, So it goes above the clouds, where there's no rain. So that is the beauty of eagle. When it rains, most birds head for the shelters. The eagle is the only bird that, in order to avoid the rain, starts flying above the cloud. The eagle has the longest lifespan amongst the birds, around 70 years. In its 40s, its long and flexible talons, वो जो talons होते हैं, can no longer grab the prey, which serves as a food. तो वो grab नहीं कर पाती. Its long and sharp beak becomes bent. Then the eagle is left with only two options: either die because it cannot catch the prey, or go through a painful process of change which lasts 150 days, around 5 months. The process requires that the eagle fly to a mountain top and sit on its nest. There the eagle knocks its beak against a rock until it plucks it out. After plucking it out, the eagle will wait for a new beak to grow back, and then it will pluck out its talons. When the new talons they grow back, the eagle starts plucking its old aged feathers. वो जो पंख हैं वो भी सारे निकाल देती है. And after 5 months, the eagle takes the famous flight of rebirth and lives for another 30 more years. So 40 plus 30, 70 years it lives, So it reinvents after 40 years, basically.
Because sometimes we have, we did our, let us say, BTechs or MTechs say around 30 years back. Now that's obsolete basically. It's obsolete, So unless you reinvent, unless you go for some fresh these things, unless you reinvent, it's very, 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 it's very, very important to have a reinvention basically. Otherwise, in the same old, no, that is actually everything is obsolete. Nowadays, with a lot of technology changing, almost on a daily basis, you have to keep on reinventing almost on a yearly or let us say twice yearly basis. So why is this change needed? Many times in order to survive, we have to start a change process. We sometimes need to get rid of the old memories, habits, and other past traditions. Only freed from the past burdens can we take advantage of the present. This is for the first session, concluding slides. I think I was talking of the vision, that an entrepreneur should always have a vision. So where does a leader's vision come from? Vision is very important for any leader, especially for the entrepreneur. To find your vision, you must listen to basically the four voices. Four voices. The first voice is the inner voice. आपके जो अंतर आत्मा की आपकी जो आवाज है. The vision starts from within. Do you know what your life's mission is? कभी सोचा कि मेरा 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 मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इस किस लिए मैं आया हूँ. If what you're pursuing in the life does not come from the depths of who you are and what you believe, you will not be able to accomplish it. तो शायद कोई मिशन के लिए आपको भेजा गया है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं पूरी उम्र में. वो एक रूटीन में आप लगे रहते हैं, वो रूटीन में ठीक है, जाओ नौकरी कर ली, घर आ गए, टीवी देख लिया, खाना खा लिया, सो गए, ठीक है ना, एक रूटीन में पड़े रहते हैं. लेकिन एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए लाइफ का, कि करना क्या आफ्टर लाइफ में. बाकी तो सब लोग करते हैं, खाना तो जानवर भी खाते हैं, ठीक है ना, वो काम, वो उनका जो काम, वो अपना काम भी करते हैं, ठीक है, सारे करते हैं. तो फर्क क्या है, वेयर इज द डिफरेंस? तो एक विजन होना बहुत जरूरी है अगर आप ह्यूमन है तो. द सेकेंड इज द अनहैप्पी वॉइस. Where does the inspiration for the great ideas come from? From noticing what does not work. अगर आप if you are a little unhappy, that is a sign of progress basically. If you are, let us say, very contented and very happy and everything is okay, then I think that is the end of it. So it's good to be a little unhappy, So discontentment with the status quo is a great catalyst for the vision. Remember, no great leader in the history has fought to prevent this change. So change is, always inevitable. So next is the successful voice. Nobody can accomplish great things alone. If you want to lead yourself to greatness, find a good mentor and advisor who can guide you. It's like a guru. वो बाबे की बात नहीं कर रहा मैं. गुरु मतलब कोई, हाँ, any senior, let us say, academician can be a guru or a mentor of you, ठीक है ना, who can guide you on your way basically. And the last is the higher voice. Do not let your vision be confined by your own limited vision capabilities. A truly valuable vision must have the God in it. Only He knows what you are really capable of. Have you looked beyond yourself, even beyond your own lifetime, as you have sought your vision? If not, you may be missing the true potential of your life. ठीक है, तो ये चार आवाज़ों को सुनना जो है वो बहुत जरूरी है. कौन कौन चार आवाज़ें थी, कौन सी चार आवाज़ें? Inner voice, unhappy voice, successful voice, and then the higher voice. ठीक है ना? Okay, good. Have you seen a bumblebee? आपने कभी bumblebee देखी है? A bumblebee is a bee, is a मक्खी basically, but have you seen a bumblebee? A bumblebee is a bee which is a little heavy in weight, but it has got a very small, very short wingspan. So aerodynamically, the bumblebee cannot fly because heavy weight but very small wingspan. But the bumblebee does not know the aerodynamics, and so it flies. So this is the bumblebee, and this is the message for all of you. कई बार ना ज़्यादा पढ़ लिख के या बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, पीएचडी भी कर ली, फिर कुछ और भी कर लिया, ठीक है ना, हाँ वो पोस्ट डॉक्टरेट भी कर ली, ठीक है ना, फिर कुछ और उसके बारे में कुछ और क्या करें. एक हमारे पास एक एप्लीकेशन आई एक बंदे की, हमने कुछ पीछे पोजीशन निकाली थी, उसके 3 पेज में तो उसकी डिग्री लिखी हुई थी जो है.
3 पेज मतलब मैं पढ़ता रहा, उसमें डिग्री लिखी हुई थी। तो बंदा डिग्री करता रह गया। तो मुझे समझ नहीं आती कि लॉ भी कर ली, एमबीए भी कर ली, साइकोलॉजी भी कर ली, सोशियोलॉजी भी कर ली, इंजीनियरिंग भी कर ली। अब तो आप भैया आप हो कहाँ पर? इतना कुछ करना क्या, मतलब एक एरिया में रहो ना, एक ही फील्ड में रहो बेसिकली, ठीक है ना। तो कई बार ज्यादा पढ़ लिख के जो है ना बंदा अभी ना थोड़ा सा डरपोक हो जाता है। आपने कभी देखा हो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना वो बिजनेस वगैरह सेटअप ज्यादा कर नहीं पाते जो है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है ना। तो वो भी ठीक है कि एक बस बस वही है, जॉब मिल गई है, अच्छी भली सैलरी मिल रही है, ठीक है यार अपने, ठीक है क्या करना है, कंफर्ट जोन में आ जाता है, ठीक है ना। या कई बार वो डिसाइड भी नहीं कर पाता जो है, ज्यादा सोचते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे अगर आपने स्विमिंग सीखने आप सोचोगे कि नहीं यार मैं डूब जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो मेरे पीछे मेरी बीवी भी है, मेरे पीछे बच्चे, तो फिर आप कभी छलांग भी नहीं लगाओगे कभी। एक बार आपने छलांग आपने लगा दी तो आप सीख भी जाओगे इसको जो है, ठीक है ना। तो वो भी एक रीजन जो है वो रहता है। सो डू नॉट लेट एजुकेशन पुट लिमिटेशंस ऑन यू। हमने पीछे एक रिसर्च स्टडी हमने की थी कि जो एक जैसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं और डिग्री होल्डर्स हैं, हु बिकम्स ए बेटर एंटरप्रेन्योर। तो हमने हरियाणा और राजस्थान में हमने स्टडी की थी, हमने 2 स्टेट्स हमने ली थी। तो नेट रिजल्ट ये निकला कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं दे आर बेटर एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि उनको कोई एक तो ये नहीं कि मैंने डिग्री करके मैं कोई चीफ इंजीनियर मैंने मुझे बनना है, ठीक है ना। तो वो अपने हाथ से काम भी कर लेते हैं, तो वो ईगो भी थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी कम रहती है। सो दे बिकम समटाइम्स दे बिकम बेटर दिस थिंग अदर। ओके, so thank you. This is this was actually the yesterday's this thing session. लेट होने से ना सारा आप लोग तो लेट हो जाते हैं लेकिन हमारे भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो सेशन फिर पूरा हो नहीं पाता, फिर आगे आगे कंटिन्यू करता है। यहाँ पर वीडियोस बन रहे हैं, अब ये नहीं पता लगे वीडियो पहले सेशन का बन रहा है कि दूसरे सेशन का बन रहा है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए मैं अभी एक और टॉपिक लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास अभी कम ही है। एप्लीकेशन ऑफ द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन इन द टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर। आपने कभी सुना इसके बारे में, बीओएस के बारे में? ए ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, बीओएस बॉस बोलते हैं उसको जो है। हाँ जी, नहीं सुना कभी? ओके, चलिए आपको बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं। So the contents, there's a brief introduction to the BOS, what the BOS is all about, some case studies on the BOS, application of the BOS for entrepreneurship promotion. My purpose is not to let you know only the strategy only, but how we can use the strategy for promoting entrepreneurship. That is, more. Then there is something known as the create, raise, reduce, eliminate grid, which is a part of this strategy, and some concluding, slides. I start my presentation with a very small story. This is a story which I have taken from a very small book, Alice in the Wonderland. आपने सुना होगा, जिसमें एलिस एक छोटी सी लड़की है जो कि एक जंगल में घूम रही है. So she is wandering in a jungle, in a forest, and she is standing at a crossroads. So 2 roads are going from that place, and she does not know where to go. So वो confused वहां पर खड़ी है. So then a cat comes from behind a tree, and then the cat asks Alice. So the cat asks Alice, "Can I help you?" Alice said, "Yes, please. I am lost and need to know which road I should take." आप लोगों का काफी लोगों का ये हाल होगा वैसे. The cat asked, "Where are you going, by the way?" Alice said, "Gee, I do not know where I am going." "Well," said the cat, "then it doesn't matter which road you take." जब आपको पता नहीं कि आप कहाँ पर जा रहे हो, then you can take any road, उसमें क्या फर्क पड़ता है. So this shows the importance of the planning. Basically, you have to plan first. For doing any activity, you have to first plan, and only then you can execute. Even in your entire life, you have to first plan your goal. What is my life's goal? Only then you can execute the goal. If the goal is not there, or the goal is very vaguely defined, you cannot achieve the goal. There was a research, that in the world over, around 87% of the people, they do not have any goal. No specific goal, just a routine life. So you need to have a goal. Only then you can have a strategy. So first you have to plan first. So planning is very important. Okay.
So we say that if if you fail to plan, you are basically planning to fail. So planning is very important. We plan, you came to this place, you plan first. We'll apply, we'll book the tickets, we'll come back with this. You have to plan basically. Only then it is successful execution. Otherwise, you will waste a lot of resources and all those things you will do. Planning for entrepreneurship promotion. Similarly, if you want to promote entrepreneurship in your institutions, you have to first plan. Only then you can promote entrepreneurship in your institutions. So you have to plan first. So you have to see, where my institute is right now. I don't have it exactly where my institute is right now in terms of the entrepreneurship promotion status. Where we want it to be after 10 years. Where do I want to see my institute in terms of the entrepreneurship? Like many people become entrepreneurs, something like that, And how do we get over there? For that, you do an environmental analysis. You do the SWOT analysis of the institution, the strengths, weaknesses, all those analysis. Then you have a vision. From vision comes your mission. From mission comes your goals, and then comes your activities, basically. So you have to plan for your organization also. This is another almost similar slide. The need assessment survey, and then knowing where you stand, what is the present status right now, the strategic analysis, where you want to go, the direction, and how you will reach over there. Okay, where are you right now, where you want to go, and then how you will reach over there. Okay. This BOS, actually, there's a very famous book with the same name, BOS, Blue Ocean Strategy. It's written by two authors. One is a German, the first author is a Korean gentleman, W. Chan Kim, and the second author is a German lady, Renee Mauborn. So they wrote this book, which was published in 2005 at Harvard Business School Printing Press. Actually, the strategy basically says, if you look at the corporate sector, if you look at the market, basically, there's a lot of competition in the market. You want to, let us say, make something, the things are already there in the market. You want to make, let us say, washing machine, there are, say, 20 brands already in the market. You want to make, let us say, a television or a mobile, there are more than, say, 40, 50 brands are already there. So there's intense competition. There's a bloody red ocean. People are trying to cut the throat, and then they're trying to grab your share, basically. This strategy says, do not enter into this bloody red ocean. Make something, do something new, make something different, make something innovative, in which there is no competition. No competition, and you are the only player, and you are the only player, and you're the only player. So there's a vast blue ocean in front of you because there's no cutthroat. There's no bloody red ocean, Like yesterday I gave an example of this nano car. So when nano came into the market, rupees 1 lakh car, so there was no other car except nano car. You want to buy a car which is costing, say, 1 lakh rupees, there's no other car except nano car. So where is the competition? There's no competition. So you can do something innovative in which there's no competition. So by the time the competition catches up after 2 to 3 years, you again do some more innovation, and then you go again search forward. So it's a continuous innovation process, basically. So the competitors are always behind you because then they are not able to catch you. So that is the strategy is all about. So this I gave example yesterday. Yeah, you see, in this cricket, if you see this cricket, because many people are fond of watching cricket. Initially, we used to have this 6 days test matches. 6 days test matches with a 1 day rest in between. Then the rest day was removed. It became a 5 days test match. Now, who has the time to see this 5 days matches? Nobody has the time. People had the time during those days, but now nobody has the time to see a 5 days match. It became a 1 day, 60-60, then became a 50-50, and now became a 20-20. The concept was that the people are able to watch the hockey matches or the soccer football matches because it takes around 3 to 4 hours only. 90 with the breaks in between, and it takes almost around 2 to 3 hours, let us say. So people can spend 2 to 3 hours, but not the entire day. So let us, compress this game of cricket into 2 to 3 or 4 hours only, so that they can see. You start at 8 o'clock, you finish at, say, around 11:30 in the night, so people, they can see. So the people who were the non-customers for the cricket segment category, they made them as their customers. That means the people who are not watching cricket, who were the non-customers, they made them as their customers.
In the nano car, basically, the people who are non-customers of the car, they brought the non-customers into the customer category. The non-customers are around 70, 80, 90%. So bring them into the customer fold, basically. So that is the strategy is all about. Okay. The reasons to create blue oceans, I think I can skip some of this slide because the time is short. I'll just focus on the the creation and capturing of the blue oceans were achieved by the small and the large companies. That means it can be done in any company, small, medium, micro, any company, by young and old managers, by companies in the attractive and unattractive industries, by new entrants and established incumbents, by private and public companies, by companies in the low and high tech, and by companies of the diverse national regions. That means any company or any field, basically, any country, any small, big, anything, you can follow the same practices, the BO practices, basically. So what is the principles? Three principles mainly. Do not compete in the existing market space. Do not compete. You do something different. If you are an individual, do not compete with your colleagues. You should be something unique, which people are not. Then there's no competition. So stop benchmarking. Instead, uncontested market space should be created. There's no competition. You have something new, something innovative, something new product, basically, or a new service. Do not beat the competition. Do not try to beat the competition. Okay, you think that, okay, I have a better quality or a, better, lower price or a better quality, something like that, No. Do something new. Instead, the competition should be made irrelevant. Do not exploit the existing demand. Instead, you should create and capture the new demand. So capture the new demand, the people who are the non-customers, bring them into the customers category, So that is this new strategy, basically. This is the distinction in the red ocean and the blue ocean. The red ocean says compete in the existing market space. कि वहीं compete करो, same product को लेकर आओ, quality अच्छी कर दो, गारंटी ज़्यादा दे दो, वारंटी ज़्यादा दे दो, price कम कर दो, लेकिन उसी को grab. ये कहते हैं कि नहीं. Create uncontested market space. This says beat the competition. This says make the competition irrelevant. Focus on the existing customers. Focus on the non-customers. Exploit the existing demand. Create and capture the new demand. Okay, I hope I am clear. Okay. ये कुछ case studies, I don't know, the time is not there, so let me skip some of the case studies. I'll just go to इसमें एक they say 4 action framework basically. It says you have to eliminate something, reduce something, create something, and raise something. Like for example, you have a television. I'm just giving an example only. You have a television. A television has, say, almost 200 channels. Lots of features, some golden eye, something like which we rarely use. We use only some 3 to 4 main features. In any television, let us say. For the remaining features, which are say more than 100 features, we are paying for this thing, but we are not using them. So what can be eliminated? What can be reduced, what can be raised, and what new can be created. So these are the 4 things basically. I'll come to that. So how to apply this, let us say, BUS for entrepreneurship? In fact, they have something known as the value innovation. That means you put the entrepreneurship inputs into the system, the unemployment is coming down through the value innovation. So what is value innovation? That's a 4 this thing action framework. So what we can create? A multi-tiered strategy for entrepreneurship promotion. That means if you want to promote entrepreneurship, if you want to make people as the entrepreneurs, just by having a subject of entrepreneurship, people will not become the entrepreneurs. No. Just by having some extension lectures or awareness camps, they will not become the entrepreneurs. There has to be a multi-tiered strategy, a multiple level strategy where you catch hold of a person right from the very first year until the time he leaves after the 4th year. You you focus on the person. So multi-tiered strategy has got to be there. I'll explain a little later. Then create the steps or the TBIs. Step is Science and Technology Entrepreneurs Park, or the TBI, Technology Business Incubator. You must have heard of this TBIs. In our country, we have a lot of TBIs and the steps. So incubation basically. What is incubation? What is incubation? Huh?
Yeah. You see, when a child is born prematurely, that child is prone to attacks from the outside. It needs some controlled environment, some controlled temperature, some controlled humidity, so you need to protect the birth. So similarly, when a small business is born, it is prone to the attacks from outside. It needs some protection. So give that businesses more protection. Is space, in a specific, give it some space, give him the funding, give him all the facilities, prevent that from the external this thing, and let it grow. Once it grows, 1 to 2 years, and then that person, then it can go out. So that is basically TBI. Awareness of the new opportunities, create awareness of the new opportunities, which are the latest opportunities. You have to create awareness. You have to create entrepreneurs. This is with the I, not with the E. Entrepreneurs. There's something known as the entrepreneurs, something known as the entrepreneurs. Who are the entrepreneurs? Huh? Those who work in an organization and create a business for the organization. Right. For example, the Nepalese with the funds Mm-hmm. and with the infrastructure. Okay. They can also be called as an entrepreneur. Yes, yes. You see, everybody cannot become an entrepreneur, no, but they can become entrepreneurs. That means the people who have those entrepreneurship qualities, they can exhibit those qualities while being in a job also. If you are a creative person, if you are an innovative person, you are working in a job, you are working in a company, you, let us say, create a new product which the company can commercialize, and you get a part of the royalty because it was your baby basically. So you are in a job, you are getting a salary, plus you are getting a part of the profits also. So you become an entrepreneur. You are working as a faculty in, let us say civil engineering, you do a lot of consultancy. The money comes, a part goes to the institution, a part goes to you. So you are getting a salary, plus you are getting a part of the additional income also. That is basically entrepreneurship. You write a book, let us say, there are three people, the author, which is you, the institute, and then the publisher. Okay. So the profit part goes to the publisher, part goes to the institute, part comes to you. So you become an entrepreneur. Because in addition to getting your salary, you're doing something more also. So that is known as the entrepreneurship. So those people who cannot become the entrepreneurs, they must become, at least they should become the entrepreneur, so that they can exhibit those qualities of being an entrepreneur while working in a job. And who knows, later on they may become entrepreneurs also. Okay. Entrepreneurship Innovation Lab, you can create a lab in your institute where the people who have these ideas, those who want to experiment their ideas, they should get a place, where they can experiment all those ideas. They should get a lab where they can a lot of facilities, and they can experiment. A specialized faculty and a center, a specialized faculty for teaching for training entrepreneurship, and a center for entrepreneurship development. Special instructional material, not only the books, even the videos, the DVDs, a lot of things are there, novels, which basically promote entrepreneurship. Entrepreneurial circles, I have already explained. Then raise, what is to be raised? Professional competence. The students may be very good, let us say, technically, but say the soft skills are missing, let us say, because when you want to set up a business, you have to go to the bank, you have to convince the people over there, you have to convince the manager over there to give you the loan. So all those interpersonal competencies, your soft skills should be there. Your communication, your convincing ability, all things, people have to be trained for that. Networking with the industries, you have to have more interaction with the industries, so that the people have more of a hands-on training. Raise budget for entrepreneurship promotion. You have a limited budget for promoting entrepreneurship in your institution. You have to have more budget through which you can promote, entrepreneurship. You can raise this PG, like an MTech program in technological entrepreneurship. Suppose, let us say in civil engineering, or let us say in electronics, or let us say mechanical engineering. In mechanical, how can you become an entrepreneur? Which are those areas in the field of mechanical engineering, or let us say automobile engineering, where you can start your enterprise? So technological entrepreneurship. So the person gets a training both on the entrepreneurship as well as on the technical part of this thing. Training programs in entrepreneurship development for the faculty. Like we have this program, so the faculty also needs to be trained. Reduce traditional project work. Instead of having a traditional project work, make it as a venture-oriented project work. Venture-oriented. That means those students who have a potential to become the entrepreneurs, they can be assigned, they let them choose a product which they want to, let us say, manufacture, or the service which they want to render. Let them do the market survey, let them make a business plan, and then they can submit. So that is their project work.
Then reduce the theory focus of teaching learning process. We have a lot of theory in our classrooms, in our engineering, polytechnics, So less of theory and more of hands-on, should be around 30-70, 30 theory or 40% theory, 60-70% should be the regular portion. Eliminate the mindset towards wage employment. The entire mindset, is to go for a job. The students, they will come, they will look for a packages. The entire mindset is to go for a job. कि नौकरी करनी, ठीक है ना? पेरेंट्स माइंडसेट भी जो है ना वो कि बच्चे को नौकरी करवानी. सो माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है. एलिमिनेट द ऑब्सोलेसेंस ऑफ द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स. तो इसको मैं कुछ आई कैन टेक इट लिटिल ऑन ए क्विक दिसिंग मोड. सो फर्स्ट वाज क्रिएट ए मल्टी-tier strategy for entrepreneurship promotion. A multi-tier strategy where you give the inputs on entrepreneurship in phases. So like this is for a 4 years this thing like engineering program. Like at the end of the first year, because when they come in the very first year, they're very raw, they're very young, so they should have some experience. Let them spend at least 1 year, and then stimulating entrepreneurship. That means you have to stimulate, you have to make them aware of this entrepreneurship concept. You can have a large number of entrepreneurship awareness camps and extension lectures, and you can call people from the outside, from banks and all those things. They can generate a lot of awareness, a lot of motivation. Then in the second year, at the end of the third semester, achievement motivation training. That means those students which are all, let us say, they were made aware, but those who have the potential to become the entrepreneurs, so they can be screened, and then they can be motivated to go for entrepreneurship. It takes almost a week to have this entire process. Then the in-plant training, where they want to go for a business, so the same company they can go and they have some experience. You can have a subject also, and then another in-plant training, and then the nurturing phase. At the end of this thing, you have a nurturing phase also, because you have to keep on calling them again and again, and you have to keep on nurturing them also. Steps we have already discussed. This is all the different facilities which they get in the steps of the TBIs. Like they get the training on entrepreneurship, they get this R&D support, they get the product development support, technology transfer, quality assurance, business facilities. So they get all these facilities while being in a TBI or in a step. It's like a complete sort of a building in which you give them space. You give them some space. They can set up the business over there. They get all the facilities, some central facilities from there, and then they have the links with the industry. So with the industry, any support from the industry will support you. Any support from the institute will support you. And then you want to get some funding, so you can get some funding also. Okay. So you get all these facilities by being at a specific place, and then you can start your business. After some time, 2 years, 1 year, you have to exit from that place. The new opportunities. This says that in future 70% of the jobs will come from the 6 technologies. So 70% of the jobs, or 70% of the the new business ideas, the 6 T's at all, 6 technologies. Which are the 6 T's? One is this ICT. It's information communication technology, biotechnology, nanotechnology, environmental technology, space technology, and then the cultural technology. So this 6 T's will provide all the jobs and all the possible business ideas in the future. 6 T's: ICT, bio, nano, environmental, space, and then the cultural technology. Okay. Now from all these 6, the technical institutions, they can focus on the ICT and then on the environmental technology. So they can focus on the ICT or the IT and then the environmental technology, the technical, as a part of their BOS. They can focus on these 2 areas. I think I have to skip some of the slides because time is short. Anyway, this we can skip. So some of the high growth areas where there's a lot of scope for future, like mineral water, 30 to 40% growth rate is there. Robotics, electronic power generators, photocopiers, auto finance, flexible packaging, toys, innerwears, automobiles, computer softwares. So a lot of scope is there. These are all sunshine industries basically. Some more, we have this telephone instruments like mobiles. We have a lot of mobiles in the markets. Wrist watches, malted food, paints, enamels, varnishes, music industry, advertising, herbal cosmetics, express industry, courier industry, pharmaceuticals. So these are all basically the high rise sort of industries, high growth industries. Okay.
Okay. Entrepreneurship we have already discussed. This is we have already discussed entrepreneurship. I think lab we have already discussed. This we have already discussed. In this cell, entrepreneurship development cell, you can have some entrepreneurship awareness camps. You can have motivational videos, entrepreneurship magazines, entrepreneurship course in the campus, motivational books. Guest speakers can be called, and they can be asked to deliver the lectures. And then you have some special instruction material. There are certain online courses which promote entrepreneurship. The students can be told to be in touch with all those online courses. Many books are available in the market which are promoting entrepreneurship. Some of these books are like these are the 4-hour work week, the fire starters. So these are all books which are basically promoting entrepreneurship. So you can tell your students some motivational movies like Guru. We have seen Guru, Rocket Singh again on entrepreneurship basically. You must have seen these movies, I suppose. Band Baja Barat, Three Idiots, Turning 30, Pushpak. In English language, we have the Wall Street, the Tucker. So there are so many, movies. So this can be repository of all of you. You can have a separate, in the library, separate section on entrepreneurship. These are all for motivational. We never think of buying some movies also for motivation. We just think of buying some books only. But let the people see some movies also. These are all movies in English language, which basically motivate the people. Okay, professional competence we have already discussed. Those soft skills I was talking of. More interaction with the industry is required. You need to go to more to the industry so that people have that self-confidence to go to the industry, what is going on in the industry, and more of hands-on training by the students. This was a small story actually by Lord, this Guru Rabindranath Tagore, no? So Rabindranath Tagore was the first Nobel laureate. Yeah, he was the first Nobel laureate from the South Asian region. Sorry, you're too early for the next class. Huh? But it is almost 11 o'clock now. आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं पर आप तो पहले से थे मुझे लगता जो है तो आप फिर क्यों 11 बजे आए तो वो कोई अपने आप आ जाएंगे छोटे बच्चे थोड़ी हैं कोई इसमें The time is 9:30 from tomorrow. I am very clear. It's 9:30 tomorrow. Okay. एक दिन मैंने चलो ठीक है थोड़ा सा लेक्स कर दिया लेकिन from tomorrow is 9:30 only. तो इनके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बार ही वेंट इनटू ए स्कूल इंस्पेक्शन पे गए थे बेसिकली स्कूल की छोटे बच्चों का जैसे टाइनी टॉट्स होते हैं ना छोटे किड्स के बच्चे स्कूल तो इन्होंने देखा कि एक क्लास में जो है एक टीचर ना एक बच्चों को एक क्रो कैसा दिखता है कैसा होता है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे सो ही वाज मेकिंग ए पिक्चर ऑफ द क्रो ऑन द ब्लैक बोर्ड with a lot of difficulty and trying to explain how a crow looks like to the small kids so then he entered into the classroom Rabindranath Tagore ji he said that कि आप इतने झंझट में क्यों पड़े हुए हैं बाहर तो इतने सारे क्रोज हैं यू जस्ट टेक देम आउट बाहर के दिखा दो जो क्रोज बैठे हुए हैं वो देख लेंगे तो उनको भूलेगा नहीं वो याद रहेगा उनको जो है ठीक है ना सो सिमिलरली वी टीच ए लॉट ऑफ थिंग्स इन ए क्लासरूम हमें खुद भी समझ नहीं होती फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं उनको भी समझ पढ़ ले उनका नहीं पड़ता ठीक है ना सो टेक देम टू द इंडस्ट्री let the people see the actual practices in the actual world of work and the industry and then they will appreciate more rather than teaching everything in the classroom so some things which can be taught better in the industry take them to the industry or to the actual this in place of work okay this is a synergy from the networking ये उसी के बारे में है when you see the geese heading south आपने कभी देखा होगा जो गीस होते हैं वो हमेशा ऐसे वी फॉर्मेशन में आपने कभी ऊपर देखा होगा जो गीस आते हैं जो साइबेरिया से आते हैं heading south for the winter flying in a V formation you might consider what science they have discovered as to why do they fly that way क्यों वी शेप में क्यों चलते हैं सारे के सारे हम देखते हैं हाँ राइट बिल्कुल सही कहा आपने so as each bird flaps its wings
it creates an uplift for the bird immediately following. So by flying in a V formation, the whole flock adds at least 71% greater flying range than if each bird flew on its own. ठीक है? So people who share a common direction, ये मैसेज है कि जो जैसे हमारी एक इंडस्ट्री है, एक हमारा इंस्टीट्यूट है, तो एक कॉमन डायरेक्शन है, ठीक है ना? People who share a common direction and sense of community can get where they are going more quickly and more easily because they are traveling on the thrust of one another. When a goose falls out of formation, it suddenly feels the drag and resistance of trying to go it alone and quickly gets back into the formation to take advantage of the lifting power of the bird in front. तो निकलने की कोशिश भी करता है तो वापस उसको लगता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो रही है एयर से, तो वापस आ जाता है. When the head goose, जो सबसे आगे होता है, gets tired, it rotates back in the wing and another goose flies in front. It is sensible to do demanding jobs in turns, whether with the people or with the geese flying south. The geese, they honk from behind to encourage those up front to keep up their speed. So what messages do we give when we honk from behind? If we have the sense of a goose, we'll stand by each other. Okay. I think that is all. So this strategy, raise the budget, we have already discussed. Raising degree diploma programs in entrepreneurship, we have already discussed. Training faculty for entrepreneurship is also very important because like once you are trained, and then you can in turn train the students, you know. There's a benefit of training the faculty also. Then venture-oriented project work should be there instead of a normal conventional bookish project. Then reduce the theory focus, should be more of a practical hands-on experience. Eliminate the mindset towards mindset from the wage employment towards entrepreneurship. Eliminate the obsolescence of the machines and equipments. Bring some latest machinery which is there in the industry so that they are in tune with the industry. This I think I have to escape. Okay, leadership we are talking of, because you have to be a good leader. A good leader has the capability to get the people of ordinary ability to perform in an extraordinary manner. Socrates said that a group of donkeys led by a lion can defeat a group of lions led by a donkey. तो लीडर की ये इंपॉर्टेंस होती है. This is again a quotation by one of our previous directors, Dr. Parijat Dey, and I like this quotation very much. He said that the great are the strongest when stand alone. God-given might of being is their forte. तो वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, तो they stand there the same ground. A teacher is a leader in the class. आप सब लोग लीडर्स हैं बेसिकली क्लास के अंदर, तो आप लीडर हैं, ठीक है. एक और स्टोरी आपको सुनाते हैं, फिर आई थिंक खत्म करते हैं. This is the learning from a horse. घोड़े से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक घोड़ा है, इसका नाम है सी बिस्किट. एक मूवी भी है सी बिस्किट के नाम से. घोड़े के नाम पे एक मूवी भी है सी बिस्किट, इसी घोड़े के ऊपर ही आधारित है. The year was 1938. The date was 1st November. The place was the Pimlico racetrack, USA. A sea of humanity gathered at the Pimlico racetrack to witness the horse race of the century. By noon, an estimated 40,000 people were present to witness the spectacle. An estimated 40 million people tuned in to listen to the broadcast of the match race, including President Roosevelt of USA. The contenders were a contrast of the opposites. दो घोड़ों की रेस थी, दोनों कंट्रास्ट थे. It was a war admiral versus a sea biscuit. तो लेफ्ट में जो काले वाला वो वॉर एडमिरल है, और ये जो थोड़ा मडी कलर का है वो है सी बिस्किट घोड़ा. The war admiral was a tall, majestic and all black and handsome horse. The challenger, जो चैलेंज कर रहा था, सी बिस्किट, was a small, mud colored and had a crooked left leg which made him walk with a slight limp. Both horses exploded from the start line
After a few initial seconds, the crowd was shocked to see the sea biscuit gaining ground. They were surprised as the horse had always been a slow starter. The race was full of twists and the turns. Sometimes the war admiral was leading and sometimes the sea biscuit was leading. The race was so close that most of the time the horses could see eye to eye. And finally, the underdog, Sea Biscuit, won the race. This horse race presents a great deal of learning for us. The question is how he was able to win the race. Lesson number one, the mentoring or the coaching. Sea Biscuit had a reputation of an unmanageable horse. At the same time, it had a potential. Its trainer, Tom Smith, was the first to see its potential. He employed unconventional methods to train the horse as it had a limp. Message: a good mentor or a coach can make a huge difference in building successful employees or students by adopting an individualized approach. One size fits all would not work if the aim is to get the best from each and every employee or each and every this student. Lesson number two, different strategies for different situations. Seabiscuit natural style was to start slow and then stalk the race leaders. But the war admiral was a speed demon. So Smith retrained the Seabiscuit to start fast. And as a result of that, it was able to win the race. A mentor or a coach can slightly modify the habits of the employees so that the employees can get that winning edge. This is most important. It is not in the feet, it is in the heart. Seabiscuit had a crooked leg. It was small, but on the racetrack, this little horse had a fierce heart and always relished the fight. In our life, many deeds are lost due to the lack of spirit to overcome obstacles that seem insurmountable. We get frightened by the reputation of our opponents. We focus on our shortcomings and on the merits of the opponents and get demotivated. So be a Seabiscuit and give a tough fight. And the last lesson, believe in yourself and not in the nonsense. कुछ लोग कहते हैं नहीं आप इसको कर सकते, उसको नहीं अपने आप पे विश्वास रखो. As Seabiscuit had a crooked leg, everybody used to say that it is a useless horse. But its owner and its coach believed in the horse and provided it with special type of training. The result is before us. In our life, people having some disability are being looked down upon by the society, but proper training program for them can convert them into the champions. The example is Wilma Rudolph, who won the gold medal in the Olympics despite being a polio patient in the child. So a four-legged animal can be a source of inspiration for all of us. So my question is, are you ready to learn from a horse? Okay. So I think the concluding slides, I had a story of a cat and the Alice. So finally the cat asks Alice, so, and Alice says, I think now I know, which direction I have to take. ये कुछ रोशनी पड़ गई. Okay, thank you so much. Okay, any questions? Yes, please. Yeah. Sir, the college where I had studied, the social engineering college, Okay. there they had the entrepreneurship development center. Okay. So as when a student enters into a third semester, second year, we used to conduct a psychometric test. Okay. Based on that, they used to shortlist the students. Right. Who were in the entrepreneurial behavior trait. Right. Based on that, they started an entrepreneurship development center. But that did work. All who are having the entrepreneurial traits, they didn't turn up. Only few of them turned up. So the very next year, what they have taken the students volunteer. Okay. Right. Irrespective of the traits, those who are willing to be a part of Okay. it, Okay. they became the part of it. Mm-hmm. So, but the
realized it didn't work out for me. I'm into the 8th semester of my teaching. 3.5 years is my teaching experience. This I'm teaching this subject mechatronics for the past 3 years. Hmm. So what I want to do is it's an interdisciplinary subject, and now we speak a lot about smart system and microsystem. If a curriculum can be designed so that the student get a hands-on approach on the entrepreneurship, Right, right, rather than a textbook, 8085 microprocessor is there for the mechanical engineering students. It's a quite old thing. It's not a new thing that we right, are right. doing. Hmm. Can it be done? The curriculum can be developed for affiliated colleges. Ours is affiliated to Vishweshwar Technological University. Where we don't get a free hands to modify the Hmm. code. Can there be anything done within a span of 52 hours is dedicated for one training Hmm. subject? Hmm. Where there be a curriculum can be developed or a lesson plan can be modified Hmm. to inculcate the arbitrary stuff into it, rather than being the job seeker. I Right, know the right, scenario of mechanical engineers from the right, other right, college rather than right, the right, NITs or right, right. Well, since it is an affiliated college, you cannot, revise the curricula. It's only university which can revise the curricula. But whatever the curricula is, nothing prevents you from training the students in your own way also, which can be additional this instance. Hmm? So whatever you want to do, in addition you can do as part in addition to the curricula also. Hmm? So that thing can be done. And despite all those psychometric tests, everything, the success rate is even around 20-21% only. That means you screen the people as per those tests, you train the people, you do everything. Even then, the success rate is only 20%, not more than 20%. So because it's not a everybody's cup of tea, it's a little tedious job. But even then, if you are able to make, let us say, 5 students, even let us say, I think good enough. Or say even 10 students, or say 2 students, it's good enough. So whatever you want to, you can have a cell, or you can have a separate center, let us say, and whatever is there not in the curricula, that thing can be. In addition, you can teach them. See, the people who are interested to become the entrepreneurs, they'll come to you, whether it's a part of the curricula or not part of the curriculum. Hmm? So they'll find the time. So time is not a constraint, because if you have a passion, you'll find the time. You'll find the time, because passion will not let you sleep. So you'll find the time. Any other question, please? So one question from Bhartu. Yes, please. Yes. Yes, sir. My question is whether there are some bodies of from government or private organization which are helping the new entrepreneur for their plan, how to execute their plan. Privately, consultancy, there will be No, can you repeat your question? I was not able to listen to you. Can you repeat your question, please? So my question is, if there is a new entrepreneur who want some type of consultancy in the starting his business, so is there any government or private body or organization? Oh yes, oh yes. You see, there are many organizations working at different levels: national level, state level, district levels. I have not taken that session so far. This session is just the previous yesterday session, actually going on. I'll take the session separately, but we have a large number of organizations at government level, central level, state level, district level, who are helping the entrepreneurs. Even some of the consultancy organizations also. So I'll take the session. Don't worry. Thank you. Yeah, thank you. Any questions? No questions? So thank you so much for a very patient listening, and let us break for the tea. We will reassemble at 11:30. 11:30 is our this thing? Yeah, 11:30. Okay. Let us take a quick tea break. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. इसमें ये तो इसके पास पहले जो आपने कल किया था, ये भी अपने रिकॉर्ड इसको भी कर दो।
वहाँ पे 9 o'clock पहुँचना है, 9 से उल्टा 4 घंटे लगाते हैं, तो उसमें 4 बजे निकला, 4 4 8 पहुँच गए, 4 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बजे आराम से निकल सकते हैं, बहुत लोग ट्रैवल, ठीक है, तो 28 का हम आराम से अपना नए रात को के डॉक्टर से करके निकल, एक दिन और काम है हमारा देख लो। यार मैं ये कह रहा था इसको ना कि अपन ना जाके कोई दूसरे में रूम में नहीं बैठा और हमें किसी ऐसी मशीन की करने की पड़ेगी, उसके लिए अगर वो बनता है ऐसे मान लिया हम अबाउट 2025 तो हम 500 करके अभी करवा लेते हैं काम, क्योंकि वो ऐसा है कि उसमें टाइम लगेगा, जब यहाँ से मिलेगा तो टायर्स ले आएंगे जो महंगी चालू करके हमें वो लाके, क्योंकि वो तो फिर बोल्ट ऑन वाली चीज़ है, वहाँ से लाए एंड बोल्ट करके वो हमारा काम है, वो हम फिर कर लेंगे। अभी जो टाइम कंज्यूमिंग काम है उसको देंगे, वो भी 2 3 दिन में बना के देगा, वो वाला हम करवा लेते हैं अपने घर, फिर तो हमारे पास होगा ही, साथ में सबमिट कर देंगे। सर मैं पहले का दावा था, अभी काफला नहीं बताएगा यार, ये वो से हाँ वो लीजिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो अपनी जेब से लेते हैं, मैं अपनी जेब से दे रही हूँ, सब लोग नहीं लेते, मैं हर कोई को हम लोग समझ रहे हैं, हर कोई क्यों देगा, मैं अपना क्या हम ले गए पहले हम लेकर क्यों वो अब लाएगा वो पैसे इनका अगला के पास ये का डॉलर भी नहीं करेगा कि पहले मैं कहूँगा फिर मिल जाएंगे फंड से दूंगा, फिर हम दे देंगे। हमको वैसे भी पानी पीने होते बेटर रहता है इंस्टेंट गर्म पानी पी लेते हैं। अच्छी वाली ऐसी चीजें अच्छी होती है लेकिन लोग लाइक सिचुएशन हाँ इसकी वर्डिंग करो अभी तो मेरी जितना तुम्हारे पास दिमाग है दिमाग है इतना तो मेरा खराब है, मुझे लोग ज्यादा बोलते हैं ना तो मेरा दिमाग है ना तो मेरा खराब रहता है, मेरे पास से ज्यादा है समझे अब लॉजिक समझ आया। इधर ही साथ इसी फ्लोर पर रामबो
सभी की अटेंडेंस इसमें होगी, सभी की रहता नहीं गया, जो लोग लेट आए हैं, आज ज्वाइन किए कुछ लोगों ने. Anybody who does not understand Hindi, tell me first, because sometimes we use Hindi also sometimes, you know. People from the south of India, Assam, can you understand Hindi? Hindi समझ आ जाएगा थोड़ा थोड़ा? You can understand, okay, fine. Because sometimes we use a little bit of Hindi also, but normally we speak in Hindi, English only. इसमें 23, इसमें 22 हैं. Somebody has not told over there. Mr. Ram Singh. Mr. Ram Singh is there. Mr. Ram Singh. Ram Singh. इसमें you can check your spellings, names or spellings of the names also, because certificate आपके तो वैसे आपके टाइप होंगे, ठीक है? तो अभी आपको मैं ये दे रहा हूँ. Please check your spellings of your names, ताकि फिर बाद में कुछ करेक्शन ना होगा. इसमें एक राम सिंह का भी इसमें नहीं है, वो भी जरा अभी आएंगे तो जरा करवा दीजिएगा, लंच के बाद में देंगे. तो चलिए शुरू करें. Okay, I think हाँ जी सर. हर जो प्रेजेंटेशन Okay, I think we can start the next session. So let me welcome all of you to this next session. We have with us Dr. D.P. Singh, who is our resource person. Dr. D.P. Singh is the director of GGS Sachdeva Group of Education Institutions at Kharad, Mohali, which is close to Chandigarh. Dr. Singh is basically a metallurgical engineer from the Punjab Engineering College, which is now the PC Institute of Technology, of course. And then he has done his MBA and PhD also in the field of management. So he will be speaking on the topic of introduction to marketing, basically, because marketing is a very important area for entrepreneurship. Even for you as the teachers, you have to, how do you market yourself basically, and how for the private institutions, like you have to do a lot of marketing also. So marketing is something which everybody should know. So with that thing in our this thing mind, we have kept this session on marketing, introduction to marketing. So I welcome Dr. Singh sir for this session, and sir, we have around 23-24 people who are sitting over here. They're all basically the technical teachers from different parts of the country. They're all polytechnic and engineering college teachers from different states, including south and east also. And we have one center at Bharatpur, Rajasthan, in which 40 people are participating at Bharatpur Government Engineering College also. So it's a mix of 23 plus 40, around 63 people over there. So, yes, sir, you are welcome, please. Yeah, thank you. Dr. Dhameja and my friends. Friends, it's in fact a privilege when I was told by Dr. Dhameja that I have to come and discuss with you on marketing. Idea was not to come and teach you here. Idea was to come and share my views with you, whatever I have picked up during my career. And of course, my benefit goes that when I interact with you, I learn a lot. Basically, I give credit to the audience because whatever today I know and whatever I'm going to speak, mostly I have learned from my colleagues like you. Well, this is one area, marketing, right? Let me assure you that it is not a separate subject. It is not a
subject to be specialized, but very, very essential subject. Very essential subject because everyone needs it at every stage. You must be feeling sometimes that I have not been able to make my presentation well before the teachers. I have not, so before the students. I have not been able to present myself well before the office, government official where I have gone. Or sometimes to my principal, I have not been able to put up my thoughts so well across. So this is what the area which teaches you to propagate, to inform others what you are and what you have. That's the opportunity you get when we talk about the marketing. I have a distinguished privilege that I have been in industry for almost 35 years, including Tata Steel and Swaraj Group where we used to make it. I also have the privilege that I have been associated with teaching for last 25 years. You say how it makes 60 years? No, it's not. Uh, because I always have in mind that from industry you can always move to teaching. But after a certain time, from teaching to industry becomes very difficult. Right? So what I started was in 1985, started teaching a subject called materials management, which was, I was a practicing manager that time. And that was Saturdays, Sundays. I started teaching and kept on teaching that institute, Indian Institute of Materials Management, for almost 25 years. But on Sundays. I used to enjoy because I used to prepare and slowly got an opportunity of teaching in Punjab University, the management students. And that lasted for 10 years. Believe me, it was 6 o'clock I used to reach home and 6:10 I was in the university to take the class. And my students who had the last class at 4:50 will wait up to 6 o'clock for me to come. Because that was my limitation or my condition of coming there. But I thoroughly enjoyed it, and that is the time when I did my PhD also, because I thought once I am free from industry, why not to go for academics? And things went very favorable that the day I left my industry job, I completed the assignment. I became the director of a management institute, and where now I am working as a director is a group of institutions where we have engineering, we have management, we have pharmacy. I mean, there are about 7 different polytechnic and all these courses, and I'm really enjoying it. There are a lot of questions people raise in the family and society that why are you continue to work? I said if I enjoy, what is the problem with anybody? I really enjoy it. So with this background, let us first see what the market is today. Then we'll come to the marketing, right? Anybody of you have the marketing background or management background? Oh, great. That's good. So I have some people to correct me wherever I do. But basically my interaction will be with you on the practical aspects. And during this marketing assignment, which I had half of my career, I have been to almost every state of this country. Not almost every state capital, and got an opportunity of traveling to almost 16 countries. This is such a glamorous part of it. But only constraint here is that we have to give quantitative results. We have to give quantitative results, and every evening we have to give a report to our bosses that what we have done during the day. Otherwise, this is absolutely a interesting and very glamorous job, marketing. Let me see what the first, what the economic scenario is today. Can I come close to you? I don't want to keep a distance. Okay. Because, or you kindly come forward. Kindly come forward. Because in marketing we always say that
Be close to your customer. Remove his discomfort of distance. Today, if you see the scenario that you are sitting at home and everything is available to you. So, if we look at the economic scenario and compare it with some time back, today is the kind of situation where we call it the globalization. I'll just read out that, which gives you an idea what the globalization is, how the I'll just read out, kindly be with me. When an English princess, along with her Egyptian boyfriend, crashes in a French tunnel driving a German car with a Dutch engine driven by a Belgian driver who was high on Scottish whiskey, followed closely by Italian paparazzi treated by an American doctor using Brazilian medicines. So this is when and the Princess Diana died, right? So this is a quote which had come, that this is, all these things were from all countries but together at that time. So this is what the globalization is. Earlier, a cigar manufacturer will make cigars and specialized cigars for the rich clientele of that locality, because he will make the cigars as per the taste of that person, and the thing was confined to the village only. Today the entire world has become a village. Today same cigar manufacturer is a global company and supplying these cigars to the people's taste all over the world. See the difference? From a village industry, it has become a global industry. The whole world has become a small village where anything and everything is, you can get, you can connect up, you can get it. So this is what the concept of globalization is. Across the boundaries, no nations, no countries, no states. Anything, anybody can produce anywhere and sell anywhere. Second, the very important aspect is the liberalization. If you recall, about 25-30 years back, everything was permit based. That means if I have to make my house, for getting 25 bags of cement, I used to stand in line to get a permit and then I'll get a cement. If I have to put up a factory, I have to take a permission, I have to take a permit. So that system has gone. And then there were a lot of restrictions on the imports. If you recall, Dr. Manmohan Singh, when 92, he was a finance minister, he opened up the economy. That was a turning point, 91, 92, around that area, when Narasimha Rao was the prime minister. And that was the time when Maruti came in. And today, if you see, you name a world's car and it is there. And when you go abroad, you see all Indian cars, all models are there. So this is what the liberalization has taken place. No, let me tell you that Rahul Bajaj, one of the eminent industrialists, was given a arrest warrant for overproducing, because there was a restriction on this thing, on production, and the scooter was in very high demand, Bajaj, and he was issued with a notice for being arrested. So that was the clutches of the permits and qanuns and inspectors and all those things, and all those may have gone now. You can do everything online. Sitting at home, you can apply for your license, you can apply for your registration, you can go get anything you want, you can do it. Another aspect which we see is the privatization. I mean, sometime back, government used to run factories, government used to run buses, government used to run restaurants,
anything and everything. It was fine when India got independence and Jawaharlal Nehru wanted the key industries to come up. That was the time these Navratna industries were founded with the help of Russia and Germany. But now the situation is not there. All these government organizations are slowly coming out of the business. The latest, maybe the now coming up is the Air India. HMT has already gone. HMT has gone out. So otherwise, it was a monopoly industry. And that was the time when if you book a scooter today, you'll get it after 20 years. Something of that was the line. When the TV came, 81, 82, TV came in Delhi, 81, 82, TV came, right? When the Asian Games were taking place, that was the first time people saw it. And ECTV was the only company manufacturing TV. And booking was 22 years. So all these things have become privatized now. You name a brand, you name a model, it is there. You need, I mean, almost 30 companies are producing automobiles. Equal number of producing the televisions and refrigerators and whatnot. I mean, you ask for anything, it is there. So that is a change scenario. And second, the last one is in the economic scene, I'm saying, is the pluralism. That means there is a competition everywhere. Pluralism is more than one. You have a choice. Today, customer has a choice. You go here or you go there, or you go to the next person. Whatever you want somebody to deliver you a car at 1:30 in the night, and it will be delivered. You say on Republic Day, I want to take a delivery of car because my Muhurat is on that day. They will deliver you right at your doorsteps. That means competition is so tough that people have to be cost effective, have to be quality conscious, have to be customer oriented. Now in all these areas, if we'll look at this, one factor which has become most important. Anybody who will share with me, that is, what is that one factor in the entire business scenario which is the most important, without which we cannot survive? Yes, that's the process, but that process leads where? It goes to our customer. One word where the entire business is focused is the customer. Customer. We'll see what all customer ask for it, right? Because customer satisfaction we started with. Then we said, okay, customer is a delight. Customer delight came the word. Not only he is to be satisfied, he is to be happy. He is to be happy. I mean, if you go to airlines, board a aeroplane, you feel very happy that you are being greeted, right? And you feel that you are being greeted with a lot of smiles and all. But when you come out, you get little disappointment that this air hostess is greeting everybody, not only me. So you get little disappointed that everybody is getting greeted. But Japanese have gone a step ahead in that direction. Japanese now say the customer is God. First the term came, customer is king. That means can dictate anything they want. Now they say the customer is God. Reason being, the customer is one who provides me with my car, with my living expenses, with my children education. Anything what I have is given by the customer. Anything which I spend is given by the customer. So ultimately, the customer becomes a god. And they go ultimate in that, in taking care of the customer. Because the customer gives you
Everything what you have and what you spend, what you do, everything is done by the customer. Any difference of opinion from anybody? Because today we are teachers. Let me tell you, the scenario, the education scenario is such. I'm not very sure how many of you are able to fill your seats. All seats filled up. Maybe few elite organizations like NIT, Triple TR, the seats get filled in their MTech courses and all, but very few. Very few. Let me tell you, even ISP, even IITs, even NITs have started doing marketing, started taking care of their customers. Who are the customers? There are two important things. One is the customer, second is the product you make. So they, because today the student which comes is my customer. And tomorrow when he passes out, he becomes my product. And nothing speaks better than what my product speaks. So it is absolutely essential for us that we start caring for our customer. We start doing marketing. We start explaining them what the benefits are. Why our institute is better? Because let me tell you that the speed with which the new colleges were coming up, right? They came with very high speed in South and then came in Punjab and many parts of the country. They're coming up with the same speed. They have started getting closed down also. The institutes are getting closed down because there are no students. The break even is not there. So we will all have to be absolutely extra cautious in making sure that the person whom we teach, the student whom we teach, is a satisfied student. Doesn't mean indisciplined students. I will not tolerate anything indisciplined under any circumstances, but the person has to be. We'll come to the marketing. Now, before we come to what is market? What is market? Market is the people or the organizations. There are two important things are कि the person should have or the anybody. कहते हैं ना शादी में सबका मन करता है पैसा खर्च करने का, पर दो चीजें बहुत जरूरी हैं. एक, आपके जेब में पैसा होना चाहिए. दूसरा, इच्छा होनी चाहिए, मन होना चाहिए. अगर दोनों में से एक की भी कमी है और दूसरा ज्यादा स्ट्रांग है तो फ्रस्ट्रेशन होगी, या कर्जा हो जाएगा या फ्रस्ट्रेशन होगी. सो बेटर है that market is where the people have needs and wants and ability and willingness to buy. They should be able to buy it also. पैसे भी होने चाहिए जेब में. And fortunately in India, the buying power is going up day by day. So this is what the market is. Anybody would like to express anything on this? Any comments? So wherever these combinations are there, where people are there, there are needs. Business organization, environment. This is the market I am explaining. This is the market. So if there are people who are willing to buy, I am here because you are willing to buy, willing to take, willing to spend, isn't it? So this is my market. This is what I look at it. So not necessarily in business environment, sir. We'll just come to the basic definition of marketing. It's much wider and broad. So we come to our next. What is business markets, which you said, right? Now business market is the industrial, reseller, government markets, right? Government is the largest buyer even now, and marketing of intangible services, rural marketing. If you look at this, the industrial marketing, where the manufacturing takes place, 70 to 80% of inputs
are purchased from the outside. 70 to 80% of the inputs are being purchased from outside. I'm from automobile industry. Everything. I mean, material cost becomes almost 70 to 80%. Then you buy services. So what you add on is only 10%. And that is what your margin is. And resellers. Just imagine how big the resellers are now. Look at the Amazon, Snapdeal, Flipkart. I mean, you name any, they are resellers. They are not even resellers, they are only platforms to sell. These days, Flipkart last year, in 1 crore, in one day, had the turnover of 662 crores. 662 crores. The economy got shaken up. What is happening? But they executed. In next week, by Friday, everything was executed. So resellers are very big. कितने आपके वो हैं? We have to, prior to this, government has not yet given the clearance to the MNCs coming into the retail. Not yet come, right? It is only to the wholesalers which they have given the, it's only to the wholesalers, isn't it? The metro came, the best price came, right? They were supposed to give it only to the wholesalers. So I got the card because I was the director of an institute, so I was buying for the institute, so I was a wholesale consumer or wholesale buyer, so they gave me the card. There was a restriction by the government that we will not be giving time. It is in the process, maybe it comes very soon. So look at the market we have. If we look at the intangible services, 52% of the GDP is for the services. I got late five minutes because when I was driving, there was a post office. I went there, gave a letter, took a receipt, right? And tomorrow my letter reaches Delhi. So services like this, not only this services, you name anything, there are services providers. There are service providers. You want a food, just make a call or just put on this thing. You want a ticket, it comes to you. So these are all service providers. Yeah, huge market is available for that. And there also they need a lot of marketing. And further, which is coming up, is rural marketing. In Punjab, the urban market is lower than the suburban markets. More cars are being sold in suburban markets. 20 kilometers from here, small townships have more cars than what we have. Their consumption is more. Yesterday we were discussing that let's have a cricket tournament. Some people suggested that let's have a kabaddi tournament so that a lot of people will come around this thing. They say no, cricket is now as popular as kabaddi, rather more popular. So if you want to have it a cricket tournament. Because rural market is coming up. And government is also making sure that instead of people coming to cities, they should get the benefits close by. And this is what we in Chandigarh say. Ki please do not touch our Chandigarh. Don't mess the high-rising buildings. We are not. There are two divided opinions. One opinion says that there should be flyovers, there should be underpasses, there should be multi-story buildings and metro and all those things. And people like me, the little who have already got a place in Chandigarh, so we will say, please don't touch it. You expand it so that the development starts. Wherever the discussion, this discussion is very common and we have panel discussions. And luckily, our last member of parliament was very strong supporter of our ideas. Let Chandigarh remain as it is. So my suggestion is when you are free, please go around it. It's a beautiful place.
I've seen many cities, but it is one of the very beautiful cities, very well maintained. People are educated, traffic sense is better. So my suggestion is, when you go around, you get a time, please go around and have a look at the Chandigarh and this thing. So this is what our business markets are. Now we come to marketing, right? It's when we start everything, we fix up our objectives, isn't it? We try to fix up our objective. We say our objective in a larger perspective, when we say it, marketing is to make goods and services available to meet the society needs. That means society should get the things what they need. This is what our ultimate. Of course, on a profit, when I'm working for an organization, for government it may not be the objective, but for a private organization where I worked whole of my life, that with some profit should be there, reasonable profit should be there. Second, preserve and enhance individuals and society's long-term interests. Today there are a lot of objections being raised. A lot of debate is, I will not say objection, debate is being raised. Is so much of advertising required? Are so much of comforts required? Or my opinion is that instead of we increasing the high level of comforts, let these small comforts reach to the poorest people. What we see in Chandigarh is not India. What we see in Punjab is not India. If we really want to see India, go to the eastern UP, go to Andhra, go to Odisha, West Bengal villages, where still people do not have 2 meals, full meals they don't get. What is the use of having? What is the use of having those high-speed trains for spending 70,000-80,000 crores between the 2 stations? How does it matter if Chandigarh to Delhi today I take 4 hours, 3.5 hours, if it becomes 2.5 hours? Give those people, those who do not have. I mean, 85% of the wealth is in the hands of 15% people. I'm surprised. Today morning I just saw the headline, I couldn't pick up the newspaper. The 65 people are 3.5 billion and above. Not above, 3.5 billion. Above to bahut hai usme. But strange things are happening. So these are not good for society. So when we are doing marketing, we have to preserve our long-term society interest. Let us not go in the short term only. Let us not do it. So this is what I have objective I put in. If you ask an industrialist, he says, collect up everything. Those who are aware of the private colleges, they know. They opened 1 college, 2nd college, 3rd college, 4th college, took the fees, no faculty, no labs, nothing. And what is the result today? No placements. And They are going to close. yes, and haphazard thing is that 5.6 lakhs is the intake for engineers. 5.6 lakhs is the intake for engineers, and 2.5 lakhs is the intake for the polytechnic diplomas. That means for 2 engineers there will be 1 diploma holder. It should not be like this. For 1 engineer there should be 3 diploma holders. Why should we be getting into now? What is the result? All engineers are working as diploma holders. MBAs are working as sales people. Are they not working? Yes. I have put MBAs for on the counter sale. Let them learn something, let them do something, let them start earning. Then of course over a period of 5-6 years they become store manager or
backend services manager they have become. But haphazard growth we cannot afford. So that's why I say it is preserve and enhance individuals and society's long-term interests. Otherwise, what will happen? There will be a divide between the haves and have-nots. Already divide is there. And there will be war, civil war, clash, which is happening today. Why so much of crime? वो पुराने जमाने के बच्चे नहीं हैं जो कहते हैं कि ठीक है दूध नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बिना दूध के बच्चे रह लेंगे. अब जो बच्चे आ रहे हैं वो कहते हैं हम छीन के पी जाएंगे, अगर कोई ज्यादा पी रहा है तो उसे छीन लेंगे हम. दैट इज द, आपने देखा यंगर जनरेशन आप लोग पढ़ा रहे हैं, हाउ अग्रेसिव एंड हाउ वायलेंट दे आर, demanding also and expecting and aspiring, and they look at this. I mean, no will have the ordinary telephone in the hand, whether he can afford or he can't afford it. Everybody wants a smartphone with all the facilities in that. So, long-term society's interest must be seen if the marketing people are there. I am not a follower of Swami Ramdev, but I appreciate one thing. He has created a business empire of 2,000 crores. 10,000 crores. Oh, great. More than 10,000 crores, right? Chalo. I correct myself. But he has not used advertisement with half-naked ladies, girls, models. Not used. That means that can be done. That can be done. Amul, that society of Gujarat. Yes, there's a typical example that lakhs of this they are managing, thousands of crores of turnover, lakhs of villagers and all those people they are managing without IT. They are managing. There is only one company which is in world's Six Sigma list. Not company, association or association of people. That is Dabawala. Not even one company of corporate stands there, right? They are there. Without any IT, without any WhatsApp, without anything, they are doing it. 2 lakh tiffins they deliver every day. Yes, 4 lakh transactions they do every day without any mistake. So, without any this thing. So things are possible in our own way. What China did was, they are very aggressive marketing they are doing now. But 30 years they shut down their economy. They set their house right first. Gave everybody a cycle at least. And everybody was, once they have a cycle, then they came on 2-wheelers and then they came on the cars. They come to that stage now where they are enjoying all these amenities. So, we have to, as a marketing person, we have to look at the long-term benefits also. Now, what is the marketing? Very simple question we ask whenever an MBA comes for interview. We ask them, what is MBA? He says, Master of Business Administration. I said, just give me a simple definition. So he gave, one person gave a very good definition which I would like to put to you. He said, MBA means, मुझे बहुत आता है. मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते this is what Anil Ambani had told Dhirubhai Ambani. And Dhirubhai Ambani said, take out your suit and to take out your tie and go and work with the workers, and then you will come to know तुम्हें आता है कि नहीं आता है. So, simple definition. I said कि only one factor is important in the entire business is customer. Simple definition of marketing is that identify your customers. आपके customer कौन है? कहाँ पे हैं? Where are they? Then identify the customer needs. उन्हें चाहिए क्या? Don't try to impose what you have.
Try to give them what they need, and then see how can they meet their needs. Satisfaction of customer needs is the marketing. जो कंपनी ये करेगी वो सक्सेसफुल रहेगी, जो कंपनी नहीं करेगी वो डूब जाएगी. Satisfaction of customer needs, that's the crux of the whole marketing process. Now when we say that marketing process, कि हमें marketing करनी कैसे, सबसे पहले we say who are the customer, मेरे customer हैं कौन, कहाँ पे हैं, where are the customers, how to reach them, what are customer needs, and how to satisfy customer needs. This is what the entire marketing process is. All evolving around one word called customer. Who are the customers? Where are they? What do they need? हम क्या करते हैं, अपना इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास है वो देने की कोशिश करते हैं. A person like me doesn't need that sophisticated a phone. सिंपल कॉल करना है, सॉल्व आना है, मैसेज आना है, मैसेज जाना है, और एट द मोस्ट अब व्हाट्सएप ऐड कर लिया, बस दैट्स ऑल, नथिंग बियॉन्ड दैट. मुझे चलते चलते रास्ते में इंटरनेट नहीं सर्फिंग करनी है या वो नहीं करना है. आई मीन दीज आर नॉट द रिक्वायरमेंट्स, बट दे कीप ऑन गिविंग विद 100 दिस थिंग which I don't need. So we say this is what our marketing process is. Any doubt? Anybody would like to share anything on this? कहीं मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, कहीं डिसएग्रीमेंट हो, मोस्ट वेलकम, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस में फॉर मी दैट what are the, this is what our process is. We identify who are the customers, where are they, what do they need, how to reach them. So reach has not become a problem once you identify, once you reach them, whether you reach them on social media, you reach them on advertising by newspaper, you reach them on television, radio, anything, but you reach them and then try to identify their needs, give them what they need. This is what the marketing, simple, very layman's definition. Now, what is important in marketing? The most important thing is the product. We say 4 P's, the product. Nothing speaks more than what your product will speak. Nothing will speak more than, आप कितने दिनों लो क्वालिटी प्रोडक्ट चला सकते हैं, नहीं चला सकते. The moment it goes to the market, the word spreads. So the product is the most important thing. The quality of the product which you are assuring and which meets the customer needs. So that becomes a number one point, that product has to be of the quality which you have specified. I'm not saying the best, because best will have the best price also. Not the best product. Think the one which meets the needs of the people, what they need. That's why there are 20 models of a car, one after the other, one after the other, one after the other. And you select which one you need. But minimum quality expectations. I was in the service station 2 days back. He said कि आप अपना वो खोलिए, what do you call it, no, सामने हाँ बोनट. मैंने कहा मैंने पिछले 10 साल से नहीं खोला है, मैंने पिछले 10 साल से अपना बोनट नहीं खोला है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी खोलने की. वो 3-4 महीने बाद सर्विस में जाती है, इसे वॉश होके आ जाती है, दैट्स ऑल. फिर उसने मुझे कहा कि आप डिक्की खोलिए. मैंने कहा ये पता है जब गाड़ी खुली है तो डिक्की खुल जाएगी,
अदरवाइज मुझे स्विच नहीं पता कहाँ पे, मैं पीछे जाके खोल दूंगा, मुझे स्विच नहीं पता क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी इन चीजों की. दैट इज द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच वी आर लुकिंग फॉर. अदरवाइज आप लोग देखिए, जब फिएट एम्बेसडर होती थी तो लोग 5 दिन चलाते थे, 2 दिन रिपेयर करते थे उसको. यस, रेडिएटर में जब लम्ब्रेटा स्कूटर होता था तो बहुत धक्के मारने के लोगों को आदत थी, धक्का मारते थे. तो ये सब चीज थी, बट नाउ द प्रोडक्ट हैज बिकम अ प्राइमरी कंसिडरेशन. Another price is the price. देखिए, we are all price conscious. Particularly Indian market is very very price conscious. हम तो कहते हैं हमें what we need is the imported quality at Indian prices. Imported quality at Indian prices. At the lowest price. जब भी मैं किसी को फोन करता हूँ भाई मुझे गाड़ी चेंज करनी है, तो मुझे बताओ भाई कि लोएस्ट प्राइस क्या है तुम्हारा, ये मॉडल लेना है, लोएस्ट प्राइस बताओ. देन आई विल कंपेयर विद द 6 पीपल एंड देन सी ट्राई टू टेक इट आउट समथिंग. मैंने हाफ द कैरियर आई हैव वर्कड इन परचेज डिपार्टमेंट आल्सो. सो परचेज डिपार्टमेंट के बारे में कहते हैं ना, वो बिल्कुल निचोड़ देते हैं. वो एक बहुत यू नो द रेसलिंग वाज टेकिंग प्लेस. आप लोग सब हिंदी समझते हैं ना? तो रेसलिंग वाज टेकिंग प्लेस. तो the one who won the wrestling, right? उसने चैलेंज किया कि कोई मेरे से लड़ना चाहता है. तो एक बंदा आया, कहता मुझे लड़ना तो नहीं है, पर ये नींबू देता हूं आपको मैं, ठीक है, इसमें से मैंने पूरा निचोड़ दिया है, अब और कोई फर्दर निचोड़ के दिखाए. तो एक क्राउड से एक आदमी आता है, उसने पता नहीं क्या टेक्निक लगाई, तो 2 ड्रॉप और निकल गया उसमें से रस के. तो कहते भाई आपने कैसे निकाला? कहता मैं परचेज का आदमी हूं. तो मैं निचोड़ लेता. सो प्राइसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी जो यंग जनरेशन है वो शायद प्राइसिंग के ऊपर इतना नहीं जाते. वो जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, सामान लेते हैं, बकेट में डालते हैं, कार्ड देते हैं और लेके बाहर निकल जाते हैं. बट most of the people in India are price conscious. Price must be the lowest. This is what we say. अब कई बार उस चक्कर में गड़बड़ चीज भी आ जाती है, because we don't ensure the quality. और घटिया चीज, देसी चीजें तो बहुत मिलती हैं इंडिया में, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत हैं, सारे मिलते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है. बट ये है कि प्राइसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब आप अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां भी बाहर लिखा हुआ है कि द कंप्लीट फूड इज फॉर 250 रुपीज. इवन इफ यू गो, वी हैव अ वेरी गुड मॉल हियर, एलांटे मॉल, वहां पे उन्होंने खाना डिस्प्ले किया हुआ है कि ये थाली 90 रुपीज की, ये 100 रुपीज की, 150 रुपीज की. हमें प्राइसिंग इज दैट मच इम्पोर्टेंट. दैट सो प्राइसिंग हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल विच सेगमेंट यू वांट टू डील विद. जहां पे प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल other than 1 or 2% at the top, वही होंगे जो इनकम टैक्स पे करते हैं. वो भी नहीं है हमारी तरह, तो 10 बार पूछते हैं प्राइस पे कितना है क्या नहीं है. देन कम्स द प्लेसमेंट. दैट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कहाँ कर रहे हैं, किसके कंपटीशन में डाल रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है क्योंकि आपने उसको गलत जगह पे डाला, आपने कंपटीशन में गलत जगह में डाला. मारुति की एक गाड़ी आई थी, दैट वाज 8 सीटर, और वो पेट्रोल की थी, जिसका नाम नहीं याद आ रहा है. अर्टिगा तो अभी आई है, वो ये पुरानी थी कुछ थी. सो तो पेट्रोल की गाड़ी, यस यस, वो थी 8 सीटर थी और पेट्रोल की थी. तो जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा भाई ये गाड़ी फेल हो जाएगी. कहते क्यों फेल हो जाएगी जी? मैं कहा देखो टैक्सी में चलेगी नहीं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का उस टाइम पे काफी फर्क था, और फैमिली के लिए आजकल हस्बैंड वाइफ तो एक साथ जाते नहीं है. 8 बंदे आप कहाँ से इकट्ठे करोगे? कहीं जाने के लिए 8 लोग आप कहाँ से इकट्ठे करोगे? हस्बैंड वाइफ तो एक गाड़ी में जाते नहीं है, और वो गाड़ी फेल हो गई.
बहुत सारी ऐसी चीजें आई मार्केट में, बिकॉज दे पुट इट अंडर अगेंस्ट द रॉन्ग प्लेस्ड, वो गलत जगह पे उसको उन्होंने लगाया। दैट इज द प्लेसमेंट। आपने किस सेगमेंट को सर्व करना है, आप उस सेगमेंट को टारगेट करें। उस सेगमेंट में कितने लोग हैं लेने वाले, आप वो देखिए। डिमांड, वेयर द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। अब आप चंडीगढ़ में मारुति 800 डालेंगे तो कोई नहीं लेगा, फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोई नहीं लेगा। यहाँ तो एक पॉपुलर वो है कि एक स्टूडेंट ने अपने जाके क्लास में बताया कि मेरे पापा ने ना गाड़ी ले ली है। तो बाकी स्टूडेंट्स ने पूछा कौन सी गाड़ी ली है, उन्होंने कहा मारुति 800। तो बच्चे उससे पूछते हैं कि तेरे पापा क्लर्क हैं क्या? तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो नहीं चलेंगे। आज जो मिनिमम गाड़ी चल रही है वो ऑल्टो है, इससे ऊपर ही है, छोटी गाड़ियां नजर नहीं आती। बट यही गाड़ी आपके छोटे शहरों में, कई शहरों में अभी भी रिक्वायर्ड है, अभी भी रिक्वायर्ड है। सो यू प्लेस at the right spot. Now all these taxi operators are trying to place their taxi. Uber भी है, taxi future भी है, Ola भी है, fighting for the thing. But Chandigarh is not a place for taxis. The reason being कि आप 10 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हैं। The maximum distance जो है वो 8-10 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं। It is a 10/10 this thing. सिटी जो है 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का है, आप 10-15 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब 25 रुपीज पर किलोमीटर तो कोई देगा नहीं, और 5 रुपए में वो चला रहे हैं, कितने दिन चलाएंगे आई डोंट नो। हर एक के पास, चंडीगढ़ इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ 2 व्हीलर्स पर कैपिटा, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ कार्स पर कैपिटा इन चंडीगढ़। इट हैज द लार्जेस्ट इनकम ग्रुप, यहाँ लोग पैसा भी खर्च कर सकते हैं, largest income group. And some of you may be interested in knowing that it has the lowest price of liquor in the country. Besides petrol भी सबसे सस्ता है, इंडिया में सबसे सस्ता पेट्रोल भी यहाँ पे। So if you try to put the things here which are not suiting to that profile, the things are bound to fail. And then comes our promotion. The most important thing, the promotion. How do you promote your product? How you push your product? How you make the people aware of your product? That is the most important aspect of the whole thing. अब अगर ये लोग बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग की या ऑनलाइन परचेजिंग की, they claim that their customers are millions. Their customers are in millions. Means हर कंपनी क्लेम करती है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख का मिलियन होता है, इतने कस्टमर हैं उनके। And their transactions are in billions. And that means number of transactions. It is expected that a person will make 40, 50, 100 transactions in a year. And their money transacted is in trillions. If they are selling 662 crores in one day, imagine the. And now to beat that record, this time, if you have seen watching the television, Amazon is coming from 21st to 23rd India sale. I mean, they'll be selling all over the world the products, and they want to beat that record of Flipkart that they made last year of one particular day's sale. So this is what the promotion is. Aggressive promotion, aggressive advertising, reaching to the customer, giving them benefits, luring them. अभी दिवाली ऑफर खत्म नहीं हुआ था तो न्यू ईयर ऑफर आ गया, अभी ईयर एंड ऑफर आ गया, अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, and one car is giving 1,06,000 rupees worth of benefits. This is what the promotion is. I said इतना प्राइस है, 1,06,000 काट के मेरे को मेरे घर में गाड़ी दे जाओ, पैसे ले जाओ.
वो कहता नहीं सर बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट तो उतने पैसे के दे रहे हो ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बेनिफिट नहीं चाहिए, पैसे दे दो। वो समझ गया परचेज का आदमी है, इससे डील करना फायदा नहीं है, इससे फायदा नहीं है डील करने का। सो दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग इट, एंड इसके बिना बिजनेस चलता नहीं है आजकल। आप अपने घर में बैठ के, आजकल बहुत बड़ा एक प्रमोशन का हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, आप गूगल पे जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, एंड स्प्रेड द वर्ड एंड स्प्रेड्स इन नो टाइम। एक छोटी सी गॉसिप होती कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ कहाँ पहुंच जाती है। पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हो रही थी आमिर खान को लेके, हैं इंटॉलरेंस पे कंट्रोवर्सी हो रही थी। आमिर खान ने कुछ कह दिया और उसके पीछे पड़ गए लोग, उसके पीछे पड़ गए। तो आई वॉज फीलिंग हर्ट, तो मैंने 3-4 लाइन लिखी। What I wrote, I can reproduce it, that I feel scared on the roads because of mad traffic. I get scared in giving lift in my car to a lady. I was scared in 1984 and shifted from Bihar to Chandigarh after assassination of Mrs. Gandhi. And I openly say all these things, I am scared. What is wrong in it? If Amir Khan says that he is scared, what is wrong in it? If what he feels, if he says, what is wrong in it? Why the nation is after him? I at least had to migrate, place to migrate. मैंने बिहार से अपना वाइंड अप किया टाटा स्टील से और यहाँ के नौकरी पकड़ ली। उसके पास तो वैसी भी कोई जगह नहीं है। तो what is wrong in it? And believe me, this message kept on circulating. Ultimately, a message from Amir Khan came. Thank you, friends. Through all those groups and channels, this message came back. So strong is the social media. अभी हमने एक एडवर्टाइज किया है कि हमें सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेशली we have to appoint somebody for social media advertising, because उसके बिना काम नहीं चल रहा है। I mean, if you look at this, though I call myself an academician and industry and all those things, we go for promotion, we go to every student of the college, schools, to persuade him to bring it with us. Once the schools are closed, we will go to every village. And this is not confined to these areas. We go in Assam, we go to Nepal, we go to Jammu Kashmir, we go to Bihar, and anywhere, Jharkhand, and anywhere. Because we have to promote, we have to sell. Marketing has to be done. And perhaps that is one reason that I am, वरना इन दिनों में मैनेजमेंट वालों की पोजीशन थोड़ी डाउन है, एमबीए वालों की पोजीशन थोड़ी डाउन चल रही है आजकल एज कंपेयर टू द टेक्निकल पीपल. तो आई एम क्वाइट सॉर्ट ऑफ पर्सन की ही नोज मार्केटिंग, तो अपना कॉलेज चलता रहेगा, स्टूडेंट ले आएंगे कहीं ना कहीं से. सो दैट इज व्हाट द प्रमोशन इज रिक्वायर्ड. और बिना प्रमोशन के नहीं चलता है. ओनली थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज द प्रमोशन हैज टू बी एथिकल, हैज टू बी ethical. Sorry, I'm sorry. I want to share one Sure. example which I guess include 3 of the keys in that. I saw one advertisement of a car company, I guess that is Maruti Suzuki. It wrote in the advertisement that this is a car for a country which is obsessed with mileage. They wrote it. Yes. In their advertisement. That means they have Because taken we the people- prices. Because we people generally buy a car by looking at the mileage it is giving. It's a petrol or a diesel. Yes, yes. Pricing, Kind of a pricing. placement they made Yes. in the country. The people who, Yes, they make their promotion also. They were including the price of that car also. That was reasonable. in comparison to the reasonable. price, and running cost also. yes. And running cost. That's what is required. Innovative marketing, innovative promotion, advertising, right? Reaching to the people. Otherwise, आप न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हो, कितने लोगों तक पहुंचता है? अगर 3 लाख की सर्कुलेशन है,
तो आपके काम के तो 30,000 लोग भी नहीं होंगे उसमें, आपके काम के तो। सोशल मीडिया तो वैसे भी आजकल ऑलमोस्ट फ्री है, चला दो चलता रहेगा। थोड़ा सा मसाला होना चाहिए उसमें थोड़ा सा मसाला होना चाहिए, तो इट गोज ऑन, इट गोज वायरल इन नो टाइम। ओके, नाउ I said that now it is not, marketing is not a function which is only for the marketing department. It is not only with the marketing department. It is the total organization's functions. Total organization functions. I had an opportunity of working with the Japanese for a very long time because my company was a Japanese collaboration. So anybody comes from there, they will promote their country, they will promote their product, they will promote their culture, anything. And good management practices they'll try to promote. Because it is not they consider that I am R&D man, so I'll come and talk of only engine or efficiency improvement or mileage improvement, these things. They will talk of everything. Yes. This is a cross-cultural. Marketing is not a function of that we are going to a particular culture. We have to, across the cultures, we have to do the marketing. अब वो जमाना क्या जब कि इडली डोसा वड़ा जो साउथ इंडिया में ही पॉपुलर था, अब वो इंडिया के हर कोने में पॉपुलर है। या मक्की की रोटी और साग सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था, राजमा चावल सिर्फ साउथ इंडिया नॉर्थ में थे, but now it's popular all over the place. I mean, you see when the Rajasthani food stalls are here, the Maharashtrian food stalls, luckily we have a lot of exhibitions where all these people come. And there's huge rush of people for Gujarati food, for South Indian food and these things. And because it's a cross-cultural. It's no more confined to a South. South में जाएंगे तो मसाला डोसा खाएंगे, या once in a while एक उसमें जाएंगे. Now it's a daily routine things. It's a cross-cultural. Every culture is adopting these things. Cross-functional. I said that marketing is not a function of only marketing department. And somebody asked me, how could you manage last year double the admission of previous years? I said, it's a simple thing. The entire marketing staff, entire faculty, entire staff, and all students, we all joined together. 1,200 people were on the roads, and we got the results. So it is not a particular person's function. आप कितनी अच्छी मार्केटिंग कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट का एक नट ढीला रह गया, सारी मार्केटिंग बेकार हो जाएगी. So everybody is involved in this, whether they are quality people, they are manufacturing people, they are finance people, everybody is involved in this so that we compete. We'll be coming to that. It is cross-disciplinary. It's not a particular discipline, but marketing management is a separate thing altogether. I always tell MBAs, जब वो कहते हैं ना MBA HR, MA finance, never here. MBA is an MBA. You have done 2 papers extra, that's all. Why you reduce your this thing? Why you confine yourself to a particular discipline? You say, I am an MBA. But if somebody needs an HR person, you tell, these are my specialization in HR, and I am going to be useful to you. So, then customer centric. I mentioned to you that the only thing important in marketing is the customer. Everything has to be evolved against the customer, nothing else. It's the customer which will give you bread, which will give you success. And at the same time, competitor focused. कहीं हम अपनी एक लाइन में चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर कहीं से आगे निकल जाएगा साइड से. हालांकि मिल्खा सिंह lost the race just because he started looking back. Instead of focusing that thing, which he always says, he stays in Chandigarh, and sometimes when we meet, he narrates the story. अगर मैं पीछे नहीं देखता तो मैं आगे निकल जाता. So, but we have to be aware what the competitor is. अब प्लानिंग वाली बात नहीं है. अब मैनेजमेंट में एक वर्ड आता है प्लानिंग, एक वर्ड आता है स्ट्रैटेजी. Strategy is the plan
to beat the competition. आपको सिर्फ अपने आप से नहीं वो करना, अपने आप को नहीं सेव करना है, आपको दूसरे से आगे निकलना है, आपको दूसरे से आगे निकलना है. इतने एक शेर मिला और उसने दो फ्रेंड्स जा रहे थे, तो शेर ने कहा कि भाई मैं तो खाऊंगा. अब फ्रेंड बोलने लगे, या तू शेर, एक फ्रेंड दूसरे से कहने लगा कि तू शेर से ज्यादा तेज भाग सकता है. कहता नहीं, मैं तुमसे तेज भागूंगा, क्योंकि खाएगा तो तुम्हें खाएगा, तब तक मैं निकल जाऊंगा, दो को एक साथ तो खाएगा नहीं वो. सो देयर इज ऑलवेज अ टाइगर बिहाइंड यू. इफ यू आर रनिंग, continuously running, then it might hurt you. कहीं पंजा पंजा मारेगा, कहीं आप रुक गए तो it will eat you, पक्का. So competition must be taken care. What is happening in the market, what others are doing, how others are going ahead, what are their strategies, lot of market intelligence we have to do, what others are doing. पड़ोसी के घर में भी झांकते रहना चाहिए. I don't mean that. Yes, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. हम क्या क्या कर सकते हैं मार्केटिंग? सबसे पहली जरूरत है कि कस्टमर फील्स डिफरेंशिएटेड. आज आप लोग जितने लोग बैठे हैं, किसी भी, nobody is wearing two similar jackets, isn't it? Nobody is wearing us two similar dresses. This is a small gathering. If you go to gathering of 1,000 people, you don't get, unless we tell them to wear uniform. Otherwise, people are all indifferent and they want to be different. Nobody would like to have a similar treatment. They want differentiated treatment. I mean, if you are entering a hotel, right? Simple thing. The lady comes, gives you a bouquet, or puts a garland and gives a tilak, you feel very happy. Yes. But if the moment you come to know that she is doing for everybody, you feel bad. तो ये तो सबको smile दे रही है. No, not like that. You have to give a differentiated treatment to your customer. Distinguished. The customer needs to feel distinguished. Why these all Maharaja trains and these things are there, and Maharaja class in the this thing, executive class and all those things. And these are all for giving a differentiated treatment, a different treatment. राजधानी में खाना तो वही होता है, बट उसको प्रॉपर नैपकिन्स वगैरह लगा के उसको प्रॉपर सेट में लेके दे गो टू द AC first class. But so this is what the marketing is, that you give. I mean, nobody is wearing the same style of shoes. Every day you find the new style is coming up because people want. Even school children don't want the same type of shoes. They don't want same lunch boxes, anything. Wherever they get an opportunity, they'll do it. And another is a segmentation. आपको किस सेगमेंट को डील करना है? Whom are you going to deal with? That means you divide. अब Coca-Cola is producing, right? You know, almost 14, 15 types of drinks, all for different people. Starting for 10 rupees for a 200 ml drink, where people like me will pick up once in a while. Okay, रख लो अपने पास में. वैसे तो मैं कहता हूँ मुझे फ्री की भी कोई पिलाएगा तो नहीं पीता हूँ मैं, but once in a while you take it. Then there is a 250 ml, 300 ml, then 600 ml, and recently they have come up with 300 ml in plastic bottle, which was not there earlier, because you want to carry it. Earlier it was glass bottle. 300 ml was a glass bottle. Then you have energy drink. Then you have a 0 calories drink and what not range they have.
Somebody wants more sweet, they give you more sweet. They give you. This is segmentation. That means a class of people which you are serving. Segments. You divide the society in those segments where they have the similar requirements. The similar requirements. You know, you get a Cadbury chocolate, Cadbury toffee for 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees. I'm sure they will have something on 3 rupees also. 5 rupees, then 10 rupees, 20 rupees, and it goes up to 250 rupees. Because every segment they want to give it. This is what the segmentation is, that you divide the society in the groups where there are similar needs. Resource management, most important in marketing. आप बहुत सारे पैसे लेके बहुत अच्छी चीज खरीद लीजिए तो कोई उसमें बहुत समझदारी वाली बात नहीं. कम पैसों में अच्छी चीज बना के उसको बेचना, कम पैसों में अच्छी चीज बना के उसको बेचना, that is the marketing. What are the resources you have? I mean, certain people with very small income, they have all their schools are, children are going to good schools, they are maintaining good standard of living, they have a scooter also, they have a car, whatever they have, people manage very well. This is what with the industry is. This is what with the marketing is. I mean, you forgive my saying, if somebody is from Northeast, you go there, you sell anything. What you need is to give a big price to the minister. Anybody from Northeast? Huh? Which state? Which state, sir? Assam. I have very extensively traveled to Northeast, all 7 states, for 3 years, almost every month. So, होता है ना? होता है. It happens everywhere, but वहाँ openly होता है. That's what I'm saying. I mean, here if I want to meet the chief minister, I'll take 2 months, 3 months time. Then even then I will not get time. There I can simply walk into his office and make an offer also. But so resource management, logistics, advanced logistics. People are not ready to wait. If they have paid, they have booked the thing today, they want tomorrow. Within 3 days, things will come from Mumbai to this place. And so long I was in looking after the spare parts of the company, I had a challenge. Then anybody whose unit is out of order, that means off-road vehicles, I was selling vehicles, off-road, if information comes before 4 o'clock, next day morning that spare part will reach you. Because we have to carry it to, now Chandigarh, this facility is available, we have to carry it to Delhi, 4 hours, 5 hours, take a flight in the night, morning it is there. So that distance does not matter at all. Today you book something on Flipkart or Amazon, you expect within 2-3 days it should come. It should come within 2-3 days, and that comes. So logistics have to be very, very strong, both information as well as materials. Information should also travel fast, reach the other person. Then customer care and service, I have discussed. The customer is got. If you don't take care of him, वो फिर शंकर भगवान की तरह नाराज भी हो जाते हैं. बड़ा क्लियर है. उनको खुश रखना बहुत जरूरी है. खुश doesn't means कि आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते जाएं. वो तो हर कस्टमर कहता है I want heaven, I don't want to pay anything. But what the customer deserves must get. What he has been promised must get. And social media marketing we have just discussed. So this is what my plan was, and I have enjoyed talking to all of you. Right? I'm not very sure how did you like it.
But idea was that marketing is a must. Thank you. Marketing is a must for everyone. Whether you are a science teacher or you are an engineering teacher, marketing is a must. Even in society, marketing is a must. Family marketing is a must. But you have to convince your grown-up children that this is required and this is not required. This is what you feel right and this is what you feel. Okay. Thank you very much. Thank you. Is a kind of art. Art and science. Art and science mixed. Management is art and science mixed. Thank you so much. So one by How are you? उनके मैं सोचा इसका देखे करूँ मिलना. I found you there. So nice. Okay. Thank you. On behalf of NITTT Chandigarh, I thank Dr. DP Singh ji for being with us and sharing his valuable experiences of his life. And I thank you all over here and at the Noodle Center also. And we will assemble for the next session at 1:30 sharp, so that we start the session by 1:40 or 45. So 1:30 again. Thank you. Thank you very much. Question? Is there any question? Yes, sir. Excuse me, sir. Ask. Hello. Hanji, we are getting you, sir. You just asked your question. Yes, sir. Bharatpur is asking a question. Hanji, Sir, actually my question was from the previous sir, Dr. DP sir. So, That sir, my question is, if we are producing a essential commodity. sir. Hello. Yes, sir. I'm getting it. Yes, sir. If we are producing an essential commodity, so is there a need of marketing? Or I think that marketing is not essential, but the reliability and quality of the product is more essential. You're absolutely right that quality and reliability is most essential in all the products. But marketing means, when I explain that it is meeting the need of society, essential thing must reach to the needy people, must known to the needy people. There are a lot of medicines which people do not know. Doctors at the remote areas do not know that these things are available. So marketing is required to propagate those things to reach to the ultimate customer. I think this is the part of supply chain management. Supply chain man, sir. To supply the commodity in the time to the right place. So we have mentioned that yes, logistics. We have mentioned that logistics is most important, that it should reach to the time. But Yeah. how does we know? How do we know where my customer is? How do we know where the my customer needs? And then it comes the supply chain management or logistic part to reach it, make it available there. But a propagation in reaching to the knowledge, our knowledge that the customer is there and the customer is in need of it, and what other things they need, all these things put together, we identify the needs, we identify the customers and reach to him. Then only the logistics will be able to help us, or supply chain will be able to help us. Sir, my actually, can I say my view on it? Most welcome, sir. Sir, actually, I think that if commodity is needed, then only it can be produced or generated, developed, or service. If it is not needed, it is not worthy to develop, worthy to produce the service. Oh, I fully agree with you, sir. But we have to see whatever we are producing. There are two things. One is that what somebody needs we produce. If you are producing something which is not required, that will go waste. That not many people will take it for all the times to come. Very essential element of the. Sir, I would like to add upon here. I visited. आप सब भी गए होंगे वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी श्राइन में गया. तो अगर हम अपना विलेजेस का पेट हम सर्व्स करते हैं अपने गेस्ट को घर में, तो हम करते थे पंजाब में हम करते थे लस्सी एंड नींबू पानी. एंड नाउ सी इवन द कोका कोला
or other things are available. Lays is available at Vaishno Devi, Mata Vaishno Devi shrine also. So it is because of marketing only. अगर हम हमारे फैमिली नीड्स की बात करें तो हम हमारे घर में अगर देखें तो हमारे जो घर में मदर्स हैं जहाँ और सर्व करते हैं वो उनकी प्रेफरेंस होती है कि फटाफट हम कोल्ड ड्रिंक खोलें और सर्व कर दें. मीन्स व्हाई वी हैव मेड दोस थिंग्स आउट. इट इज ओनली बिकॉज कि जो ये कोल्ड ड्रिंक कंपनीज हैं इनका 70% अप्रोक्सीमेट ऑफ देयर बजट इज ऑन मार्केटिंग अलोन. But the cold drink is not a essential commodity for a people, for a person. हाँ जी. And बट फिर भी वो अपने आप को पोजीशन करते हैं. यहाँ पे आप एक मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा एक माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल है. व्हाट दे डिड, जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है उन्होंने पढ़ा होगा, आप भी सर नेट से सर्च करना माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस. तो वो कहता है कंपटीशन की बात होता है कि एक तरफ होता है आपका थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, और एक फोर्स होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. तो वो क्या करते हैं, जब मान लो कि एक कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इंडिया में आ रही है, तो वो सबसे पहले क्या करती है कि जो लोकल ब्रांड्स होते हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक हम देसी बनाते थे, जो बंटे वाली बोतल आती थी जहां आपको एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स 5 रुपए में हम बनाते थे या 10 रुपए में बनाते थे, सबसे पहले वो उनको कैप्चर करते हैं कि यू बिकम आवर बॉटलर्स. सेकेंड, उससे क्या हुआ कि बार्गेनिंग पावर ऑफ उन्होंने सप्लायर खत्म कर दी, अपनी चेन में सप्लाई चेन का बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एक हिस्सा बना लिया. देन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, अगर मैंने कहीं से नींबू पानी पीना है तो मैं भी नेगोशिएट करूंगा कि तुम दिल्ली में 12 रुपए 15 रुपए क्यों लगा रहे हो, 10 रुपए 8 रुपए क्यों नहीं लगा रहे. बट जब बात आती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल की, डू वी नेगोशिएट? नहीं, क्योंकि दुकान वाला कहता है कि इसमें मार्जिन ही सर 1 रुपए का है. दे आस्क फॉर 10 रुपीज 12 रुपीज, वी पे इट. ठीक, इससे उन्होंने बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को कंट्रोल किया. देन आया थ्रेट्स ऑफ आपका सब्स्टिट्यूट. तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट की बात करता हूँ. न्यू एंट्रेंट तो उन्होंने खत्म ही कर दिया. अब थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करता हूँ. तो हम इंडियंस में ये हो सकता है कि मेरे जैसे शोर मचाएंगे कि नहीं कोल्ड ड्रिंक ये हेल्थ के लिए खराब है, ठीक नहीं है, आप ये ना करो. तो व्हाट दे आर डूइंग, सब्स्टिट्यूट क्या होगा, नींबू पानी, लस्सी, और लस्सी भी छोड़ो आपका होगा जूसेस और सिंपल वाटर. तो उनको पता है कि इंडिया का जो वाटर है इट इज नॉट पोर्टेबल, ड्रिंकिंग लायक नहीं है. तो व्हाट दे हैव कम अप विद एक्वाफिना, बिस्लेरी. एंड एक्वाफिना इज, अगर आप उसको पढ़ो, इट इज अ ब्रांड ऑफ कोका कोला. And that is my question, why a water is for 20 rupees only or 15 rupees only, why not 7 rupees, why not 8 rupees. जैसे अगर आपने 10 रुपए की हमारी कोका कोला नहीं पीनी, 12 रुपए की, आप कोई नहीं 20 रुपए का पानी पियो. They are getting double money from it. That is the power of marketing, communication or a brand. अनदर एग्जाम्पल मैं लूंगा सर, ऐसा मैंने सोचा है, अभी उस चीज पे मैंने अभी वर्कआउट नहीं किया, मैं यहाँ पे हिंट अपॉन कर रहा हूँ. तो उसमें मैं सोच रहा हूँ एक पेपर लिखूं कि जैसे हम लैपटॉप्स है, हम जो लैपटॉप्स की बात करते हैं, तो लैपटॉप हमारा एक बेसिक लैपटॉप देखूं तो 22,000 23,000 इससे शुरू होता है. 11-12 में लैपटॉप्स आ जाते हैं विदाउट डीवीडी राइटर एंड एनीथिंग. बट ऐसा आप अपने लेवल पे सोचो, मैंने एक्सप्लोर किया है, एक ऐसा सिस्टम भी पॉसिबल है कि आप 8,000 में एक लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन चला सकते हो और 10,000 में डेस्कटॉप और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप में. इट इज देयर, बट वो क्यों है, क्योंकि वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं है, उसने किसी को ऑब्जर्व करके सोचा ही नहीं है. ठीक, इट इज देयर. सो इट इज, अगर मैंने क्या कंसीव किया कि व्हाई नॉट आई पुट ऑल दोस थिंग्स एंड राइट अ वन पेपर एंड आफ्टर गेटिंग अ कॉपीराइट ऑफ इट और पब्लिशिंग इट समवेयर, देन आई विल प्रमोट इट. एंड उसमें सारी चीजों की जो सेल्स भी बढ़ेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा. बट ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, टिपिकल एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली फेस किया, वो यहाँ मैं मीडिया के सामने आईसीटी में नहीं लेना चाहता. कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिलायबल भी है, आपका सारे पैरामीटर्स को मीट भी कर रहा है, बट येट द कस्टमर इज नॉट अवेयर ऑफ इट. एंड उसको अवेयरनेस नहीं है. वो क्या है, आपका कम पैसे पे आप अच्छी चीज दे रहे हो, बट वो किसी और को ज्यादा पैसे देके घटिया चीज ले रहा है. हैड इट मीन, उसको ये अवेयरनेस है कि इस अमाउंट में या इससे कम अमाउंट में मेरे को इससे बढ़िया चीज मिलेगी, तो वो ही विल कम टू यू ओनली. एंड ये एग्जांपल मैंने, हाँ जी सर, सॉरी, हाँ जी आप बोलें. एक्सेप्ट कर रहा है सर, यही मेरा पॉइंट था एक्चुअली, कि अगर चीज बढ़िया है तो इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस तो बढ़ानी ही चाहिए. हाँ ये मार्केटिंग का गोल हो सकता है, वो तो अच्छा है.
अगर किसी चीज की जरूरत किसी को नहीं है तब भी उसे उसको इम्पोज करना है, उसको जाना है, उसे पिलाना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक। हाँ, उसको हम ना एक सर उसको उसको ग्रीन वॉशिंग टर्म दिया गया है। हम उसको व्हाइट वॉशिंग या ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं कि जो हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, बट वो उनको फिर भी ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ये आपके लिए अच्छे हैं। तो उसके लिए दो टर्म्स होती हैं। मैं अभी नहीं तो कल लेगा उसको, हाँ तो जब अवेयरनेस आ जाएगी तब लेगा। हाँ, तो उन्हें मार्केटिंग जरूरी उसमें क्या है कि वो सर, वो भी एक टर्म होती है सर, जो सर बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एथिकल मार्केटिंग पे, कि उसका क्या आपके सही है कि गलत है। तो उनका कंसेप्ट अलग है सर। उसका भी उस पे भी होता है कि जब मैं ग्रीन आईटी पे सेशन लेता हूँ उसमें ये एक टर्म आती है, मैंने लिटरेचर रिव्यू किया था, व्हाइट वॉशिंग या ग्रीन वॉशिंग कहते हैं इसको, कि आप कर तो आप कुछ और रहे हो, बट आप कन्वे करते हो कि गुडी गुडी कि सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं। तो वो आपका पॉइंट सर बिल्कुल वैलिड है। बट हाँ, एज फार एज अगर आपकी चीज अच्छी है, रिलायबल है, बट वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, तो क्या होगा कि वो अदर पर्सन, मतलब कि ही विल टेक इट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बेस्ट विशेस, वी विल मीट एट 1:30। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, वन सेकंड। अब ये यूट्यूब पे आ गया, यूट्यूब पे है ऑडियो फ्रॉम इंडिया और वर्ल्ड पे। हाँ, बट ये अभी तो बाय नेम कम कर रहे हैं पूरा डे, पूरी पहले कंपनी बाय नेम कर उनके सामने ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने आप देखो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उन्हीं का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है। जो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। ये वहाँ पे इसलिए आपका चंडीगढ़ से बाहर आप निकलेंगे तो मोहाली
हाँ मैं ऊपर आ रहा हूँ। हाँ मैं बैठो ना, जी सब सबको ले आना ऊपर एक बार। हाँ सबको एक बार सबको ऊपर ले आना, सबको ऊपर ले आना। हमें एक फॉर्मेट एक नोटेड बनाना है। ठीक है लिखो सर। लास्ट सेशन में ना क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, एंड में पूछना पानी क्वेश्चन। चलो कोई तो थोड़ा आप यहाँ पे बैठ जाता हूँ। हाँ और आपको पता है मैं कैसे ऑन होता है? नहीं वो अनम्यूट करना पड़ता है, अनम्यूट करना पड़ता है, उसको अनम्यूट करके बोल दो बस सिंपल। ठीक है जैसे ही अभी म्यूट आएगा अनम्यूट अभी क्या म्यूट करना पड़ेगा।
यूपीएस के ऊपर रहते हैं? यूपीएस के ऊपर ये पावर सप्लाई है? हाँ जी। अच्छा, तो ये यूपीएस से हमेशा ही रहेगा पावर सप्लाई या फिर? नहीं नहीं, ये जस्ट बैकअप के लिए। अच्छा, तो ये आवाज आती रहेगी? हाँ जी। You don't mind if I sit here? नहीं नहीं, you sit over here. नहीं नहीं, Can you want to take calls? You know? No, I thought I'd better take pictures. हाँ, नहीं तो दोबारा चेंज कर स्टार्टिंग में। At least to begin with, you can. Yeah, it's no problem. Where do I put this printer? ਹਰਜੋਤ ਸਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। क्योंकि मैंने कल 3 घंटे लगा के प्रेजेंटेशन बनाए। बहुत बढ़िया। So we couldn't be saved. अच्छा, So this I made till the morning. फिर मेरा ऑडियंस सेम होया ना तो फिर प्रॉब्लम हो नहीं मैं दिखाना आर्टिकल। अच्छा, व्हाट्सएप पे होएगा। मैं आर्टिकल मैं सर्च ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ मैं उन्हें व्हाट्सएप कर देना। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਾਫ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। he is a dynamic person. He is a good guy. I'll thank him also. Actually मैं ना 40 न्यूज़पेपर्स रिस्पोंडेंट्स ਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਆਏ? ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਸ਼ਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਆਈ ਸੈਂਡ ਟੂ ਆਲ, ਮੇ ਬੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲਮਾਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸੈਡ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਅਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਓਲਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੰਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੰਗ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੇਲਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਈ ਫੀਅਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਚਲ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਤਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੋਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲ ਸੀ। 2-3 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਹੈ ਪਿੰਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜੁਗਾੜ ਸਮਝੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਸਾਰਾ। ਹਰਜੋਤ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ ਪੀਪੀਟੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ हाँ वो ठीक है YouTube वाले विल डू। मतलब अलग तो नहीं है? नहीं वो एडिटिंग वाली फिर आप करा लवांगे क्योंकि भाजी लोकल ही ने इन्होंने दोबारा भी आप मिलते रहना। सक्सेसफुल आप टाइटल की दी इंटरेक्शन विद द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन्होंने दिता है ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं चाहना कि कोई ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ टाइटल चैलेंजेस ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਦਾ टाइटल ਲਿਖੋ। challenges in social innovation and entrepreneurship. ठीक है, social and innovative challenges in innovation and social entrepreneurship. challenges in social innovation and entrepreneurship. Okay, social innovation and entrepreneurship. अच्छा, social innovation is the collective, correct? ठीक है। Yeah, second number new thing.
शो नहीं करना बस बस थैंक यू हाँ जी हाँ जी ठीक सेंटर कनेक्ट हो गए हाँ आ गया ओके okay very good afternoon to all the participants over here at this center and to the participants at the Noodle Center Government Engineering College Bharatpur today I hope you are with us. Yes, sir. Okay, thank you. And today we have Raman sir with us. He is director Aerosphere Mohali, and he has a HR background in different industries in the northern region, and also he is BTech Electronics pass out from Gyani Jal Singh College, Bathinda. And we have sir also. We have Shri Tej Singh Man. Hello, good afternoon, everyone. I'm Tej Singh Man. I happen to be here because of Mr. Sidhu. He's a very dear friend of mine, and I also come, have an HR background. So happen to work with a few companies, work with Reliance and in CPO industry. So today I'm going to be a silent observer, basically, and see what happens here. Next time he will be a speaker also. Surely, why not? Thank you so much. All the best. Thank you sir, thank you. And I welcome you sir on behalf of NIEEE Chandigarh and all the participants to this platform over here, and I feel all the participants will be enriched by your experiences. Thank you, it's all yours. Welcome sir. हाय गुड आफ्टरनून तो माइक की तो जरूरत लग नहीं रही ना चलो लगाया तो यूज करेंगे ऑल ऑफ यू हैड योर लंच You know, it's very, and don't call me sir. आप लोग सर हैं, मैं तो. You know, Amar said that, it'll be enriching session and all. I wish my wife was here today. Because, when we got married, I told my wife, I said, see, I have a habit of talking too much. So the day you get bored, you can tell me and you can just walk out. जिस दिन मन भर जाएगा उस दिन आप जा सकते हो बट आज तक वो बोर नहीं हुई so that makes me feel that maybe I can connect with the audience, maybe I talk about certain practical aspects of life, so I'll make an attempt to do justice to my invitation here. And all of you are teachers, right? All of you are professors, assistant professors and all, but I see you are young guys, huh? So I think I'll be able to relate well with you. My name is Ramandeep Sidhu and I'm accidentally an engineer. Accidentally? Accidentally? Oh. So are we expecting more people to come? Okay. तो थोड़ा हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले थोड़ा लाइट रखते हैं. When other people are here, then we'll carry on with the presentation, right? So, any guesses why I say that accidentally I am an engineer? Any guesses? Maybe you are not interested Hmm. due to your father. Yeah. Yeah. बच्चा जन्म लिया इंजीनियर बनेगा ये तो. Family tradition can be a family tradition also. Absolutely. Forefathers and fathers will be at this profession. You are forced to pursue this career. You're very right. You know what happened? This serious thing happened with me, and I've started taking it very casually now, because अब तो उम्र बीत गई ना, अब तो जो करना था लाइफ में कर लिया, अब ऐसा कुछ नया चमत्कार होने नहीं वाला लाइफ में. So what happened was that my father was an army officer, and आप में से कोई आर्मी बैकग्राउंड से अगर हो तो, so you can realize army officers are very headstrong, and they whatever they put their mind to, they achieve it. So बहुत जल्दी मेरे फादर ने ये डिसाइड किया कि उनका बेटा जो है, जो कि मैं, सर आपको देख के तो ठंड लग रही है मुझे भी. ओह, सो मेरे फादर ने ये बहुत जल्दी डिसाइड किया कि उनका बेटा यानी कि मैं या तो आर्मी ऑफिसर बनेंगे या फिर आईएएस ऑफिसर बनेंगे.
तो तो वो सुनते मुझे पहली बारी बड़ी हंसी आ गई थी, बट मैंने हंसी को कंट्रोल किया बिकॉज माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट. सो मैंने कहा शो आई गिव इट अ शॉट, एंड ऐसे ही बोल दिया कैजुअली. अब वो मैंने तो कैजुअली बोल दिया, बट मेरे फादर ने बड़ा सीरियसली लिया इस चीज को. सो मुझे 10th में ही स्विमिंग में डाल दिया, बॉक्सिंग में डाल दिया. सुबह उठ के अपने एक्सरसाइज शुरू होती थी, कपड़े प्रेस होने चाहिए, जूतों के लेसेस बंधे होने चाहिए, मैचिंग सॉक्स होनी चाहिए, उस तरह के लाइफस्टाइल में रहा मैं. तो क्या हुआ कि आर्मी का एग्जाम दिया, आर्मी भी क्लियर हो गई, एंड मेरा मन बहुत था कि आपको शायद आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पता होगा. सो आई वाज द फर्स्ट सिलेक्शन इन एआईटी. 95 में पहला बैच सिलेक्ट हुआ था. आई वाज सेकंड ऑल ओवर इंडिया. सो काबिल तो थे ही. तो वहां जाने का जब मन किया तो मेरे फादर को शायद कोई सपना आया होगा या किसी से मुलाकात हुई होगी अपने फ्रेंड से. तो ही सेज कि बेटा आर्मी में तो मैंने भी सर्व किया है, एंड आर्मी ऑफिसर्स के पास ना तो पैसा होता है ना कोई रुतबा बनता है आर्मी छोड़ने के बाद. तो आई सेड हाँ ऐसा तो है. तो मेरे फादर ने मुझे कहा, ही सेज कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो मैंने फिर सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा, पेपर्स की तैयारी की, एंड कुछ हुआ भी उसमें. बट देन अगेन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि 1999 में एक सिविल सर्विसेज का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था. आप लोगों को शायद पता होगा सर. तो वो भी चैप्टर क्लोज हो गया. तो क्या हुआ कि मेरे साथ एक के बाद एक एक्सीडेंट हुए. करना मैं क्या चाहता था, स्पोर्ट्स. कराया क्या गया मुझे, इंजीनियरिंग, और वो भी कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स. आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर को आप लोग बुरा मत मानना, बट मुझे लगता है कि बुरा मानोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मैकेनिकल की जॉब्स निकलती हैं, सिविल वाले ठेकेदार बन जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, बिजनेस कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी जॉब्स निकलती हैं बताओ. उनका पता भी नहीं चलता. उनका उनका पता भी नहीं चलता, है ना, उनका पता भी नहीं चलता. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, सो एवरीबडी इज एन एक्सीडेंट बीइंग हियर. आज हम अगर यहाँ पे हैं, आप देखिए, वी आर वेरी ग्लोबल सिटीजन्स, है ना. वो जमाने लग गए जब हम खुल के बात नहीं कर सकते थे. सीधा सा एक लॉजिक है दैट आवर बर्थ इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट. तो वही चीज पकड़ लिए. हमारे देश में तो बहुत ज्यादा फेमस है वो चीज कि अगर ये इसकी पैदाइशी एक्सीडेंट से हुई, तो उसके बाद इसके साथ एक के बाद एक एक्सीडेंट होना चाहिए. तो मेरे साथ बहुत एक्सीडेंट्स हुए, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी, और इस तरह के कुछ पेरेंटल प्रेशर में. सो जैसा मैं हूं, मुझे लगता है कि बिकॉज आई डील विद अ लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स, आई गो टू यूनिवर्सिटीज, आई गिव सम टॉक्स, है ना, थोड़ा बोल लेते हैं तो लोग बुला लेते हैं. तो बातों में मुझे यही पता लगा है कि 99% ऑफ पीपल हु आर डूइंग इंजीनियरिंग, पीपल दैट यू टीच, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि सब लोग इंजीनियर बनना चाहते थे. ऐसा नहीं है. एवरीबडी इज एन इंजीनियर by some or the other kind of accident. How do we change it? क्या हम इसको बदल सकते हैं? आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग के पास you are the one who has the answer. मेरे पास इसका आंसर नहीं है. मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मेरा जो 2 साल का बेटा है, मैंने ये सोचा है कि मैं उसकी लाइफ में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करूंगा. As a parent, the only gift that parents can give to their children is that they do not try and make their children carbon copies of themselves. सबसे बड़ी गलती आप बता सकते हैं पेरेंट्स इस दुनिया में क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं इज दैट दे वांट टू क्रिएट देयर चिल्ड्रन एज देयर कार्बन कॉपीज. अब नेचर के बारे में अगर आपको, आप सब इंटेलेक्चुअल हैं, आप सब जानते हैं कि नेचर जो है ना, नेचर कार्बन कॉपीज में बिलीव नहीं करती. कार्बन कॉपीज कहां जाती हैं नॉर्मली? गार्बेज. एब्सोल्युटली, सिग्नेचर नहीं चाहिए.
वैल्यू नहीं है कार्बन कॉपी की। और जरा सोचना, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, आप सोचिए प्लीज कि आपके साथ भी ऐसा शायद हुआ है। मे बी यू वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स। अब मैं आपसे, लेट्स कीप इट वेरी इंटरेक्टिव। सो एक तो 1:30 बजे का सेशन है, खाने के बाद कौन सुनता है ना? अभी अगर बिग बॉस चल रहा होता तो शायद आप देख लेते आंखें खोल के। अभी मैं बोल रहा हूं तो शायद मुझे लग रहा है 2-4 लोग तो सो जाएंगे। बट कोशिश करते हैं कि आप जागते रहें और जल्दी से इसको खत्म करेंगे, एंड वी विल हैव मोर इंटरेक्शन टुवर्ड्स द एंड। नाउ आप में से मुझे ये बताइए कि कभी आपने जिंदगी में, आप सब सर्विस बैकग्राउंड से हैं, आपके पेरेंट्स भी सर्विस बैकग्राउंड से थे, किसी के पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से हों, एग्रीकल्चर से, बिजनेस बैकग्राउंड से? एग्रीकल्चर कहते तो हैं एग्रीकल्चर बिजनेस है, बट आप लोगों को पता ही है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द वर्स्ट बिजनेसेस यू कैन डू। सो बिजनेस बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है? बिजनेसमैन आप मुझे सब बताइए, आप में से कभी किसी को कोई ख्याल है जिंदगी में कि यार मैं ना ये वाला बिजनेस ट्राई करता हूं? आप में से किसको ये ख्याल आया कि मैं ये वाला बिजनेस ट्राई करता हूं? 1 2 3 4। बुटीक? देखो ये हमारी परसेप्शंस है ना? हमारी परसेप्शंस है। नहीं, लेडीज ने कुछ नहीं किया, हमने लेडीज को फिट किया ऐसे। सो व्हाट डिड यू वांट टू डू मैम? Actually, I wanted to be journalist first of all. I wanted to be journalist, not in the business, but my father didn't allow me because of the circumstances and reasons, being a female in the society. And then forcefully, I was put into the MBA. I completed MBA. When I was about to join corporate. My father didn't allow me again. I was forced into teaching, and now accidentally. आई हैव वन कैंडिडेट नाउ। आप सर, आप क्या करना चाहते थे? सर मैंने बिजनेस ट्राई किया, सॉफ्टवेयर बिजनेस ट्राई किया सर, और कई 3 नामों से कंपनी चलाई, मेगा सॉफ्ट, क्विक केयर, अदर टेक्नोलॉजी, और थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया सर। लेकिन कभी रिसेशंस, अप डाउन्स, और जैसे कि जिसको एम्प्लॉई जिसको रखा, जैसे एक डिजाइनर एक डेवलपर को रखा, डिजाइनर कटरा चला गया, डेवलपर बैंक की तैयारी में लग गया, इस तरीके से वो सारा जो है वो बाउंड। वो शायद आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड थे, बट उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो बैंकर बने और ये बने ना। और हमारे पेरेंट्स वगैरह भी नहीं चाहते थे, जैसे हम साथ रहना चाहते थे ताकि बिल्डिंग में जैसे बाहर से काम आता है सुविधा मिले। लेट नाइट बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो एक आदमी को जागना होता है। फिर 24 आवर्स तक हम 3 से 5 लोग की टीम रखते थे, जो 24 आवर्स लगभग हम एक्टिव रहे। लेकिन एक अपने यहाँ कल्चर भी नहीं है सर कि लगातार काम करने की, 24 आवर्स भी हम काम कर सकते हैं, जब एक साथ नहीं रह पाए। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की स्पीड नहीं, कभी इंटरनेट के टावर्स गायब, कभी जब बहुत जरूरत पड़ी बिजली पुल, तो ये सब ये एरियाज क्योंकि हमेशा झेलने पड़े। फिर मैंने हार्डवेयर बिजनेस में भी ट्राई किया, जैसे कि रिफर्बिश्ड सामान मंगवाया हांगकॉन्ग से, जो यूएस डिफेंस सिस्टम के और लैपटॉप को छोड़ देती थी, स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप नहीं करते उसको, चाइना उसको वापस उनके से बस हार्ड डिस्क निकाल के दूसरी हार्ड डिस्क लगा देते हैं। तो फिर वो सारा सामान मंगवाया, लेकिन मुनाफा नहीं हुआ सर कभी भी। एक जो होता है कि चलते रहना चाहिए। तो आपने बिजनेस ट्राई किया, तो आपने फिर इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आप टीचिंग लाइन में कैसे आ गए? सर टीचिंग में काफी टाइम लेता है, टीचिंग से जो है ना घर चलता है, और वो बिजनेस है उसका पैसा वहां से आया वहीं गया, या वो पता नहीं चलता कि क्या मुनाफा आ रहा है। जैसे भी 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जैसे 3 साल काम भी किया, अपना कुछ जेब में नहीं आया, 2.5-3 लाख का नुकसान भी हो गया, तो ये 10 लाख से ऊपर का नुकसान है, जो कि डेटा में है, डेटा है, आंकड़े हैं, 10 लाख का नुकसान है। एक्चुअल में तो घर चल ही रहा है और दिखाई रहा हूँ, कोई समस्या नहीं। तो ये उधर से आउटपुट जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आता। ओके, और कौन आप में से, आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप क्या करना चाहते थे? जैसे मणिपाल बैंकिंग एकेडमी है, वो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट बैंक वन ICICI, they just conduct the examination and directly they send their recruits POs for training in Manipal banking. जो हम जो मास्टर जी हैं
क्वालिटी है, पढ़ाने के अलावा उनको कुछ नहीं आता, वो तो सच है। Apart from teaching, we spend more than 10 years. Switching into a different domain is very difficult. We'll become an expert in our own subjects. What I wanted to do is like mental banking correctly. They take the trainees from other banks. They don't have an infrastructure to train these trainees. So from day one after the completion of training in the Manipal Academy, these POs are ready for doing the job. They don't require any other training. So for 1 year they get trained in Manipal. I want to build a team of the same kind where a company need not to spend time on technical training of their employees. Outsourcing of their training of their manpower. Okay. Right. So आपने ये किया या आप सोच रहे हैं या करेंगे? करना है अभी? शादीशुदा तो नहीं है आप? Sorry to hear that. देखिए मेरे कुछ व्यूज ऐसे हैं जो हो सकता है कि आप में से किसी को लगे कि ये तो व्यू बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है जैसा मैं सोचता हूँ और जैसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, आपको लगेगा कि यार ये तो बात, तो आप मुझसे ना अलग से 1-to-1 कर लेना, नहीं तो क्या होता है कि एक आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। तो शादी को इसलिए बोल सकते हो कि हम लोग शादीशुदा हैं, तो एक्सपीरियंस है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि बाहर तो हम लोग बोलते हैं और लोग हमें थोड़ा रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं। जॉब्स हमने ऐसी की हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, अच्छी डिसेंट पोजीशंस पे रहे, तो लोग आने से भी कतराते थे कि यार इनके पास जाएं बात करें। लेकिन घर में हम लोग ना अपने टीवी का रिमोट भी नहीं चेंज कर सकते। वी आर लाइक मनमोहन सिंह ऑफ हाउस, साइलेंट। तो दुनिया तो बाद में बदलेंगे, पहले चैनल बदलने कंटिन्यू रखो यार, है ना। और शादी हो जाएगी तो ये चीज नहीं हो पाएगी। शादीशुदा आदमी के लिए ये दुनिया बदलना ना बहुत डबली मुश्किल हो जाता है। सो और किसने, आपने इसे किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ जी। तो सक्सेस रेट इतना नहीं था, तो आई जस्ट ग्रेजुएटेड, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग, एज आई टोल्ड यू, आई एम जस्ट इनटू दिस प्रोफेशन 6 months. So I want to establish my firm, I want to establish my business, I want to work in the field. What? Due to some constraints, financial constraints, basic is that कि बाहर काम करोगे 2-3 साल में तुम पैसा नहीं कमा पाए तो 2-3 साल बाद तुम हरास हो जाओगे, फिर सेक्टर में आओगे, पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं। ये डर सभी से, फियर है ना, फियर है, सबका फियर, सभी को है फियर। आपको भी मैम फियर होगा आज के डेट में कि अपनी टीचिंग लाइन छोड़ के अगर कुछ करूंगी तो नहीं है फियर। गुड, देन आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट। You will never get a chance, you will create that chance. We are doing something else, irrespective of teaching, something different. Good. You see, this is something about fear. Fear की definition पता है आपको क्या होती है? बड़ी simple सी है, false evidence appearing real or something like that ना, सुना होगा आपने। Fear of losing, वो अलग अलग तरह के fears होते हैं। हाँ, absolutely. Basically, sir, it's not personal fear. It's fear which is created by others. I was not fearful कि I was in 3rd year and I was working since 3rd year in architecture profession. I have designed many houses. I have designed a school. When I graduated, I designed a school of 1 lakh square feet area in Punjab. अभी आप क्या पढ़ाते हैं? अभी आप क्या पढ़ाते हैं? अभी मैं आर्किटेक्चर ही पढ़ा रहा हूँ। आर्किटेक्चर। So I designed. I was not having any fear. People didn't pay. I said okay, कोई चक्कर नहीं, मैंने काम करना कर दिया. But वो आउटकम नहीं आ रही, तो इसीलिए सब कह रहे हैं कि नो यू आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो इनटू दिस। इवन आई एम रेडी टू गेट वर्क फ्री, आई एम रेडी टू वर्क फॉर फ्री, बट फ्री से घर नहीं चलता, ये प्रॉब्लम है, अपने खर्चे नहीं निकलते। आप मैरिड हो? नो सर, मतलब अपना खर्चा भी नहीं निकलता, फिर बंदे को एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन होने लग पड़ती है कि घर से मांगने बड़े मुश्किल लगते हैं सर, 3rd ईयर से पैसे नहीं मांगे। सो फियर की जो डेफिनेशन मैंने एक सुनी रिसेंटली, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। दिस इज फियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द थॉट्स दैट योर ओन माइंड क्रिएट्स, इट इज अनरियल। मैं दोबारा से बोलता हूं कि फियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स दैट योर माइंड क्रिएट्स, दे आर नॉट रियल। तो आपका माइंड जो थॉट्स क्रिएट करता है ना, आपको उससे फियर होता है। तो आप ये मत कहो कि किसी ने आपको डर दिया, आपके माइंड ने वो फीलिंग्स क्रिएट की
कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये हुआ. मे बी राइट टाइम पे आपने रिवोल्ट नहीं किया, मे बी राइट टाइम पे आपने वो रिस्क नहीं लिया. बट आई एम सेइंग, यू सी, in heart of your heart, people want to do their own businesses, and the simple reason for that is कि you get ownership of your life. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपनी लाइफ की ओनरशिप मिलती है, राइट? सो ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा था बिकॉज यू नो देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि मेंटालिटी क्या है क्राउड की. एंड जैसे कि देश में सबकी मेंटालिटी है, एवरीबडी वांट्स a steady source of income. People don't want to take risk. People want to play it safe. So when you want to play it safe, तो वो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में आप चले जाते हो. आप में से किसी ने ये बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? ओनली इफ यू हैव रेड इट, बिकॉज आई विल आस्क यू समथिंग. आपने पूरी पढ़ी है वो कि सुना है उसके बारे में? पढ़ी है पूरी आपने? You heard about it? You see, anything to do with entrepreneurship or business, this book is the encyclopedia. अब मैं आपका ना ये ध्यान इस प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाऊंगा. ये वाली जो डिस्कशन है इसको हम टुवर्ड्स द एंड कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू कनेक्ट द डॉट्स इन द एंड. ओके, आई डोंट वांट टू बोर यू, सो आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन ऑन माय ओन. मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स बनाने के कोई इतने अच्छे नहीं है, तो ये पिक्चर्स देख के आप मेरा अंदाजा मत लगाना, because I never made those presentations. My colleagues used to make them and I used to make those presentations. So I want to start with an example. What is an entrepreneur? Businessman को हम कहते हैं entrepreneur, है ना? So it's a French word which says somebody who wants to do extra to make more money in his life is an entrepreneur. So एक बार क्या हुआ, एक शहर में ना एक स्टोर था, राइट? सो दिस वाज द स्टोर. इसके पास सारे लोकल जितने लोग थे सारे इसके पास से राशन लेते थे. दिस वाज द लोकल मेट्रो ऑफ दैट सिटी. धीरे धीरे क्या हुआ कि आई यूज दिस टू रोल द स्लाइड. ओके, धीरे धीरे क्या हुआ, दो लोग मेरे जैसे आ गए जिन्होंने कहा कि इसका बिजनेस चल रहा है, फुटफॉल हो रही है, इसके लेफ्ट साइड में स्टोर खोल दो. तो एक मेरे जैसे ने इसके लेफ्ट साइड में स्टोर खोल दिया, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया बिग डिस्काउंट्स. सेम स्टोर, सेम फर्नीचर, सेम आइटम्स, और वहां पे लिख दिया बिग डिस्काउंट. फिर एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा यार ये साइड वाले ने जो चालाकी की है मैं भी ये करता हूं, मैं लिख देता हूं बेस्ट क्वालिटी. अब ये जो बंदा था ये घबरा गया बेचारा. सारी फुटफॉल आधी उधर चली गई, आधी इधर चली गई. जो क्वालिटी कॉन्शियस थे वो इधर जाने लग गए, और जो डिस्काउंट को लेके, जो हम लोग डिस्काउंट को लेके ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हम मेट्रो में जाइए कभी सैटरडे संडे को, आपका सांस भी वहां पे बंद हो सकता है. मेट्रो, आप लोग चंडीगढ़ से लोकल हैं यहाँ पे? यू गाइस आर नॉट, आप चंडीगढ़ से हैं, आपको पता होगा मेट्रो, है ना? मेट्रो सबको पता है क्योंकि डिस्काउंट मिलता है. सो इधर शॉप आ गई बिग डिस्काउंट्स वाली, इधर शॉप आ गई बेस्ट क्वालिटी वाली. अब आप गेस कर सकते हैं इस बंदे ने क्या किया होगा? बंद कर दिया. एनी गेसेस? सोचिए. जो इसका जवाब दे देगा ना, मुझे लगता है कि उसे नौकरी छोड़ के फटाफट बिजनेस करना चाहिए. आपको नहीं करना चाहिए सर, आपने कहा बंद कर दे. बट आप जानते हैं हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा हो ना तो भाई भाई की नहीं सुनता. यहाँ पे सर रेट बढ़ा दिए. गुड आफ्टरनून सर. अच्छा, वन क्वेरी फ्रॉम भरतपुर. Is he trying to talk to me? Yeah. Hi. हेलो Yeah. Please ask. सर, उसने उस सेंटेंस को पूरा किया होगा और वो दुकान एक देखने लगी होगी उस Pardon me? दुकानदार ने, बीच वाले दुकानदार ने उस सेंटेंस को पूरा किया होगा. यानी कि एक तरफ लिखा हुआ है बिग डिस्काउंट, एक तरफ लिखा हुआ है बेस्ट क्वालिटी, बीच में उसने ऐसा वर्ड यूज किया होगा कि उसका सेंटेंस एक दुकान लगेगा, पूरा सारा कस्टमर उसकी दुकान पर आ जाएगा. वेरी गुड. तो उसने क्या किया
उसने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ. Congratulations. You know, I think you should do business. Thank you, sir. So this is what the guy did. उसने कहा इन्होंने मेरी कॉपी की है, बिल्कुल मेरे जैसा घर बना दिया है, मेरे जैसी शॉप बना दी, सेम प्रोडक्ट रख ली है. राइट साइड वाले ने भी यही किया, लेफ्ट साइड वाले ने भी यही किया. बीच वाले ने क्या किया, उस पर लिख दिया मेन एंट्रेंस. तो अब सारे लोग वहां से जाने लग गए. So what I'm trying to say is that, you know, entrepreneurs, they never give up. They never give up. उसका simple reason ये है कि they have decided that they don't want to work for somebody, they want to work for their own self. And मुझे 14 साल लगे ये रियलाइज करने में. 14 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि आई वॉज फोर्स्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर. एंड क्योंकि शुरू से मेरा मन भी इस तरह का था और एक ऐसा झटका भी मुझे लगा, तो वो कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि यू नो, बेबी मैम यू आर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि कुछ और करने को हो ही ना. And then you will, you know, give it your heart. So the same thing happened with me. So that is what I think is very unique about my story. So what is the challenge? You know, everybody wants to be a businessman. Everybody wants to be financially independent early on in life. So the challenge is, now again, this is not to offend anything or anyone. This is the reality. You know, we can offline take this discussion for hours and hours, but I think most of you agree with me, so there is no discussion. Our education system and social values are outdated, and the same is being taught by parents, number one, parents, then the teachers and the society. आप लोगों में से किसको पता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में? You know who was George Bernard Shaw? Yes, yes. And I will tell you a very interesting fact towards the end about George Bernard Shaw. He was autistic. He was autistic. आप समझते हैं autistic क्या होता है? Slow. So George Bernard Shaw said something about the education and the way we measure people. So this is what he said. He said, everybody is a genius. So right now, everybody who's watching it and sitting here is a genius. But if you judge a fish by its capacity to climb a tree, the fish will live all its life thinking it's stupid. मैं इसको ट्रांसलेट भी करता हूँ ताकि मेरा मैसेज सबको क्लियर जाए कि हर एक आदमी में कुछ खूबियां होती हैं. एवरीबडी इज अ जीनियस. बट अगर आप एक मछली को इस चीज पे जज करोगे कि वो पेड़ कितनी जल्दी चढ़ती है, तो सारी उम्र मछली पेड़ तो चढ़ नहीं पाएगी. वो यही सोचती रहेगी कि मैं शायद मूर्ख हूं. हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का नहीं है. मुझे तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई पढ़ते हुए. मैंने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स की. मुझे हर सेमेस्टर में ये फीलिंग आती थी कि मुझे कुछ और करना है और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं. पापा का सपना था वो. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? अब अगर हम अपनी सोसाइटी को एज ए सोसाइटी, इफ यू वांट टू चेंज, वेयर इज द सोल्यूशन? एनी सोल्यूशन दैट कम्स टू योर माइंड? इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम और अपनी सोसाइटी, सोशल वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, राइट? ये तो इसका आंसर है ही है. बट कभी आपने सोचा है कि इसकी रूट कॉज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? मेरा ये मानना है, मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है कि जितने यूथ से मैं इंटरेक्ट करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, राइट? सैलरी मिलती है तो जोड़ लेते हैं, लॉटरी लगती है तो इन्वेस्ट कर देते हैं. माँ बाप ने क्या सिखाया है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, गेट गुड ग्रेड्स, गेट ए गुड जॉब. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, that's what I'm repeating, which is why I highly recommend that you should read this book. और अगर अच्छी जॉब होगी तो लड़की भी अच्छी मिलेगी, लड़के तो अच्छे मिल ही जाएंगे.
और होता क्या है कि एक आम आदमी की जिंदगी जो होती है ना, आप लोग जिम कभी गए होंगे जिंदगी में, एक बार कभी ना कभी तो जिम में गए होंगे आप, आपने ट्रेडमिल देखी है? वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड वर्किंग इन अ जॉब, without demeaning any job, I'm saying that it's like running on a treadmill. आप भागते हैं, आपको बहुत मजा आता है, आपको स्वेट होता है, यू फील कि आपके कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन रनिंग ऑन ग्राउंड एंड रनिंग ऑन ट्रेडमिल इज दैट ट्रेडमिल पे यू आर जस्ट देयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. एब्सोल्युटली. एंड अगर आप कभी उस ट्रेडमिल से गिर जाओ तो जो आपका बॉस होता है वो क्या करता है आपको पता है? वो कहता है अपने एचआर वाले, जैसे मैं एचआर में था ना, तो उसको बुलाता है कि सुनो इस बंदे को रिप्लेस करो. So you are easily dispensable. Now, my recommendation is, this is my personal belief. I could be completely wrong, but I think students go after their 5th standard, they should be offered experiential learning. Education system में कुछ syllabus में हमें ऐसी चीजें inject करनी चाहिए. First of all, we should start introducing financial intelligence. And the most recommended book for that is Rich Dad Poor Dad. Second, I think our youth, our young generation should be talked about family values. Our family values are very misplaced, by the way. ये हम सीरियल जो देखते हैं ना, वो रियलिटी नहीं है हमारी. बस एक बात बताइए, आपने आज तक कभी किसी भी सीरियल में किसी फीमेल एक्ट्रेस को हंसते हुए देखा है? नहीं ना. बट ऐसा तो नहीं है. हमारे यहाँ पे तो यूथ है जो फीमेल्स हैं, दे आर लाइवली, दे आर चेयरफुल, दे हैव फन. They should be taught about social responsibility. I can bet on it. आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप लोग टीचर्स हैं, आप इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए किसी दिन सरप्राइज क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई कैन बेट नन ऑफ देम इज. तो जब उनको नहीं पता है तो वो बड़े होंगे, जब आपकी उम्र में मेरी उम्र में आएंगे तो वो क्या करेंगे? This is the principal difference between Western society and our society. Our society is not evolved that much. तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी. As a teacher, I think you should take this up. Sex education is very important. 90% लोग तो शादी इसलिए करते हैं. Now, this is very interesting part of my presentation. And this is again my belief. I could be wrong, but I'm going to share it with you. अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो towards the end you can write it down and you can question me, right? I firmly believe that हमारी सोसाइटी इस तरह से क्यों है, उसका एक ही कारण है कि हम लोग थियोरेटिकली बड़े रिच हैं. थियोरेटिकली हम लोग, इंडियन कम्युनिटी इज वेरी रिच. हमारे पास वेद हैं, हमारे पास रामायण है, महाभारत है, हमारे पास कल्चर है, चाणक्य है, इतना बड़ा हेरिटेज है हमारे पास. सोने की चिड़िया थी एक टाइम पे देश. तो थियोरेटिकली वी आर वेरी रिच, बट प्रैक्टिकली वी आर वेरी वेरी पुअर. मैं आपको प्रूव करता हूं कैसे हो. अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो मैं आपका जो वो डाउट है उसे क्लियर करता हूं. There are 4-5 theories that I have always challenged. तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि वो क्या theories हैं. The first theory that I think is highly misunderstood is that marriages are supposed to last forever. हमें यही बताया जाता है हमारे कल्चर में कि बेटा शादी एक बार ही होनी चाहिए. पहले तो 10 साल पहले तो ये बताया जाता था कि बेटा शादी होती एक बार है. अब क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि भैया डिवोर्स भी हो सकता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा होनी एक ही बार चाहिए शादी, है ना. सो दिस इज द थ्योरी कि एक बार शादी हुई, एक बार अंगूठी पहन ली, टिल डेथ डू यू पार्ट. बट द रियलिटी इज दैट इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोर्स रेट्स. मैक्सिमम. वो तो पता नहीं कौन सा फिगर होगा, आप देखो. और जो बाकी 70% है ना, तो बहुत खुश नहीं है लोग.
आप में से कितने लोग मैरिड हैं? बस ठीक है। मेरे एक दोस्त ने ना, हमारा कॉमन फ्रेंड है तेज एंड आई, वी आर बेस्ट बडीज, एंड हमारा एक फ्रेंड है, इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उसने एक बार हमें बुलाया और हमें बताया नहीं कि पार्टी किस चीज की है। हम लोग गए गए हमें पता था कि मैट्रिमोनी डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ बीवी से बनती नहीं है। तो इतने बड़े होटल में पार्टी हुई एंड यू नो वी, बता तो सही यार क्या हुआ है। आई गॉट डिवोर्स्ड। जैसे लोग पहले शादियां सेलिब्रेट करते थे, अब डिवोर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो द रियलिटी इज दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज फेलिंग। That day, didn't you see कि हमारे घर पे डाइवोर्स की मिठाई भी आई थी? एक बर्थडे का divorce। इनके घर गए, इनका कोई स्टूडेंट है वो मिठाई लेके आया। सो मैंने कहा शायद उसकी जॉब लगवाई होगी। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं कहा कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो? दिस इज ज्वाइन नहीं, ब्रेक किया है सर अपनी बीवी के साथ। लोहड़ी की मिठाई लेके आया इतनी सारी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दीज वैल्यूज आर चेंजिंग। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, बट दिस इज अगेन यू नो, हम लोग थ्योरी में नहीं रहना चाहते, हम लोग रियलिटी की बात करना चाहते हैं। पिछले कितने सालों से सिलेबस चेंज नहीं हुए हैं? मेरे को लगता है चेंज ही नहीं हुआ यार। वो इतना माइनर पैच वर्क इधर से उधर, उसका है ना, है ना। No, we are not. We take suggestions from the corporates and industrialists or technicians, good technicians. We don't copy this. मैं वैसे आपको बताता हूँ कि आई एम ऑन द कमिटी टू डिसाइड सिलेबस फॉर एरोस्पेस कॉलेजेस बिकॉज माय कंपनी इज इनटू एरोस्पेस। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया बट बताया नहीं कि मैं करता क्या हूँ। सो लेट इट बी, आई मीन इट्स ओके। सो सिलेबस क्यों नहीं चेंज हुआ आपको पता है? क्योंकि जो आप बुक्स पढ़ते हैं ना, वही लोग सिलेबस बनाते हैं। सिलेबस चेंज हो गया तो बुक बदल जाएगी, बुक बदल जाएगी तो रॉयल्टी इनकम बंद हो जाएगी। तो सिलेबस वही है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? एनीबडी हु इज अ मैकेनिकल प्रोफेसर, आप मैकेनिकल के हैं, तो माय कंपनी इज इनटू द सेम फील्ड। आपको पता है केटिया इज गवर्निंग द इंडस्ट्री नाउ। केटिया के बारे में तो जानते हैं आप लोग ना, कैटिया केटिया कुछ भी कहते हैं उसे। सो केटिया इज गवर्निंग द इंडस्ट्री। सारी डिजाइनिंग मॉडलिंग केटिया में होती है। क्या आपके करिकुलम में है केटिया? कैड कैम है? कैड कैम तो बाबा आदम के जमाने का था। किसी फैक्ट्री में कैड कैम यूज होता है? बताइए आप मुझे सच्ची। बट पढ़ा हम वही रहे हैं बच्चों को। सो आई जस्ट कम टू इट। You agree on this point that I'm making? Yeah. Second theory, India is shining. बड़ी कैंपेन चलती है, आजकल भी चल रही है। वो मेरे ख्याल से वाजपेयी के टाइम पे शुरू हुई थी। इंडिया शाइनिंग है ना, बड़ी एडवर्टीजमेंट्स बनी, बड़ा कुछ हुआ। जब भी ऐसी मूवमेंट शुरू होती हैं तो उसमें एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, जो बड़े चालाक बिजनेस हाउसेस होते हैं, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी सेफगार्ड कर लेते हैं, बट इंडिया शाइन नहीं होता। द थ्योरी इज दैट इंडिया इज शाइनिंग, बट द रियलिटी इज, अगर आप इन्हीं वर्ड्स को जंबल करके दोबारा से देखेंगे तो इट इज हाइडिंग इन अ सिन। ओके, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्कैम्स, देयर इज सो मच ऑफ करप्शन, देयर इज सो मच ऑफ पॉवर्टी, एंड सैडली यू नो देयर आर सो मेनी रेप्स हैपनिंग एवरी डे। मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन गेट रिपोर्टेड। थ्योरी एंड रियलिटी में फर्क है। थ्योरी नंबर 3, एजुकेशन एम्पावर्स यू, राइट। अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। आप लोग यंग हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स ने क्या कहा बचपन से कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई जो है ना, देखो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़ोगे नहीं तो आगे क्या करोगे, पढ़ना बहुत जरूरी है। लड़कों को तो और डर दिया जाता है कि बेटा पढ़ेगा नहीं तो शादी कैसे होगी तेरी। मैंने तो उसी चक्कर में पढ़ाई की थी। आई एम टेलिंग यू दिस इज ट्रूथ। सो यही बताया गया कि पढ़ो 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 पढ़ो। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, मनमोहन सिंह इज द मोस्ट क्वालिफाइड पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। क्या आप लोग ये जानते हैं?
Most, Always put first in whatever he do. whatever he did. And our Prime Minister साहब बड़ा controversy रहा कि qualification कितनी है, क्या है, you know, we were measuring all the while. आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको कहा और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के बिना कोई सोल्यूशन नहीं है, ड्यूरिंग दिस इलेक्शन दे outvoted one of the most educated politicians and they voted for somebody who is not a graduate. हिपोक्रेसी नजर आ रही है आपको? अब किसी ने पूछा नहीं होगा अपने पेरेंट्स से कि पापा आपने मोदी साहब को वोट किया, आपने मनमोहन सिंह जी को वोट नहीं दिया, आप मुझे कह रहे हो कि पढ़ने से लाइफ में बहुत सारे मजे आएंगे, तो ये मनमोहन जी को तो मजा आया नहीं पढ़ने से, तो मुझे कैसे आएगा, बताइए प्लीज. किसी ने नहीं पूछा. इनका जो चुनाव का जो हलफनामा गवर्नमेंट दर्ज किया उसमें पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद मॉडल पॉलिटिकल साइंस में हमने Since it's a very controversial thing, I will not debate it. But I'm saying that जब इलेक्शन चले, आप लोगों ने सुना होगा, अगर अपने पेरेंट्स की फिलॉसफी से चले तो मनमोहन सिंह जी would have been the prime minister again. You understanding what I'm saying? हमारे सिस्टम में हिपोक्रेसी बहुत है. शादियां कहते हैं एक बार होती हैं, मेरे कई दोस्त से तीसरी शादी के लिए तैयार बैठे हैं, 40 भी नहीं है अभी वो लोग. एजुकेशन एम्पावर्स यू. ये हम लोग हैं सब. एजुकेटेड क्लास, एमएससी, पीएचडी. आप में से पीएचडी है कोई? हर्ष होंगे, बड़ी हिम्मत है. Educated class in India is the most powerless, hopeless and frustrated class. ये जो false sense of security हमें मिलती है ना कि यार ये जॉब है, बस अब तो सरकारी है, लाइफ बन गई, कभी कोई चैलेंज करना ही नहीं चाहता उस नोशन को. अब ये 4th वाली स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैं जब जाता हूँ कैंपसेस में ना, तो मैं जैसे, आप तो मुझे स्टूडेंट ही लग रहे हैं, मतलब यू आर यंग है ना, तो एटलीस्ट बाकी लोग प्रोफेसर्स लग रहे हैं, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट है. सो मैं जब कॉलेजेस में जाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी जॉब कौन लगवाएगा. तो पहली ऑप्शन होती है कि कॉलेज वाले लगवा देंगे. अब आप लोग प्रोफेसर्स हैं, आप मुझे बताइए क्या आप किसी की जॉब लगवा सकते हैं? नहीं. क्लास में मत बोलना सर, आपकी जीना मुश्किल हो जाएगा. क्लास में मत बोलना ही. आपने नॉन कई जगह पे लगाया भी है, कई जगह कई लोग 3 महीने, कई लोग 2-3 महीने करते हैं और फिर बाहर आते हैं. नो, बट माय बेसिक क्वेश्चन इज कि क्या आप एडमिशन के टाइम पे किसी को गारंटी देते हैं कि बेटा चिंता ना कर, मैं हूं, तेरी जॉब मैं लगाऊंगा. अपनी जॉब का पता नहीं यार कैसे लगी है, दूसरों को कैसे लगवा देंगे. फिर उनको बोला जाता है कि आपके पेरेंट्स आपकी जॉब लगवा देंगे. क्या आप में से किसी के पेरेंट ने उसको कमिटमेंट दी कि बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरा बेटा है? मेरे फादर ने तो नहीं दी. क्या आप में से किसी को मिली ये कमिटमेंट? अब कॉलेज जो इतने पैसे लेता है इंजीनियरिंग के, वो नहीं लगवा सकता. पेरेंट्स जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है खिला पिला के, वो नहीं लगवा सकते. एक चीज ऐसी है जो लगवा देगी, वो है भगवान. क्यों? भगवान तो सबकी जॉब लगवाता है. तो यही नोशन पढ़ पढ़ के ना हम बड़े हुए हैं. हमें बताया जाता है कि यू विल रियलाइज दैट मोस्ट रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन फियर और ग्रीड. कहीं जाके अगर सत्संग में जाते हैं तो ये होता है कि यार वो ना भैया की किडनी की प्रॉब्लम है, तो चले जाते हैं सत्संग में. दीदी का मैट्रिमनी डिस्प्यूट चल रहा है, सत्संग में चले जाते हैं, थोड़ा प्रसाद चढ़ा देते हैं, थोड़ा ये कर देते हैं. लालच या डर, दो चीजें हैं जिसपे हमारा रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, बेस्ड है. मैं इसको लंबा नहीं खींचता हूं क्योंकि दिस इज नॉट अ रिलीजियस डिबेट, है ना. दिस इज मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड नाउ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एज अ टीचर टू मेक श्योर दैट यू नो यू हैव मोर एंटरप्रेन्योर्स. सो बचपन से ये चीज इंजेक्शन में लगा लगा के पिलाई गई है कि बेटा भगवान जो है ना वो सब ठीक करेगा.
और मैं आपको अब रियलिटी बताता हूँ। आप अगर कहीं जाते भी हो ना लाइफ में फ्रस्ट्रेट होके, आपको बताया जाता है कि बेटा देख, तूने कभी जिंदगी में ना भगवान का दरवाजा नहीं खटखटाया, आप चले जाओ किसी भी भगवान के मंदिर में, कहीं भी, इंडिया में तो मंदिर भी बहुत हैं, भगवान भी बहुत है इंडिया में, आपको वहां ना ये एजेंट्स मिल जाएंगे, ये आपको बताते हैं कि हम आपको क्रैश कोर्स कराएंगे। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग राइट नाउ। जब हम बात कर रहे हैं, अब देयर आर वेरी हाई होप्स फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। वो बाहर गए, आपको पता है बिलियन डॉलर्स ऑफ फंडिंग लेके आए हैं इंडिया के लिए। हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, हमारी आदत क्या है कि अगर मैंने इनके साथ नीचे खड़े होकर चाय पी, इन्होंने कहा यार मोदी कुछ नहीं कर रहा, तो मैं जाके 10 लोगों को बोल दूंगा विदाउट रिसर्चिंग। अगर आप नेट पे जाके रिसर्च करें, फेसबुक पे, सोशल मीडिया इज सो मेकिंग सो मच, क्रिएटिंग सो मच अवेयरनेस that you will realize that Modi Saab has done wonderful job, and there is so much of FDI and so much of stuff happening in the next few years. ये सेमिनार क्यों हो रहा है? Because in the next few years there are going to be many entrepreneurs. क्या आप उसमें से एक हैं? आपको खुद सोचना है। यहाँ ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो आपसे इंस्पायर होके ये कर देगा, या आपने सोचना है। बट उनका काम भी आसान नहीं है। अभी इस पूरी इक्वेशन में मेरा काम सबसे आसान है, और मेरे से ज्यादा आसान काम उनका है, और इनका भी। बैठे हैं, कुछ करना थोड़ी। बट ये चैलेंजेस हैं हमारी गवर्नमेंट के आगे। सो यू नो व्हाट इज द सोल्यूशन? ये प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको गिना दी, ये तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डिबेट देख लोगे, आपको पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। शायद मैंने इनको डिफरेंट तरीके से पेश किया आपके आगे, बट सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू चेंज द टीचिंग मेथडोलॉजी। अब आप कैसे करोगे? आपको तो उसी तरह पढ़ाया गया है, और जिन्होंने आपको पढ़ाया है उनको भी शायद उसी तरह पढ़ाया गया था। उसके पहले मेरे ख्याल से एजुकेशन जो 1960s 70s में थी ना, आई हैव नोन सम पीपल हु आर ग्रेट साइंटिस्ट जिनसे हम लोग बहुत सारी एडवाइस लेते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन बड़ी अलग थी। कमर्शलाइजेशन हुई एजुकेशन की तो क्या हुआ कि आर्म्स एम्यूनिशन एक बिजनेस था, ड्रग्स दूसरा बिजनेस था, तीसरा बिजनेस बन गया एजुकेशन। सो राइट नाउ एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग बिजनेस। आप मानते हैं बात कि नहीं? थोड़े से पैसे हो, थोड़ा सा अगर कहीं जुगाड़ हो AICTE में, तो आपका कॉलेज खुल जाएगा। फिर वहां पे जैसे असेंबली लाइन होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और वो लोग खड़े होके फिर बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करने का तो फायदा नहीं हुआ मेरे जैसे। Whereas you guys know कि engineering is a very technical field, and if you put your mind and heart to it, if you like it. My problem was I never wanted to be an engineer. So what did I want to do? I wanted to maybe be a writer. So the ball is in your court. आप लोगों ने ये चेंज करना है। How will you change that? आपने कभी देखा है कि मैथ्स पढ़ते हैं तो हम बच्चों को, आप में से कितने लोगों के स्मॉल किड्स हैं, छोटे बच्चे? तो बच्चों को जब मैथ सिखाते हैं तो हम लोग ऑरेंज सिखाना होता है कलर, तो हम ऑरेंज ले आते हैं। अगर हमने उनको 4 बताना है कि 1 2 3 4, तो एप्पल के 4 टुकड़े कर देते हैं, राइट? अगर हमने उनको काउंटिंग सिखानी है तो हम स्टेयर्स पे उनको बोलते हैं 1 2 3 4 5। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कि बच्चा जब एक बार एक्शन ले लेता है तो फिर उस पर रिफ्लेक्ट करता है। वो कोई भी चीज अगर आपने फटाफट सीखनी है तो उसका तरीका यही है। आप लोग सर्कस गए हैं कभी? गए ना? लोगों वैसे नौकरी सर्कस में कोई फर्क नहीं होता है वैसे, तो जो नहीं भी गया ना उसे पता है, भगा लो इधर से उधर, ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, है ना? सो सर्कस में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे एक्रोबैट्स हो रहे हैं, कोई यहाँ से छलांग मार रहा है, कोई एक हाथी एक पैर पे खड़ा हो गया, आप लोग क्लैप करते हैं, बहुत खुश होते हैं, पैसे दिए होते हैं।
पूरा मजा लेके आप वापस आते हैं, क्या घर आके आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। वही हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। द प्रोफेसर कम्स, और मैम मुझे लग रहा है कि शी मस्ट बी वेरी गुड एट व्हाट शी डज, अच्छे प्रोफेसर होंगे मेरे को लग रहा है, तो ये पढ़ाते होंगे, तो बच्चों के सामने तो वो एक्रोबैट्स हो गए, लेकिन क्या वो बच्चे जाके घर पे वो सब कर सकते हैं? नो। हाउ मेनी? अगर कर भी सकते हैं तो उसका सिंपल रीजन ये है कि दिस लर्निंग दैट दे टेक इज नॉट एक्सपीरियंशियल इन नेचर। वो लोग उस चीज को एक्सपीरियंस जब तक नहीं करते तब तक वो बात नहीं बनती है। और देर आर सम फैक्ट्स दैट यू ऑलरेडी नो, बट ये मुझे डालने थे क्योंकि प्रेजेंटेशन लगना भी चाहिए ना कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। आपको मैं एक बात एडमिट करूं, मुझे ये लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप is not a science. There is no science in entrepreneurship. It is 100% an art. So मैं इसमें कोई साइंटिफिक चीज नहीं डाल सकता था। सुबह मैंने एक बार आए थे, किसी से आए थे, उनको मैंने लास्ट में फाइनल में कंप्लीट हुआ काम इन आर्ट, then it is art and science. So that was marketing. Simply art. That was marketing. Marketing को मैंने कहा था it is an art. आप मैरिड हैं सर? अब आप बताइए, मैरिज इज एन आर्ट और अ साइंस? यू सी, एब्सोल्युटली आप जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैज एन आर्ट एलिमेंट एंड अ साइंस एलिमेंट। I was married when I was not all about the bodybuilding in the age of 20 years. अब मैं आपको एक बात कहूं सर, मैंने मैंने अपने फादर को ये बोल दिया कि पापा मैं बहुत आराम से शादी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे जल्दी जॉब मिल गई। एंड व्हेन यू हैव मनी एट यंग एज, आई थिंक दिस यंग मैन विल टेल यू कि यंग एज पे पैसा हो, स्टेटस हो, इंडिपेंडेंस हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू अट्रैक्ट? फास्ट कार्स एंड फास्ट वुमेन। तो मेरे साथ भी वही हुआ, वो करते करते सीरीज ऑफ मिस्टेक्स वन आफ्टर द अदर, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 33। मैं सलमान खान से भी बड़ा इंस्पायर रहा काफी देर, बट फिर मुझे जल्दी पता लगा कि मैं तो नहीं हूं सलमान खान ना। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं सर कि आपने जो बात की ना 20 एंड अब आप 20 साल में शादी की है, मैंने 33 में की, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह होती है। आपके केस में इसको टाइम कर दिया गया था कि 20 साल के बाद, मेरे केस में मैंने खुद ही टाइम किया कि मेरी लाइफ है, प्लीज मैं 33 में करूंगा, तो मैंने टाइमिंग उसकी आगे कर दी। बट टाइम बॉम्ब क्या होता है? बॉम्ब ही होता है ना, जब भी गिरेगा तो फटेगा। तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी है, सिंपैथी है। बट अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यू शुड जस्ट टेक अ ग्लांस। इसमें बेसिकली लिखा ये है, India has been heralded across the globe for its innovation in industrial, financial and technological arenas. NASA के 70% साइंटिस्ट कौन है? इंडियंस। इंडिया में एरोनॉटिकल कंपनी सबसे बड़ी कौन सी है? HAL। इंडिया के होम ग्रोन, होम मेड एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स कौन से हैं? तेजस में अगर आपको मैं कहूं ना यहां से दिल्ली की फ्लाइट ले लो, आप लोगे नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज, आई टेल यू, इसमें शायद हो सकता है कि बिकॉज आप तो मैकेनिकल की लाइन से, हाँ, तो क्या है कि हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग है ही नहीं है, सारा कुछ यूरोप में आउटसोर्स कर दिया, जबकि वहां हमारे बंदे आके काम करते हैं। 91 में इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुई थी, आप में से कई लोगों ने उसे विटनेस किया, या बाकियों ने पढ़ा तो है उसके बारे में। वो हमारी मनमोहन सिंह ने पॉलिसीज रिफॉर्म की, नरसिम्हा राव के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ। यू रिमेंबर दैट टाइम कि बाहर से पैसा आना शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई। तो उस समय इंडियन इकोनॉमी, तब से आज तक 25 साल हो गए हैं, $1 ट्रिलियन आगे चली गई इकोनॉमी।
बट प्रोग्रेस नहीं हुई। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? उसका सिंपल स्टैटिस्टिक ये है कि अगर देश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन चली गई तो गरीबी कम हो जानी चाहिए ना। गरीब तो उतने ही है। They say about 42% of the population living below the international poverty line. So that means आधा इंडिया जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। हम में से उसमें से कोई नहीं है। वैसे देखा जाए ना, हम लोग भी पॉवर्टी लाइन से नीचे ही हैं। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? उन लोगों से जो ऑलरेडी इंडिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, या फिर एक यूरोप के एक कॉमन मैन से, या वेस्टर्न सोसाइटी के किसी कॉमनर से? सो दीज आर सम हार्ड हिटिंग फैक्ट्स जिनको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और फिर हम लोग किसी को मोटिवेट कर पाएंगे। बट इफ इट्स जस्ट अनदर लेक्चर एंड फन टाइम, even that's all right. So now let's come to the main and very interesting part, जिसको लेके मैं भी बड़ा टची हूँ। And you know, I'm socially very active. I do a lot of stuff. I'm an animal lover, so मैं animal NGOs को बहुत सपोर्ट करता हूँ। कुछ 25-30 डॉग्स ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली I take care of them. I have 2 dogs at home. So I'm an animal lover basically. So animals को लेके अगर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट होती है या कोई एनजीओ होती है, I go and support them. Of course. आपको उन कुत्तों को पाल लेना चाहिए। आपको उन कुत्तों को पाल लेना चाहिए क्योंकि अब ये भी एक अगेन हार्ड हिटिंग फैक्ट है। जगह यहाँ चाहिए। ऐसा है? नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। आप अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी होगी आपने। यस, सो कहा जाता है कि ह्यूमंस आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज। और दिस इज कंप्लीटली टेंजेंट टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, सो इसको हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे प्लीज, इसको ऑफलाइन कर लेंगे डिस्कशन को। बट टू टेल यू द ट्रूथ, आप लोगों को पता ही है कि एनिमल्स आर मोर इवॉल्व्ड देन अस। दे अंडरस्टैंड व्हेन you love them, they understand when you don't love them. They don't know what is anger, they don't know what is hatred, they don't know what is jealousy. Humans are full of all these emotions, the 7 deadly sins. So इसलिए मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगेन मैं इसलिए आपसे डिबेट नहीं कर सकता कि अगर मुझे कहीं सड़क पे कोई एनिमल दिखे कि हिट हुआ है या कुछ ऐसा मुझे करना पड़े तो मैं जरूर करता हूँ। तो आपकी सोसाइटी में अगर आवारा डॉग्स हैं तो देयर इज ए एनजीओ कॉल्ड पीएफए, पीपल फॉर एनिमल्स। गूगल से उनका नंबर लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं। यू कैन गिव माय रेफरेंस आल्सो बिकॉज आई क्लोजली वर्क विद देम एंड दे टेक केयर ऑफ। हरी Actually, we have encroached upon their area. हमने सारे फॉरेस्ट काट दिए हैं, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? बट आप वर्टिकली जा सकते हैं ना। आपने उनका एरिया एंक्रोच कर लिया। चंडीगढ़ में तो बनाने नहीं दे रहे। So again, you know what? It's a very tangential discussion. So इसको offline लेते हैं जब ये session खत्म हो जाएगा, because other people are connected with us ना. I don't want to bore them with my love for animals. So what is social innovation? आपने कभी ये वर्ड सुना? क्योंकि बुक्स में तो अभी आया नहीं है, तो बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपने मैनेजमेंट बुक्स में आपने एमबीए किया मैम, ये एमबीए में भी नहीं पढ़ा होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा होगा कि आप सोसाइटी को लेके अगर अपना परिवार बनाते हैं या अपनी कंपनी बनाते हैं तो आपका एक फर्ज होता है कि आप सोसाइटी को वापस दीजिए। यस, वो कॉर्पोरेट्स की होती है, बट इंडिविजुअल की एक सिंपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर रक्तदान हो रहा है कहीं पे, या स्ट्रे एनिमल्स हैं, या कहीं पे सफाई अभियान हो रहा है, तो वहां पे जाके पार्टिसिपेट करो। ये चीजें हमें कब पता लगी हैं? जब मोदी साहब ने शोर मचाया स्वच्छ भारत का। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। So I am actually excited in a way that India is going through a paradigm shift, but I don't know who is going to benefit out of it.
आने वाली जनरेशन बेनिफिट करेगी, आप लोग करोगे जिनके अनफुलफिल्ड बिजनेसेस एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, या कोई भी नहीं करेगा? मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो करेगा। जितने आप यंग हैं, अब अगेन इट्स अगेन माय पर्सनल बिलीफ कि व्हेन यू आर यूथ सिंगल यू हैव द ड्राइव, आगे आगे बहुत चीजें होंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, वो चीजें बहुत अच्छी होती हैं लाइफ में, माइलस्टोन्स। आई हैव 2 kids, आई एम रियली हैप्पी with my wife and my kids, but they somehow they bind you and you can't really go out like a fighter and get it. So energy levels down ho jate hain na, because they become more demanding. So what I'm saying is that people who are single, people who have some time thought about entrepreneurship should definitely give it a thought. They should research. Government is making so much of arrangements these days. They are getting investors to your doorstep. आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि यार कंपनी खोलनी है, इसमें 1 करोड़ रुपए लगेगा तो कौन देगा? तो ख्याल वहीं पे खत्म हो जाता था। आज आप मुझे एक अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन दो, मैं आपको 10 दिन में एक इन्वेस्टर ला के दूंगा। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम छोटी छोटी कंपनीज में करते हैं इन्वेस्ट। व्हेन वी गो टू कैंपसेस वी आस्क पीपल फॉर देयर ब्रिलियंट आइडियाज, वी ऑर्गेनाइज अ competition and we pick up the best idea, we invest in that, we give them office space, we give them a lot of other stuff. But what I'm saying is, do you simply want to listen to this conversation or do you want to act upon it? Keep in mind who is going to benefit out of it. I am the last person to be benefited. अगर कल को आपने मेरी बात सुन के बिजनेस शुरू कर लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि 10 साल बाद आप कहेंगे मिस्टर सिद्धू आपकी बात सुन के मैं इंस्पायर हुई थी, दिस इज 1 करोड़ का चेक आपके लिए। नहीं होगा ना ऐसा। So that's what I'm saying कि social innovation is a novel solution to a social problem that is more effective. आपको पता है इंडिया में गरीबी कितनी है, भूखमरी है, पानी नहीं मिलता पीने को, कहीं स्कूल में एजुकेशन नहीं है। वो अभी वो कौन सा था, वो मिड डे मील वाला पीछे हुआ था, उसमें बच्चे मर गए खा के, उसमें भी मिलावट कर दी। तो जहां पे सर इंसान की वैल्यू नहीं है ना, वहां पे जानवर की वैल्यू तो बहुत पीछे है। वेस्टर्न सोसाइटी एंड एशियन सोसाइटी, स्पेशली आवर सोसाइटी, बड़ा सबसे डिफरेंस ये है कि वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी कम है कि एक इंसान की वैल्यू की लाइफ है। यहाँ पे तो पॉपुलेशन इज लाइक अ टाइम बॉम्ब, बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है। तो वो अगर 50-60 हजार लोग, खुदा ना खास्ता किसी जापान थॉट प्रोसेस, बट बेसिक प्रॉब्लम यही है ना कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर। Actually, we are the system. हम लोग जब तक खुद इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बदलते। सर हमारे यहाँ चेंज वो करना चाहता है जो चेंज करने लायक नहीं, उस पोजीशन में नहीं है, जो पोजीशन में वो चेंज नहीं करना चाहता। ये जो बाहर जाते हैं सारे लोग, सभी जानते हैं यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया कैसा है, सबने देखा है हर तीसरे महीने एक एमपी एमएलए जाता रहता है। Absolutely, you're right. प्रॉब्लम जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नहीं बट आई वी गेट योर पॉइंट, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो भी बड़ी कोरी साफ बातें हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो आप बोल रहे हैं मैं उसको चैलेंज कर ही नहीं सकता। बट मैंने हमेशा एक चीज देखी कि हमारा कल्चर इस तरह का है सर कि, और मैं अगर कल्चर की बात करता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी कल्चर का हिस्सा हूं। बट एक दो रियलिटीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरे वर्ल्ड का कल्चर का क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, अगर आप लोग प्रोफेसर हैं आप समझ जाएंगे मेरी बात फटाफट से। इफ यू डू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड you will realize that our community comes in the bottom 10% because of our traditional values, because of our so-called traditional values, because of our social beliefs, because of the way we think about other species, about dogs, about animals, about human beings, about family values, about everything. I'll add to that. Back in the 1980s, 70s and 80s, a lot of African students used to come to India. India was the favorite education hub for African countries, obviously. और जो हमने उन लोगों को इतना गंदा ट्रीट किया,
इतना गंदा ट्रीट किया कि जो अब इंडियंस अफ्रीका में जाते हैं और वो लोग उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं। आज भी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप में से कौन चाहेंगे कि उनके फैमिली मेंबर का किसी का रिश्ता एक अफ्रीकन के साथ हो जाए, आई थिंक this idea will also so so we can't say that our thought process is that clean. है थोड़ी सी bias तो है। Same question my student asked me. We teach African student now. One day, one of the boy asked me, "Ma'am, why don't Indian girls marry us?" This was the question. This is something else. This is not to be discussed in the class. We'll discuss it later. I Because- happened to grow up with a lot of African students because around my age, some guys, Nigerians, used to come, and I used to play football with them. So one evening we sat down, had dinner. A very close friend of mine, and he told me he spent 8 years, वो PhD करके गया यहाँ से. He spent 8 years in India, and he says, I have not been able to understand your culture. He says, when I was new, मैं साइकिल चला रहा था. एक सरदार जी कहता है, फुल ग्रोन मेच्योर आदमी अपने बच्चों के साथ स्कूटर पे या गाड़ी में जा रहे थे, और उन्हें अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए मेरे को मैंने कहा, ओए हबशी, and then he said, who like you are playing with a monkey. And that thought process. And when we go to other countries, we want them to welcome us with a red carpet. That is what we expect. And we are very sensitive. हम अभी भी ब्रिटिशर्स से नाराज हैं कि भाई उन्होंने इतने साल हमारे पे राज किया कि बड़े गलत, ठीक है ना. बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स है ना, उतने क्रूअल तो वो कभी भी नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. जो इंडिया का आप अगर देखें हेरिटेज है, जो इंडिया के पास, अगर कभी कोई देहरादून गया हो तो वहां पे एक फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया है. हैव यू सीन इट? या सो दोज व्हाट तो वहां मतलब उन्होंने इतना बड़ा हेरिटेज दिया हमें. So coming back to the same thing, if you do the cross section, you will realize that our community falls. It's a very hypocritical society. Excuse me, sir. जी बोलिए. I am from Brazil. I want to say something. Yeah, please बोलिए. Good afternoon, sir. Good afternoon. This is regarding the social innovation topic which is being discussed right now. Yeah. Sir, I just wanted to ask, the well-developed countries, they actually are moving towards social innovation, Yeah. and mostly their innovation are based on more or less on the social pattern only. In a country like India, which is harboring like the world's largest labor force, like China and India, we are mostly the labor nations. So, sir, going for a social innovation, the participants who are actually getting involved in entrepreneurship, should they expect that they should be earning through these social innovation? And I just want you to focus a little in regarding this in Indian context, sir. Yeah, I got your question. Let me try and answer it. If you are satisfied, tell me. Otherwise, I can take it again. Sure, sir. So we are right now discussing social innovation. Now, जो social problems हमारे culture में exist करती हैं ना, मैट्रिमनी को लेके प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड केयर को लेके प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी को लेके प्रॉब्लम्स हैं, क्लीनलीनेस को लेके प्रॉब्लम्स हैं. सो सोशल इनोवेशन क्या होती है? सोशल इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो डोंट कंफ्यूज दीज टू. आई विल डिस्कस द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप लेटर. Social innovation is finding a smart solution to the problems that exist in our society. So, how do you do it? Any example? If somebody wants to give me any example, आप में से कोई मुझे कोई एग्जाम्पल देगा सोशल इनोवेशन का? कभी आपने लाइफ में विटनेस की हो, कभी देखी हो? तो जेंटलमैन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, आप बता सकते हैं कि कभी आपने सोशल इनोवेशन देखी हो होती हुई? Actually, sir, for like just making a humorous point, one of the social innovation is taking sannyas and leaving everything on God for problems of society. However, sir, social innovation like waste management, that could be one of the example for that. Yeah, very nice.
So you want to give me example, or you want me to give you example? Sir, actually, I just wanted to know how can a new budding entrepreneur maybe motivated to do something for the society and to earn from the innovation and the entrepreneur that the concept as well. Because right now most of the people are actually running after getting employed and earning some capital. Investment for social causes is a later thing. Once the priority, the main question of survival is being not like, I should say, like survival is our first motive right now. In Yeah. most of the developing countries, the question of survival has been solved. So now they are getting thinkers and innovators, but we have not yet formulated a simple policy or a mindset for getting our survival and the survival of a social structure. Uh, I hope you get my point, sir. I am getting your point completely. In fact, that is what I was coming at. So I request that you pay attention in the next 5 minutes. You see, you've understood what is social innovation. You were saying something, sir. I want to say, जैसे गाँव के क्षेत्र में पहले हुआ करता था कि किसी डेथ होती थी तो जनरली एक बहुत बड़ी सभा होकर लोगों को बुला के खाना खिलाते थे दूसरी कोई चीज को जी. Now it has been reformed in the on the basis of social innovation. Yes. उसको curtail कर दिया गया. अब उनके बच्चे पढ़ने लग गए क्योंकि जो मनी सेव होती थी लाखों रुपए खर्च करते थे वो उनके बच्चों पे खर्च करते थे. Now this is social application हुआ है. This is the one kind of social innovation. Absolutely. अभी मैं लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे था, सैटरडे को, and I was addressing the students. So one of the students, in fact 2-3 of them mechanical students थे वो, so they said that we want to start up gobar glass plant. So that is social innovation. And उसमें entrepreneurship कैसे आती है मैं आपको भी बता रहा हूँ. पीने का पानी नहीं कहीं बहुत जगह मिलता, मेडिसिन्स कई जगह नहीं मिलती हैं. आजकल तो अपने मोबाइल पे बहुत कुछ होता है. आजकल एक मैसेज आना शुरू हुआ है, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हाउस जॉय. यू नो व्हाट डज दैट कंपनी डू? सबको घर में कारपेंटर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन चाहिए होते हैं, कारपेट क्लीनिंग, गाड़ी साफ करवानी. वो आपको मार्केट से सस्ते दामों पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. इससे क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही हैं. When you do social entrepreneurship, let's understand what is social entrepreneurship. Social entrepreneurship is the attempt to draw upon business techniques to find solutions to social problems. अब जो हमने social problems का solution निकाला उसमें अगर हम business भी add करते हैं, social entrepreneurship can be of two types. It can be very noble cause where you are a non-profit social entrepreneur. You don't want to make money out of the cause. And second is when you want to make money, and it's okay to make money. I mean, nobody is stopping you. But social entrepreneurship में क्या होता है कि you are addressing one of the evils that exist in society. एक ऐसी burning issue होती है जिसको आप address करते हैं और उसके आसपास अपने business को build करते हैं. ये जो red में लिखा है ये how many of you know who is Sam Petroda? जो टेलीफोन लेके आए राजीव गांधी के साथ. Sam Petroda is the telecom guru of the country. So Sam Petroda, and very controversial about his beliefs and his expressions at times. So Sam Petroda said, the best brains in the world are solving the problems of the rich, who actually do not have any problem. अब प्रॉब्लम किसको है? आप लोगों को और मुझे है ना. गवर्नर साहब को तो नहीं है, या जो 5, 6, 7, 8 सेक्टर में कोठियों में बैठे उनको तो नहीं है प्रॉब्लम. उनकी होंगी छोटी मोटी प्रॉब्लम. प्लम्बर नहीं आया किसी को डायबिटीज होगा, किसी को हार्ट पेशेंट होगा. बट जो प्रॉब्लम्स लाइफ की हैं वो तो हम लोगों को फेस करनी पड़ रही ना, द मिडिल क्लास. सो हु रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर. एंड नोबडी इज सेइंग कि किसी गरीब आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करके आप पैसे नहीं कमा सकते. मैं आपको भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन आई विल गिव यू 5 एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज दैट यू ऑलरेडी नो. Social entrepreneurship is based on the ideology of Mahatma Gandhi, the father of nation. Business with a good cause. The greatest example of social entrepreneurship is Mahatma Gandhi.
वी डोंट हैव टू गो आउट। आपने एक बात कही थी कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है वहां पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा तरीके से फैली हुई है। मैं इससे थोड़ा डिफर ये इसलिए करता हूं क्योंकि प्रॉब्लम्स वहां है ही नहीं ना। तो वहां पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आप कौन सी प्रॉब्लम एड्रेस करोगे? प्रॉब्लम्स तो इस देश में। तो यहाँ पे बिकमिंग अ सोशल एंटरप्रेन्योर is a much easier task, is a good thing, is a viable proposition. Now these are few examples that I talked about social entrepreneurship. Social entrepreneurship anyways requires you to be socially innovative. अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे, चाहे आप एक नॉर्मल बिजनेस रन करना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है, सामूहिक शादियां, या so instead of spending, I always contest with my father. He spent lakhs of rupees on my wedding. So I told him कि शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी नौकरी चली गई, तो मुझे उस टाइम पैसे की जरूरत थी. So I told my father, I said वो पैसे अगर मेरे नाम पे FD करा देते तो अच्छा नहीं था. You see, and your parents will make the same mistake. It's a mistake, na? I think marriage is a matter between the two individuals. It should not be glorified like that. करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हमारे यहाँ शादियों पे. So again, that's a separate matter. वो लोग उनको आंसर देना है. So but this is right, sir. शादी कराना एक बहुत बड़ा हुआ है इस देश में. I have a daughter, और मुझे लगता है कि जब मुझे अपनी बेटी की शादी करानी पड़ेगी तो होने चाहिए करोड़ 2 करोड़ तो जेब में, क्योंकि वो होगी 20 साल 25 साल बाद उसकी शादी. So what I'm saying is कि this is a smart thing. आप देखिए कि सोसाइटी में किस चीज की चैलेंज है, उसके आसपास अपना बिजनेस बिल्ड करिए. अब मैं आपको 5 एग्जांपल दे रहा हूं. द फर्स्ट एग्जांपल विच इज known worldwide is the Dabbawalas of Mumbai. Yeah, it is a 6 Sigma certified company. आप समझते होंगे 6 Sigma क्या है? Yeah, these are quality measures and quality standards. 6 Sigma is like one of the top standards of quality. So Dabbawalas ने क्या किया? He's again an electronics engineer, the guy who runs the company. They got together, they realized कि जब टिफिन घर से बंदा लेके आता है तो वो ठंडा होता है, तो उसको गर्मा गर्म टिफिन सप्लाई करेंगे, और जितने गरीब भूखे लाचार लोग हैं उनको शाम को 5 बजे की जगह इकट्ठा करके वहां पे जो टिफिन बचे होंगे उनको खोल दिया करेंगे. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. यू सी, सोसाइटी का भला भी हो गया, अच्छा काम भी हो गया, एंड दे हैव गॉट सो मेनी एक्कोलेड्स फॉर व्हाट दे डू, एंड द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीस. अब देखा जाए तो क्या क्या कहोगे? डब्बे वाले हैं यार. एक आपके मेरे ख्याल से आपके घर के आसपास भी होगा या आपके ऑफिस में भी होगा जो साइकिल पे 15 डब्बे लेके आता है और एक एक डब्बा दे देता है. बट दीज पीपल आर they've turned it into a multi-million dollar business. The second company is again a Western company, but I want to go into the details. I want to tell you the background of this company, Charity Water. Now, Charity Water Company is run by a gentleman called Philip, who used to be the #1 party planner of New York. आप समझ रहे हैं आजकल तो बड़ा ओपन हो गया पार्टी प्लानिंग, कि अगर शादी प्लानिंग है तो वेडिंग प्लानर होगा, अगर पार्टीज हैं वो भी शादियों की तरह होती हैं आजकल, कि मेरा बेटा यूएस से आ रहा है तो आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, सो यू नो देयर इज अ पार्टी प्लानर. सो ही वाज द #1 पार्टी प्लानर ऑफ यूएसए. वन डे ही रियलाइज कि यार इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, यू नो, पढ़ पढ़ के हमें लगता है कि यार बस बहुत पढ़ाई हो गई. शादी से तो बहुत बार लगता है कि यार बस बहुत हो गया. पेरेंट्स से लगता है कई बार कि यार बहुत होगी पेरेंटिंग, यार प्लीज लेट मी लिव माय लाइफ. फ्रेंड्स के साथ होता है, गर्लफ्रेंड्स के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है. तो इसको भी लगा कि यार ये बहुत हो गया है एंड आई हैव टू गो एंड सीक समथिंग एल्स. आपको कई बार अपना पर्पस पता लगता है लाइफ में ना. सो दिस जेंटलमैन ही टुक अप अ क्रूज, एक मेडिकल क्रूज पे ये गया. वो क्रूज क्या करता था? वो चैरिटेबल क्रूज था जो दुनिया के उन कोनों में जाके मेडिसिन देते थे जहां पे मेडिसिन जाती नहीं थी. तो इसने कहा कि मैं वहां पे ट्रैवल करूंगा. तो जब इसने वहां ट्रैवल किया तो इसे रियलाइज हुआ कि अफ्रीका में तो पीने का पानी नहीं है. अब जिस देश में पीने का पानी नहीं मिलता उस देश में आप क्या बिजनेस करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या आपकी डेवलपमेंट होगी, क्या आप लाइफ में अचीव करोगे जहां पीने का बेसिक पानी नहीं है.
सो इसने एक मिनरल वाटर कंपनी शुरू की कॉल्ड चैरिटी वाटर, and he got sponsorships from a lot of big companies like Microsoft and a lot of other companies. They sponsored him, and he used to supply water to those countries. And more than 1 million people are drinking that water today. So this is another example. Third is House Joy, which I just explained you. आपको message आ जाता है. These are some very young entrepreneurs. House Joy is a company which is started by very young people. So what do they do? अगर आपको plumber चाहिए, so you give them a missed call. You don't even have to call them. You give them a missed call, they call you back, and they will give you a plumber at a cost which is lower than the market. So आपको बिना हिले डुले plumber मिल जाता है घर में. And their services, again, they are very quality conscious, certified. They give a call back, they check the status of the service, they check the quality of the service that is provided to you. Carpet cleaning, car cleaning, sofa cleaning, anything that you want to get done. Even repairs? No, not repairs. Now, Fast Pace is a company which is started by an IIT alumnus. This gentleman, he had a brother who was autistic. Autistic तो आप समझते हैं ना, जो slow child, जो slow होते हैं. So उसे एक बात अच्छी तरह पता थी. आप में से किसी के घर में autistic child या autistic sibling या कोई ऐसा नहीं? Autistic लोगों की एक खासियत होती है. मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे. Isaac Newton was autistic. George Bernard Shaw was autistic. Beethoven was autistic. Picasso was autistic. So autism is not a problem, it's not a challenge. Autism is a different ability of people. So what happened with this guy? He realized that जो autistic लोग होते हैं ना, उनकी concentration और उनकी attention to detail बहुत ज़्यादा होती है. So उसने एक software testing company शुरू की. He employed all autistic people. There are more than 300 people who are autistic working with this company. Again, it's a brilliant example of social entrepreneurship. Employment भी दी, जो काम है उसको better भी किया. And now when you want to, towards Bangalore, if you want to offer, if you want any services, this is the company that you call. There's another NGO that I know, छोटी सी आशा. There's a very enterprising lady. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आसपास में, उनका घर एक गांव के पास था, एंड उन्होंने वहाँ की लेडीज को इकट्ठा किया. वहाँ देखा कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, मैरिटल डिस्प्यूट्स ये सब होते थे. तो उसका कारण ये था कि women were not independent. तो उन्होंने क्या किया, because the lady was from corporate sector, she got all of those ladies together. They started making corporate gifts. जैसे आप लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं न्यू ईयर, दिवाली पे शायद मिलते होंगे ना, तो वो गिफ्ट्स बनाने शुरू किए. Now they are a well-established company of Chandigarh. And in my previous organization, I used to procure, purchase, and demand lakhs of worth of gifts from them. So ये भी social entrepreneurship है कि society की एक problem को solve किया, थोड़े से पैसे भी कमा लिए, which is not wrong. और आपका जो business का जो main backbone है वो यही है कि आप उस problem को बार बार address करते जा रहे हो. सब कुछ हो गया सर. It's a win-win situation. Upcycled shoes. Now this is the example of a 15-year-old girl that I know. और ये मैं बहुत इमोशनली आपको बता रहा हूँ कि this is a girl who did not want to study. So parents ने कहा कि यार कुछ करना नहीं चाहती, छोड़ो यार, ठीक है. From a reasonable family. So what did this girl one day, she got talking. उसने अपने फादर को बोला कि मेरा तो मन है कि मैं अपसाइक्लिंग करूंगी शूज की. कितना फालतू आइडिया लगता है सुनने में. शूज की अपसाइक्लिंग समझे आप, किसी भी चीज को अपसाइकिल करना समझे कि जैसे आपने बताया ना वो चाइना के लैपटॉप, यहीं पे बात हुई थी हमारी, हाँ, कि वो चाइना से वो उसको रिफर्बिश करके आते थे. सो व्हाट दिस गर्ल स्टार्टेड डूइंग, शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर डोनेशंस फ्रॉम कॉर्पोरेट्स ऑफ शूज दैट यू डोंट वेयर. अब हम लोग ऐसा तो नहीं है, वो जमाने पुराने से जब हमारे शूज के मुंह नहीं खुलते थे हम उनको पहनते रहते थे. अब थोड़ा सा अगर खराब हो तो हम लोग उसको दे देते हैं, ठीक है ना. सो वो शूज को रिसाइकल करके शी स्टार्टेड सेलिंग देम बैक टू द पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड फिला एंड नाइकी एंड एडिडास.
and she's already making money. So these are examples that are there in front of us. You can research them, you can Google them. The best way to learn is to go to social media, learn about social entrepreneurship, ask queries. Yeah. Hello, sir. Sir, are we audible? Yeah. बोलिए. Sir, I just wanted to ask one thing, sir. It has been made mandatory that under the component of corporate social responsibility, some funds are to be directed towards the social projects. So, is there any policy by the government that could link these social innovation startups and entrepreneurs with that CSR margin, rather than going for example, I have to do some, I have to put up some socially innovative work. I can go for a profit-making NGO or a company. So, is there any policy which links CSR with this so that the funding made can be made available to such projects? That's my only question. Yeah. CSR is called corporate social responsibility. The policy of the government today is that 2% of your profits have to go to CSR. Now CSR में क्या आता है कि CSR में मैं आपको CSR की फिलॉसफी बताना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो. जब कॉर्पोरेट्स बनती हैं, कोई भी कॉर्पोरेट बनती है तो आपके मेरे जैसे लोगों को एम्प्लॉय करके बनती हैं. तो हम लोग एक सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ से हमें पिक करके उस कॉर्पोरेट को बड़ा किया जाता है. तो जब कॉर्पोरेट हब सोसाइटी से रिसोर्सेज लेके बड़ी होती है तो कॉर्पोरेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसी सोसाइटी को वो वापस दे. तो उसको वो किस तरह से करते हैं, बिकॉज आई एम एन एक्टिव CSR इन माय करियर. आई डिड अ लॉट ऑफ CSR एक्टिविटीज. उसमें ब्लड डोनेशन इज वन ऑफ द CSR. स्कूल्स कॉलेजेस में जाके स्टडी मटेरियल देना इज अ CSR. अपने लोकल एरिया में वुमेन डेवलपमेंट करना इज अ CSR. सफाई अभियान करना इज अ CSR. तो CSR में किसी भी तरह का बिजनेस करना is not morally a very good thing to do, but there are companies who under the garb of CSR, they do a lot of business practices and they identify a lot of talented people and then kind of absorb those companies or take over those companies. So मुझे ऐसा लगता है कि CSR का social entrepreneurship से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, but CSR is a by product of this. अगर आप कोई social entrepreneurship वाला business शुरू करते हो, if you do something which is social entrepreneurship, then CSR is a by product. It happens automatically. अब जैसे मैंने आपको ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, डब्बा वाला, चैरिटी वाटर, हाउस जॉय, फास्ट पेस, छोटी सी आशा, अपसाइकिल शूज, इसमें CSR नेचुरल वे में हो रही है. I hope I've made my point clear, sir. Very clear, sir. Thank you very much. So the last slide of the presentation is, do we have time? So मैं वैसे आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि प्रोफेसर धमीजा आए ना, I have known him for some time now, and he is the head of entrepreneur development cell of TTTR, right sir? तो इनसे मेरी चांस मीटिंग हुई थी in one of the universities where I was a speaker also and he was a speaker. So मेरे साथ लाइफ में बहुत, शायद मेरे को लगता है कभी नहीं हुआ कि मैं किसी एकेडमिशियन से इंस्पायर हुआ. तो जब मैंने इनकी प्रेजेंटेशन देखी तो ये बाय चांस आके भी मेरे साथ ही बैठे, तो आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड दिस इज रियली ब्रिलियंट. एंड तब से हमारी जान पहचान शुरू हुई एंड आई हैव had the privilege of listening to him a lot of times, meeting him. He's a great man and I really want to thank him for inviting me here. तो इन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया है 2-4 बार इससे बात करने के लिए. So I make sure that जब मैं इनकी तरफ से invited होता हूँ तो I stick to the point and I don't go here and there on my presentation. So finally I want to conclude this presentation with one last message which is very, very critical. Again, this should be taught in the schools. Financial intelligence, sex education, family values, social responsibility, and this is again a very, very much a part of financial intelligence. What is that? There are 4 kinds of people in this world, right? So if you ever want to be a business
man, or if you ever want to, if you are enterprising, if you have an entrepreneur mindset, this is what is very critical for you to know. There are 4 kinds of people in this world. The first category is called E, जिसमें हम सब लोग आते हैं. It is the employee category. Second category is self-employed category, where you do not work for somebody, you have your own work. I mean, you work for yourself. Third category is B, called business owner. You own a system that works for you. And I, as the investor, money works for you. Right? Eventually, what do we want? We want the most ideal situation is I. This is again an extract from Rich Dad, Poor Dad. I think कभी अगर आपको दूर दूर भी सपना है कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, बिजनेस करना है, otherwise also, it's not bad. I mean, my father was not a businessman, but he was a good father. So I'm not saying that if you are not an entrepreneur, entrepreneurship is a very, very rough journey, let me tell you. So before you step into it, you have to weigh your pluses and minuses. But this is what I want you to know. The employee category, the uniqueness of, अगर आप इसको दो क्वोशंट्स पे मेजर करें, टाइम एंड मनी पे, तो मैं आपको इन सब की चीजें बताता हूं कि इनके साथ क्या क्या होता है. द एम्प्लॉय कैटेगरी, and I'm generalizing, I'm not pinpointing. The E category has neither time nor money. आप अग्री करते हो उससे? आप ही की बात कर रहा हूं. नहीं, आप आगे आगे चलो, आगे आगे चलो. सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी कौन सी हुई? कोई एग्जांपल देंगे मुझे? पीपल हु ओन अ जॉब. Doctors, lawyers, dentists, CAs. Yeah. ये पान वाला और ये वाले ना, इनके पास बहुत टाइम होता है और पैसे भी बहुत होते हैं. So coming to this, this category, time and money are directly proportional. With the E category, जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा. ओवर टाइम तो नहीं मिलता है बहुत. मुझे नहीं लगता ओवर टाइम मिलता है लोगों को. So if you work for 8 hours a day, 40 hours a week, there's a certain pay package that you get. कि आज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 40 साल काम किया तो 40 साल के बाद आपकी नेट वैल्यू, आपके बैंक में नेट एसेट क्या होगा, which is not very encouraging. आपको लाइफ में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए. There should be an opportunity where you can be a millionaire overnight. So self-employed category is the one that chooses not to work for somebody, but they work for themselves. So they become their own boss. When you become your own boss, there are challenges of time management. अब मुझे पता है कि मैं 11 बजे से पहले नहीं नहाता हूँ, because my boss is not going to call me ना कि where are you Mr. Sidhu. So I have to discipline myself, which is the biggest challenge in entrepreneurship. अब ऑफिस नहीं जाते हैं कई बार, वो भी प्रॉब्लम है. So self discipline is a big thing. सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ क्या होता है कि देयर मनी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम दे पुट इन. अगर एक दुकानदार, सीए, लॉयर, डेंटिस्ट, डॉक्टर 2 महीने के गोवा ट्रिप पे चला जाए तो क्या उसका बिजनेस चलेगा? आपको अगर आज लॉयर के पास जाना है, आप मुझे फोन करते हो कि सर मुझे लॉयर बताओ, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उस लॉयर को फोन करते हो या डेंटिस्ट को फोन करते हो और वो कहता है जी आई एम ऑन छुट्टी टू गोवा, विल यू एवर कॉल हिम अगेन? So it's a loss of business, opportunity lost. Self employed का ये होता है कि जितना टाइम देंगे उतना मनी है. जहां टाइम कम हुआ वहां मनी भी कम हो जाएगा. शॉपकीपर्स देख लो, लॉयर्स, डॉक्टर, जिनकी हमने बातें की. थर्ड कैटेगरी इज बिजनेस ओनर्स. These have a system that works for them. These people have a system that works for them. Even if they take a छुट्टी, आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स या रिचर्ड ब्रांसन या अपना मानीज या कोई भी, अगर अदानी वाले हों या कोई भी हो, अगर वो 2 महीने छुट्टी पे जाना चाहें तो क्या वो नहीं जा सकते? जाते हैं ना, क्योंकि देयर इज अ सिस्टम विच इज ऑन ऑटो पायलट विच इज वर्किंग. अकाउंटेबिलिटी सेट है, प्रोसेसेस बनी है. और बिजनेस ओनर्स के बाद एक नया स्टेप आता है जिसको शायद हम लोग किसी इन्वेस्टर को नहीं जानते हैं आज की डेट में, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेयर कमोडिटी. और इन्वेस्टर्स वो होते हैं पीपल हु इन्वेस्ट इन द आइडियाज. पीपल डोंट इन्वेस्ट इन योर पर्सनैलिटीज. ये चीज मुझे बहुत देर बाद समझ आई, क्योंकि जब पहली बार बिजनेस आइडिया आया तो
I said, मैं कर लूँगा यार, don't worry, I'll make a nice presentation. So my senior partner told me, he says, please understand the investor is a very, very shrewd guy. He is not going to invest in your personality. वो भी हमें गलतफहमी थी एक. He says he is going to invest in the scalability, manageability, replicability of your idea. बिजनेस कौन सा सक्सेसफुल होता है? जो स्केलेबल हो. स्केलेबल मतलब उसको ऊपर के लेवल तक ले जा सकें. रेप्लिकेबल हो कि अगर आप फ्रेंचाइज सिस्टम करते हैं तो वो रेप्लिकेबल हो. मैनेजेबल हो जिसे आप रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं. तो अगर आपके बिजनेस में ये क्वालिटीज नहीं है तो वो इट्स नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया. सो दीज आर 4 कैटेगरीज. नाउ पीपल ऑलवेज वांट टू मूव लाइक दिस. एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, बिजनेस ओनर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं. द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट हर जोन में जगह जो है वो फिक्स्ड है. अगर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूं आज और आप एज ए एम्प्लॉय मुझे पूछते हो कि मिस्टर सिद्धू वी वांट टू स्टार्ट समथिंग लाइक यू, और आपके साइड में हम ऑफिस खोलना चाहते हैं, प्लीज हमें एडवाइस दीजिए, तो मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा? आपको पता ही है. मैं कहूंगा देखो यार ऐसा है कि नौकरी में ना तुम्हें फिक्स्ड इनकम आ रही है, वही करो. अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश. वही सेल्फ एम्प्लॉयड अगर बिजनेस ओनर से एडवाइस मांगेगा वो उसको यही एडवाइस देगा. बिजनेस ओनर इन्वेस्टर से जब एडवाइस मांगेगा वो उसको यही बोलेगा कि मेरे पैसे तो डूब गए. सो इसमें विन लूज सिचुएशन है. इफ समबडी ट्रांजिट्स फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर देयर इज अ कंपटीशन. सो एक और बात याद रखना हमेशा आप कि जब भी आपने बिजनेस करना हो, ऑलवेज 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 फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. इट शुड बी विन विन सिचुएशन. अगर 10 रुपए आप कमाते हो तो 2 रुपए कोई और भी कमाए. कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ बिजनेसेस इज द इन थिंग टुडे. कंपटीशन में आने से क्या होता है कि टुडे और टुमारो यू विल बी फिनिश्ड. द बिग फिश ऑलवेज ईट्स द स्मॉल फिश. So I hope I've made sense, and eventually, you can ask me questions if there are any, but eventually, life is not a game, it's a play. This is a little philosophical. कई बार क्या होता है कि हम लोग we live in the future. We think so much about the future कि हम लोग अपने present को enjoy नहीं कर पाते. आप लोगों के पास जो जॉब्स हैं आज के डेट में और आप लोग जो कर रहे हैं, इट इज फैंटास्टिक. यू हैव नो आइडिया कि कभी कभी मेरा मन करता है कि यार दैट वाज बेटर. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, इफ यू एंजॉय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, फिर आपको सारी उम्र ना एक तरह से पेंशन लग गई है. दुख तकलीफ कब होती है? जब मन कुछ करता है, दिमाग कुछ करवाता है, पेरेंट्स कुछ करवाते हैं, वाइफ कुछ करवाती है, और बंदा एंड में रियलाइज करता है कि यार मुझे तो ये करना था. So it happens with most of us. So I hope that it doesn't happen to you. And if you have any questions, you can ask me. Otherwise, there's a very small thing that I have to tell you, and then I'd just like to sum it up. एक बार एक आदमी ना ऐसे बैठा होता है, he's sitting on the sea beach, कैजुअल से कपड़े पहन के, फिशिंग नेट डाल के, सिगार पी रहा है, साइड में बियर रखी हुई है. तो एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बंदा उसके पास से जाता है, जैसे मैं आज आप लोगों को काउंसलिंग दे रहा हूँ, थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ जिसकी. तो वो उसके पास से जाता है, उसको कहता है कि अरे यार तू क्या कर रहा है? कहता है मैं तो बैठा हूँ. कहता है बस इंजॉय कर रहा हूँ. कहता है यार तुझे पता है कि अगर तू दिन में 2 फिश पकड़ता है, 1 kg की 2 फिश पकड़ता है, तो शाम को इतने पैसे बनते हैं तेरे. हाँ जी. कहता तुझे पता है कि अगर 1 हफ्ते के बाद तू इस पैसे को जोड़ के फिशिंग नेट ले लेगा तो तेरी फिश 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. कहता अच्छा जी. कहता उससे दो कितने पैसे आ गए, वो कैलकुलेशन करके उसको बताता है. He says within 6 months you will have a boat, you will have a crew, and you will have a nice house. कहता अच्छा फिर? कहता फिर तो आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर आराम से आके इधर समुद्र के किनारे बैठना, एक बियर रखना, अपना फिशिंग नेट डाल के आराम से सिगार एंजॉय करना अपना. तो वो कहता भैया अभी मैं क्या कर रहा हूँ. सो प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो कर रहे हो ना उसको अगर एंजॉय कर रहे हो
तो कुछ ज्यादा दे से डोंट मेस विद द विनिंग कॉम्बिनेशन. अच्छे पेरेंट्स, अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे ये मिल जाए ना तो बस शुक्र कर दो, शुक्र मनाओ एंड एंजॉय योर लाइफ, राइट. एंड अगर कोई स्टूडेंट कभी आपके पास आए तो आई होप आई हैव मे बी मेड लिटिल सेंस, जिसको आप आगे उनको बता पाओ. एंड इंटरनेट इज, सोशल मीडिया इज वेरी एक्टिव. इफ यू वांट टू डिग आउट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलिसीज, जैसे उन्होंने वीसी में पूछा मेरे से कुछ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर आपको लगता है मैं नहीं दे पाया, तो आप उसको सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जाके सर्च करिए, यू विल गेट योर आंसर्स. सो विद दैट आई वांट टू थैंक यू. इतनी देर आपने सुना एंड आई होप आई मेड सेंस. कोई सवाल हो तो आप ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट स्पीकर हमारे आ गए हैं, तो उससे पहले हमें टी ब्रेक भी करनी है और भी करना है. So I am very thankful to Sidhu sir for taking a very wonderful session. He is a extremely gentle and extremely nice person. In fact, I was listening to him while sitting at the back, and he speaks, effortlessly. बहुत अच्छा लगा सुन के जो है. So thank you so much, Sidhu sir, for coming over and engaging our participants. In fact, he came on Saturday also. We had a one-day program on Saturday, which was a startup. That Startup India, which Modi ji launched, from there, no. So we were displaying it over here, telecasting over here, and he came as one of the resource persons also for that. And वो जो हमारे एमटेक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा सेशन इन्हीं का लाइक किया था उन्होंने, जो मैं फीडबैक भी ली थी बाद में. So thank you so much. With this, we are breaking for the tea. The next speaker is already over here. We have with us Dr. Yashpal Taneja ji, who from the SD College, Chandigarh. He is a very fine speaker in the field of financial management. He speak about the finance for the non-finance persons basically. So let us have a tea break first. And if you have any questions for the speaker, Sidhu sir, you can ask those questions in the tea break only. Okay. So we reassemble after 15 minutes. Okay. Thank you so much. Thank you. आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर आपको. जी में किसी ने बुलाया. अच्छा. तो मैं इमीडिएटली बस उतर जाता हूँ. चाहे 2 मिनट कप लेके ना. अच्छा. मैं आपको पहले ही नंबर ले लो, एड्रेस फिर हम आपको बाय पोस्ट भिजवा देंगे यार. कोई बात एड्रेस एड्रेस किसी अदा करेंगे मुझसे ले लो, मैंने कॉल कर दिया. ठीक, मैं इनसे मिल के ले लूँगा. साइन करवा लो. गाड़ी का नंबर बाकी कर देंगे. बाकी नंबर कर दीजिए. डिस्टेंस कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस कर दीजिए. फॉर्म कर देना, चेक कर देना. ऑफिस आ जा, ऑफिस आके ना मैंने कॉल करी. ठीक है. आइए सर. एक्सक्यूज मी सर, योर पेन ड्राइव. सेशन दी चाहे कॉपी कर लिया, रख ली. एक कॉपी रख ली प्रेजेंटेशन. नहीं कॉपी नहीं. रमन जी एक कॉपी रख ली, दे दो. एक पहला फोल्डर बना दे. हाँ फोल्डर पहला भी जी देखोगे ना, वो भी इस फोल्डर. सर पहला वाले नहीं आएंगे. मार्केटिंग वाला किसी दिन लिया आप कल के ना होया सी बारो संजीव चड्डा सर दा प्रेजेंटेशन ले आए सी. संजीव सर याद है, ईमेल मंगा लवांगे है ना. नहीं सर वो होएगी उससे डाउनलोड की थी ना पीडीएफ. मैं हाँ आ गया, मैं ले आना. तो चलो. हाँ जी सर, उस पे कर लिख लो. तो मैं नाम लिख लो. नहीं तो क्लिक कर रीने. हाँ इधर में कर देना. एक मिनट एफडीपी ऑन इनोवेशन. अब शॉर्ट कर देना. हाँ जी सर. एंटरप्रेन्योरशिप यूथ एंड
सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डेट पा देंगे है ना 18 to 29 जन 2015 ठीक 2016 मैं पीछे चल रहे हैं 1 साल ठीक है एक होगी मार्केटिंग वाली भी कहना है पेन ड्राइव से ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਆਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸਰਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬੈਟਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਸੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਪਟਡ ਨੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫੋਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ 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 नहीं 74 उस दिन आए थे स्टार्टअप नहीं हमें पता भी नहीं था 987428 Ramandeep Sindhu. He's basically BTech Electronics from Jani Jalton College. Ramandeep. RAMAN Ramandeep Singh Sindhu. और मुझे अपने एचआर मैनेजर थी एक कंपनी जो कि हेलीकॉप्टर की इंटीरियर बनाती हाँ इंडिया इट वाज बेसिकली आईटी पार्क आल्सो एंड समटाइम्स दे वर्क इन पंचकुला आल्सो एंड एक डीआरडीओ का लड़का था इनके साथ जो कि डीआरडीओ के साथ प्रोजेक्ट किया था वो टेक्निकल मैन पावर था जी इन्होंने अपना शुरू किया अभी मोस्ट प्रॉब्ली ही विल मूव टू सम फॉरेन कंट्री आने वाले टाइम नहीं एक ही है ना सर पीपीटी और वीडियोस वगैरह तो नहीं है प्रोग्राम का अब देखना उसमें ना अटेंड करना जो रेलिवेंट कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम every expert is unique in his or her field इवन वी हैव 45 मिनट्स ऑफ ब्रेक अभी मैं सुबह आ गया था यहाँ पे देखने के लिए ठीक है थोड़ा थोड़ा करके भी सीखते हैं क्योंकि बेसिक्स बन जाएगा तो आगे आप यू कैन डेवलप ओके ठीक है आज चाय पिए हम Parallel. Plans which are meant to be executed, they are not shared one. उसमें that भी कुछ है ना उनको डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है बहुत सारे nobody will understand that and has the sentence. Nobody can understand those sentences which are related to plans. तो सर को कैसे लग रही है सेशन में आपको सर थोड़ी सीरियस है इस काम में हमको मतलब वो सीनियर वाली फीलिंग आ रही है थोड़ा बेसिकली आपको भी दिखती सब ये तो बिल्कुल प्रोफेसर टाइप बिल्कुल ऐसे होता है मैं तो बोलती हूँ तो आप ज्यादा बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे बैठ नहीं सब फील और एक्टिव और इतनी बार बोल अपन जैसे मजाक भी करी जाए कुछ उड़ा भी दी बोली होती है ऐसे वापस सीरियस हो गए फिर करती ना इतनी यंग टू मी और वो ही जस्ट लाइक दुनिया में है दूसरा उधर यूनिवर्सिटी करना होता है उसका अलग मतलब बाहर जाती है तो शेयर होता है you know, going more towards extrovert. This is a supposed charge that attracting. This is the phenomenon. Relationship with both the people are extrovert and
most of the discussions happen on two spots. Both are improvising able to talk to each other. मुझे तो दिख ही नहीं रहा था पता है? हाँ, मेरी आईज वो है ना, और उस पर मसल आईज से I know a boarding session on my 6x6 कराया फिर आई मतलब तो साथ लाइव टेस्ट करवाया तो 6x6 का अच्छा चश्मा नहीं आता मेरा 6x6 मेरे को ये देखने में कोई आपको दिख रहा है छेद अच्छे से अब बिना चश्मे के ऐसा धुंधला होता है पर हाँ एक बार मैं धुंधला नहीं कंफ्यूजन ऐसे मुझे वो कंफ्यूजन मतलब ऐसी तो आईसाइड ऐसे तो पता चलता है जैसे मैं बार पढ़ती हूँ अब स्टार्टिंग में मेरा नंबर आ रहा था मैंने स्पेक्स ज्यादा यूज किया तो दैट गोज डाउन मेरे कम हो गया अब बार दोनों लाइन मिक्स मुझे ऐसे ही होता था हमें चाय पीने की खा गई financial management is not my forte. This is your forte. Very maximization. वो सामने शूटिंग हो रही है कहाँ ले लो वो देखो तो ले लो दिस इज ऑफ अब मैं करती हूँ आप जाओ मैं करती हूँ अपने I can. किधर किधर उधर तो ना देखूं एटलीस्ट है ना उधर सामने से मतलब उधर से लो आई एम लुकिंग देयर अच्छा दिखाओ दिखाओ अरे आप लोग चलो यार प्लीज चलो आप चलो अच्छा मैं करंट एडिटिंग की तो डाल दूँ वन मोर प्लीज मेरा हाथ आगे वो आगे रखना मेरी ये रुको मेरी तो अच्छी ऐसे मत लो उसको ऐसे करो वो नहीं आएगा उधर का मैडम अपने कैमरे से खींचो आप मेरा पास नहीं है कैमरा ये लो मेरे कैमरे से खींच लो है ना कंजूस लोग एक फोटो नहीं खींच सकते ये लो जल्दी 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 ये लो अच्छी है ये अरे आंखें बंद है मेरी चलो दोबारा ले लेती हूँ आपने आंखें बंद क्यों की आपको पता है ना अरे तो मुझे कैसे पता चलेगी अरे अरे किधर देखूं इधर देखो मेरी तरफ एक और वन मोर प्लीज हो गया आप ये है ना 5 मेगापिक्सल है लेकिन फोटो सही आ जाती है लाइटिंग अच्छी है ना वो भी आनी चाहिए स्लाइड्स उधर देखोगे हाँ उधर देखोगे लगना चाहिए ना कि मैं बोल रहा हूँ है ना बोलते हुए मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लेते रहो है ना कंटिन्यूअसली हाँ बिल्कुल आप लो मैडम है ना ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ बोल रहा हूँ बता रहा हूँ वो लोग आने ही वाले हैं मैडम अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं भी बैठता हूँ सर प्लीज आप पहले लो फिर हम बैठते हैं सर आप बैठेंगे अरे हाथ हटा दो सही मिठाई की तो जल्दी सर आ जाओ हटो 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 जल्दी बहुत एमिनेंट चेयर है ये क्या जाने अरे इनके फोन से नहीं आ रही सही सर आपके फोन से नहीं आ रही 5 मेगापिक्सल है नहीं आ रही सही मैं मेरे फोन से आपके फोन पर मैंने देखा था डिस्प्ले वाज नॉट राइट अरे वो मैं उसको सही कर देता हूँ वो मैंने जानबूझ के कम कर रखा है पता है ये क्या है ये बोका वो केस हुआ जो लालू जी की बेटी के साथ हुआ था हाँ हार्वर्ड वाला यस लेकिन मैं तो बोलूंगा ना मेरा तो है यहाँ प्रेजेंटेशन मैं आपको वो दिखाओ मैं लैपटॉप क्यों नहीं खोल मुझे लगा आप टिकट कटा रहे हैं सर स्टार्टिंग वाली स्लाइड लगा दो नंबर में मेरा वो है भाई
अभी 15 मिनट का टाइम उनकी चाय पी लेना। अब जो है बुक कर दोगे ना? अरे कर देंगे बुक करना। राजस्थान रोडवेज की है ना वॉल्वो बस सर्विस। और इसमें आपने सेटिंग कर रखी है नेट चलता है इसमें। अभी यहाँ का पासवर्ड करेगा ना इसमें। अभी हमारा पोस्ट करने के लिए कार्ड सुविधा है। और तो कार्ड इसमें क्या होंगे? ये वाली पट्टी ना? ये कौन सी जगह पे है? दिस इज रामा मैम, ये वाला रामा It depends on what you are getting. डॉक्टर साहब आपने साइन करवा लिया? करवा लो करवा लो। आगे आगे आ जाओ भैया, पीछे क्यों बैठे हो? हैं? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ये कुछ लोग अपनी यहाँ के एमटेक हैं जो कि अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बीच में जाना पड़ता है। आपने वो अटेंडेंस शीट सभी ने भर दी? वो जो अटेंडेंस मैंने सुबह मैंने दी थी तो भर दो भैया, क्या करोगे? मैं भरूँ आपके? अपने नाम चेक कर लो, अपने नाम के स्पेलिंग चेक कर लेना। प्लीज चेक द स्पेलिंग्स ऑफ योर नेम्स। Okay, let us start the next session. So we have with us Dr. Yashpal Taneja. Dr. Taneja is a very senior faculty member at the GGD SD College. This is Goswami Ganesh Dutt SD College, which is one of the top colleges in the field of commerce and management in Chandigarh. So he's teaching over there, and basically he's, I think, from the finance area. Yeah, finance area. He has done his MBA and his PhD also from this UBS, Punjab University. One of the very fine speakers we have. So he'll speak on the topic of finance for the non-finance, persons. Since you're all basically technical people from engineering college, from the polytechnic, so let us have some inputs on the finance also, so that you can understand the, all the things later on. So I welcome Dr. Taneja. Thank you, sir. And sir, the session is yours. Thank you. Thank you, Dr. Dhameja, for inviting me here and to have a company of you all. And we will be trying together to have some discussions on the financial aspects. And when we were discussing the theme, and it was finance for non-finance persons, we were trying to get it, what should be included. The theme which I have kept, and the flow of the presentation which we have moved on, that is moving from
a non-finance understanding towards the finance understanding to a certain extent. I would try to flow it what Mr. Sidhu was pointing out related to the business. I will be talking about what important is that the investor is a shrewd guy, and that investor who is a shrewd guy, you have to identify what that investor wants. So I would be moving from there only what elements he would like from you as a financial aspect, because ultimately sooner or later it's all about money game. And when you are talking about money game, it comes into finance. And what is finance, what is financial management, I'll be trying to freely discuss with you through this session. The topic, we can have it finance for non-finance persons. Before we move on, this is something understanding about the two aspects. Finance, we all refer to finance as a money. And I believe it as money as well as money's worth, which can be represented into money's worth. और important है इसमें management. Normally हम कहते हैं चीज़ों को manage कर ले. We always say यार manage it. Why aren't you able to manage it? I say management has a deep meaning, and that deep meaning is optimum utilization. It's not only of resources. It's of available resources. हमारे पास finance सबके पास है. और कोशिश हर कोई क्या करता है that they want to manage it, and the management important, it becomes important when you want to manage it within available resources. थोड़ा है या ज़्यादा है, and I believe finance एक ऐसी चीज़ है वो हमेशा ही कम रहती है, जितनी मर्जी हो जाए, क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे पास जो डिमांड्स हैं, डिजायर्स हैं, वो हमेशा ही ज़्यादा रहती हैं. और इसकी एक खासियत भी है that we feel difficulty in managing it, because इसके फंडामेंटल मैनेजमेंट के थोड़े से इसमें टफ टास्क आ जाता है. So when we understand what is financial management, we are talking about optimum utilization of the finances, the money and the money's worth which you are having. And I have written there it's a limited, even in the personal life as well as the corporate life. Personal life, we all are living, we have a fixed income, and you all know it falls short. And corporate life, we all know there is an income, and they also feel shortage of money. That's why they issue the shares to the general public, and we buy those shares and we try to invest through those shares. Why? Because they know money is required for the big projects as well as for the small projects. This is something, a kind of a comparison between the two. It's not comparison. I just wanted non-finance person taking towards the finance persons. My personal life, I always like to optimize something, and optimization of something is my personal finances. You all focus on which insurance policy is to be taken, which medical insurance would be better to me, whether I should buy mutual funds, tax saving karna hai. No, I would like to keep the money in the bank account. I would like to buy some, post office instruments in order to save my taxation aspects. What are we trying? We're trying to save tax. Along with, we are trying for the future. कि कुछ फ्यूचर के लिए सेफ हो जाए. वो जो सेफ हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा, वो हमारी पर्सनल प्लानिंग है. किसके रिलेटेड? पर्सनल फाइनेंसेस के रिलेटेड. You might have seen the ads these days. Children plan आ रहे हैं. That child education plan is there. That hasn't paid today थोड़ा थोड़ा, and on the day when your child requires money, it would be there. और हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे प्लान्स हैं. We will be trying to identify today whether वो हैं कि नहीं है, so that your interest would be created. Moving towards आपके इंटरेस्ट को फिर हम लेके जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के इंटरेस्ट की तरफ. That's called, to which I refer it, corporate life. And that's why I'm trying to say striking a balance between current consumption and savings means I have a fixed income. खर्चा भी करना जरूरी है, शो ऑफ भी जरूरी है, लिविंग स्टैंडर्ड भी जरूरी है, बट साथ में सेविंग्स भी जरूरी है. And the ones who have started the career, they have a big challenge. Then the ones who have 20 or 30 years of experience in this career, because they might have made their houses. The youngsters, they feel difficult in building their houses in Chandigarh or nearby area because the costs have grown up. Even in every area, I'm not talking about कि हमारे सिर्फ इसी एरिया में हुआ है, हर जगह हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो बैलेंस का स्ट्राइक करना हमेशा से टफ रहता है. That's why we talk about financial planning for future. Sorry, it's about sacrificing today's consumption for future financial goals like medical,
चाइल्ड एजुकेशन एटसेट्रा। मैं मिस्टर सिद्धू के साथ जो उनकी स्लाइड थी उसके साथ एक थोड़ा सा जोड़ूंगा, बिकॉज वो स्लाइड मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक आती है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोसाकी इज अ रिनाउंड ऑथर। उसकी सबसे पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड, एंड देन सेकंड इज कैश फ्लो क्वाड्रेंट। पढ़िए, उसमें आपको ये चीज मिलेगी। He says this in this regarding, that we all are the salaried people. We work, then only we get salary. You got you know some suffering from some disease, you have the medical holidays or medical facilities, medical leaves, but if it is prolonged, it would be difficult for us. ज्यादा बढ़ गई तो पैसा भी कट जाएगा और उधर से बीमारी पे पैसा भी लग रहा है, so it's a double loss. Now we wanted कि if I am on the bed, there must be something which is generating income for me. और वो जनरेशन इनकम फॉर मी कैसे होगा? वो इन्वेस्टर वाला क्वाड्रेंट है, जहां से हम बात करते हैं कि वो पैसा आता रहेगा। और इन्वेस्टर वाला क्वाड्रेंट हम डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड यू सेव इट, इन्वेस्ट इनटू दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर गोइंग टू गिव यू द सर्टेन रिटर्न आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो रिटर्न्स हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नॉट टू द एक्सटेंट बट टू यस सम एक्सटेंट आई विल बी डीलिंग, बिकॉज ये हमारी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करेगा। सिमिलर इज द लाइफ जो एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है, टू विच आई से इट्स अ कॉर्पोरेट लाइफ। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू एंटरप्रेन्योर बिजनेस। इट सेज शेयर होल्डर फाइनेंसेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। द मोमेंट यू से कि भैया this decision has been taken wrongly by the management, immediately वो स्टॉक मार्केट पे आ जाता है कि रॉन्ग है। एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल शेयर करने के लिए सिर्फ इतना सा एग्जाम्पल ले लीजिए। डू यू रिमेम्बर सत्यम, डिबैकल ऑफ सत्यम? क्यों हुआ? सिर्फ एक रॉन्ग डिसीजन था। आई विल बी टॉकिंग फर्दर। वो रॉन्ग डिसीजन क्या था कि एक 4000 करोड़ वाली कंपनी को मोर देन 4000 करोड़ से खरीदा जा रहा था, एंड पीपल वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ऐसा क्यों हो रहा है, और कंपनी कौन सी है? सत्यम जैसी कंपनी ऐसा डिसीजन ले रही है। सो दे इमीडिएटली थॉट देयर मस्ट बी समथिंग। क्यों ऐसा उनको, लोगों को, इन्वेस्टर्स को वरी हुई? बिकॉज उनका पैसा लगा था। एक रॉन्ग डिसीजन आज सत्यम नहीं है, टेक महिंद्रा है। बिजनेस में अगर हम रिस्क लेते हैं एक रॉन्ग डिसीजन का, वो हमारे लिए उतना ही भारी पड़ता है जितना हमारी पर्सनल लाइफ में एक रॉन्ग डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिस होता है। इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एलिमेंट इन बिजनेस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न। आप भी कल को किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, किसी जगह पे पैसा लगाना चाहेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे लगाना चाहेंगे, तो यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या कंपनी सही काम कर रही है, क्या कंपनी जहां पे मैं पैसा लगा रहा हूं मैं जानता हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? वी एज एन इन्वेस्टर्स डू नॉट गो फॉर हार्ड वर्क। हम सिर्फ टैक्स सेविंग का फोकस करते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट का फोकस करेंगे, टैक्स सेविंग भी होगी और आपको रिटर्न्स भी मिलेंगी। प्रॉब्लम क्या आती है? हम कहते हैं ओके यार किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा दो, ये मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, मुझे टेक्निकल आता है। मैं हमेशा हर चीज को हर जगह पे जहां पे भी डिस्कशन होती है की बात बोलता हूँ। इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, वट एवर यू आर गोइंग, अल्टीमेटली फाइनेंस तो आएगा, और फाइनेंस के लिए ही मेहनत होती है। मैं खड़ा बोल रहा हूँ, फाइनेंस के लिए मेहनत है। आप लोग आए हैं, फाइनेंस इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में मूव करेगा। कहीं ना कहीं आई मे नॉट से इट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट इट वुड बी अ हिडन समवेयर इन द हेड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग, जब कमाने के लिए मेहनत है तो मैनेज करने के लिए क्यों नहीं है? और प्रॉब्लम क्या है कि जब मैनेज की बात आती है तो वही से आई डोंट नो। हम कहते हैं ओके तू मेरा दोस्त है, रिलेटिव है, वट एवर, अरे यार तू मेरे को थोड़ी नुकसान पहुंचाएगा, एंड बता कहाँ साइन करने हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ मार्केट गोज डाउन, तो फिर वहां पर एक कॉल आता है, आपने एड भी देखी होगी, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू, थैंक यू वेरी मच, गला पकड़ लो, जिसने आपके पैसे लगवाए उसको अंदर करवा दो, पैसा वापस नहीं आएगा। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। जितनी शिद्दत से कमाया उतनी शिद्दत से मैनेजमेंट किया होता तो डबल ट्रिपल हो जाता। When he was talking about investor, वहां पर एक नाम आता है, the world's biggest and the richest investor, that's called Mr. Warren Buffett. You all might know about him. और उसका सिर्फ एक ही काम था, लोगों से पैसे उधार लेता था स्टार्टिंग में, और उसको खुद मार्केट में इन्वेस्ट करता था, एंड आफ्टर दैट उसके जो गैप था वो खुद कमाता था, एंड धीरे धीरे रिचेस्ट बनता गया। हमारी जो कंपनीज हैं वो भी यही कर रही हैं। We don't know about the subject,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आती है, डोंट नोस अबाउट द सब्जेक्ट एंड देन वी बिलीव इट ऑन समबडी। किसी और बंदे को 100-200 देना हो तो 4 बार सोचेंगे, बट वो टैक्स सेविंग के चक्कर में पता नहीं उसकी रिटर्न क्या होने वाली है, कब आएगा कब नहीं आएगा, वो चीज हम देखना भूल जाते हैं। इवन आई वुड से फॉलो अप भी नहीं करते हैं। फॉलो अप रेफर्स टू 1-2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी है, निकालना तो नहीं पड़ना पैसा, वापस तो नहीं ले ले पैसा। It is something like you are finding a suitable match for somebody in your life. Because a match is important, similarly the right investment is important. Look at सत्यम के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगाया, जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि एक ही दिन में या 2-4 दिनों में कंपनी खत्म हो जाएगी। इसमें नुकसान सत्यम के सीईओ सिर्फ रामलिंगम राजू का नहीं हुआ, इन्वेस्टर्स जो उसके साथ एसोसिएटेड थे, 45 रुपए का शेयर था उस दिन, और जिस बंदे ने 30 का खरीदा होगा और उस दिन 45 का शेयर एक ही दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में गिर के 11 रुपए और फिर 10 रुपए तक पहुंच गया, जस्ट चेकआउट। 30 रुपए में 100 शेयर खरीदे होते 3000 लगा होगा, और अब वही 100 शेयर 10 रुपए का बिक रहा है 1000, नुकसान नेट कितना हो गया 2000। वो तो बेच के बाहर निकल गया जिसने खरीदा। अब ध्यान रखिएगा व्हाट आई एम सेइंग, आप बेच रहे हो और आप 20 रुपए लॉस पे बेच रहे हो, कोई खरीदने वाला भी तो है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वो खरीद क्यों रहा है? मैं बेच रहा हूं, कोई खरीद क्यों रहा है? क्योंकि इतना बड़ा डिबेकल हो गया, स्टिल ही इज बाइंग। इसका मतलब कुछ ना कुछ है, आप सबको पता है। गवर्नमेंट बैक दैट कंपनी अगेन, प्राइस फिर 45 पे पहुंच गया। जिसने आपसे 10 रुपए में खरीदा, 2 महीने में 45 पे पहुंच गया, 4.5 टाइम्स। जस्ट ओनली नॉलेज एंड मैनेजमेंट। हम पढ़ा के भी उतनी देर नहीं कमाई कर सकेंगे, हम उसको उतना मल्टीप्लाई अपनी इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते जितना नॉलेज से है। मुझे समझ सिर्फ यहां तक यही नहीं आती, उसके मीन्स, कमाने के मीन्स के ऊपर हमारे एफर्ट्स हैं, बट जो उसका आउटकम है दैट्स कॉल्ड मनी, उसके मैनेजमेंट के ऊपर एफर्ट्स नहीं लग पाते। एंड यू नो माय फ्रेंड्स, वी हैव टू वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन 2 वेज। नंबर 1 पर्सनल भी, और नंबर 2 कंपनीज भी एफिशिएंट हो जाएंगी, बिकॉज दे नो द मोमेंट वी गो फॉर अ रॉन्ग डिसीजन, इन्वेस्टर वुड सेल माय शेयर्स। और वो एफिशिएंट होने का मतलब है हमारी इकोनॉमी का ड्राइवर जो है वो फास्ट हो जाएगा, एंड दैट कैन बी डन बाय द एजुकेटेड पीपल ओनली। और वो सिर्फ एक उसमें सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं फाइनेंस इज नॉट ऑफ माय कप ऑफ टी। और मुझे समझ नहीं आता, ये कप ऑफ टी हम रोज पीते हैं क्योंकि फाइनेंस हम यूज करते हैं। And then we have reflection is made in the stock market for every financial decision taken by the company personnel. This is what I am saying, reflection in market. सत्यम का एग्जांपल, शेयर के प्राइसेस का डाउन होना रिफ्लेक्शन है। इसी तरह किसी कंपनी के प्राइसेस का अप होना उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। विल बी टॉकिंग अबाउट कि इन सारे चीजों पे एक एक करके मैं आपके साथ कंपनी के सारे एग्जांपल्स को डील करूंगा। एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन हर बार हर इंसान से यही होता है कि इंटरेस्ट चार्ज क्यों किया जाता है? और इंटरेस्ट चार्ज, हम किसी को पैसा उधार देते हैं, टॉक अबाउट कि भैया इंटरेस्ट लगेगा। बैंक में भी पैसा लगाते हैं, वो एक्सपेक्ट यार थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाए। एफडी कराते हैं, बोलते हैं जी सीनियर सिटीजन पे कराएंगे तो 9.5 मिल जाएगा, 0.5 की भी चिंता होती है, 0.05। या थैंक यू फॉर करेक्टिंग। सो लुक एट द पॉइंट कि हर एक चीज के एलिमेंट को इतना माइन्यूटली फोकस करते हैं। तो यहां पर कहता है इंटरेस्ट चार्ज करने का रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू कि जो पैसे की वैल्यू आज है वो 1 साल बाद नहीं होगी। माइंड इट, आप अपने बच्चों को, या आपने जब आप बच्चे थे और हम सारे इसी एज में निकले, तो हमें एक टॉफी कितने की आती थी? 25 पैसे। आज वही एक टॉफी 1 रुपए की टॉफी, तो वही है, टॉफी का सब कुछ वही है। तो फिर हुआ क्या? टॉफी थोड़ी सी छोटी भी हो गई रादर। सो हुआ क्या? जो 25 पैसे में पावर थी टॉफी खरीदने की, आज वो पावर, पैसे की वैल्यू कम हुई या बढ़ी? दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अब होता गया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आता है, बोलता है जी आप 15-15 हजार पे 10 साल दो, 1.5 लाख रुपया दे दो, और हम आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया दे देंगे। अपा कहते हैं बात तो सही कर रहा है। वी फोकस ऑन द रॉन्ग फुटिंग कि 2.5 लाख रुपए की वैल्यू, 2 लाख रुपए की वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स और 20 इयर्स, व्हाट वुड बी दैट? कितनी होगी? वी डोंट नो।
अगर 25 पैसे की वैल्यू 1 रुपए तक जा रही है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है दैट दे ट्राई टू बी फूल, बिकॉज वी आर फ्रॉम नॉन फाइनेंस, सो वी बिलीव यस फाइनेंस की वैल्यू वुड रिमेन सेम। बोलते हैं 1 रुपया तो एक ही है, देखो छपा हुआ तो एक ही है। फिर टॉफी कम क्यों आई? बिकॉज उसकी परचेजिंग पावर में कमी आ गई। 25 पैसे में जो परचेजिंग पावर थी वो अब परचेजिंग पावर किस में है? 1 रुपए में है। इसलिए हम किसी को बोलते हैं भैया ब्याज दे दो। ब्याज दे दो का मतलब यह है कि परचेजिंग पावर जितनी कम होएगी उतना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। बीच में एक क्वेश्चन उठा था जब हमारी 1 साल पहले की बात, इन्फ्लेशन 7% 8% पे थी। 8% का मतलब 100 रुपए के ऊपर 8%, 8 रुपए हो गया। कहते जी बैंक में पड़ा पैसा भी नुकसानदायक है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज बैंक में जो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो 4 to 5% मिलता है, रेफर्स टू 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए, और वही चीज की वैल्यू कितनी हो गई? 108 रुपए। इट मीन यू आर लॉस एट ₹3। और आप बोलते हैं कि जी बैंक में पड़ा पैसा सेफ है, बट वी लॉस्ट समथिंग। अब जब इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन का कंपोनेंट नहीं होता है, इसके साथ एक और एलिमेंट होता है जो कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क। बैंक आपको कम ब्याज देता है फिर भी आप बैंक में डालते हैं। इन म्यूचुअल फंड कोई बंदा उधार मांगे उसको देने से मना कर देते हैं, क्यों? डर है। बैंक के केस में डर नहीं है। किस चीज का डर है? डिफॉल्ट का, कहीं पैसा ही वापस ना आए। सो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, वी विल बी आस्किंग फॉर मोर मनी। इफ देयर इज अ लेस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इंटरेस्ट कम देगा। सो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट हमेशा दो चीजों से बन के चलता है, इन्फ्लेशन रिस्क कितना है प्लस डिफॉल्ट रिस्क उसमें कितना है। मेरी रिक्वेस्ट हम सबसे, आप सबसे यही है, जो कमाओ जब लगाने लगो तो एटलीस्ट इतना जरूर रिटर्न आए कि वो हमारे इन्फ्लेशन और डिफॉल्ट रिस्क के इक्वल हो। एटलीस्ट इन्फ्लेशन के इक्वल तो हो। घर में दबा के रखने की पैसे की बात वो पुरानी हो गई, सेफ में रखने की बात पुरानी हो गई। अब तो वो पैसा जो आपको इन्फ्लेशन कवर करके देगा, दैट इज यूजफुल, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ लुक एट द बोथ एंगल्स। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन अगर उस पैसे को सही नहीं लगाएगा आप शिफ्ट कर जाओगे। आप बोलोगे भैया रहने दे, तेरी दुकान में दम नहीं है, इट मींस योर बिजनेस इज नॉट अर्निंग। ये तो मैं खुद लगाता तो मैं कमा लेता। आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, सेफ है, बहुत अच्छी बात है, बट मेक श्योर इन्फ्लेशन रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि 100 रुपए की वैल्यू जो आज आप खरीद सकते हो वो कल को 100 रुपए के बराबर ना हो, एंड देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। सो वी हैव टू चेक आउट कि हमारी थॉट प्रोसेस इसके साथ चल रही है कि नहीं चल रही है। ये इन टाइम वैल्यू के साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। मैं इसके साथ एक हमारे पास सेकंड स्लाइड में इसमें है, इट इंडिकेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, वैल्यू ऑफ अ रुपी इज हायर देन वैल्यू ऑफ अ रुपी टुमारो। हमारे फाइनेंस में जब भी स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले यही चीज सीखते हैं, आज जो 1 रुपए की वैल्यू है वो कल नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। कहता है आज की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और इसी को एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया है दैट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। समबडी सेज यू आज से 1 साल बाद 1 लाख रुपया मिलेगा, डेफिनेटली 1 लाख रुपया साल बाद मिलना है, आज वैल्यू के ऊपर फर्क होगा। मतलब इसमें मैंने जो रिजल्ट निकाला है 90,900, मतलब आज जो 90,900 रुपए की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 lakh आफ्टर 1 year। रेफर्स टू व्हाट? यू कैन बाय समथिंग एट 90,900 रुपीज से, और वो 1 साल बाद आपको कितने से मिलेगी? 1 लाख से। इसीलिए कोई बोलता है ना भैया आज पैसे ले लो और 1 साल बाद बिना ब्याज के दे देना, हम मानते नहीं है, बट हमारे लिए ट्रबल क्या होती है, मांगे कितना, ब्याज कितना लें। फिर बोलते हैं यार तू तो अपना रिलेटिव है, छोड़ यार क्या लेना, बट रिलेटिव के साथ एटलीस्ट उतना तो लें जितना हमारा परचेजिंग पावर का रिस्क है। इसलिए वही से फ्यूचर वैल्यू रेफर्स टू 1 साल बाद जो मिलेगी, डिवाइडेड बाय 1 + r, r रेफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न जो आपको चार्ज करनी होगी, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन प्लस डिफॉल्ट रिस्क। मैंने अजम्पशन लिया 10%, सो 10% का मतलब है कि अगर 1 रुपया आज आप बात कर रहे हो 1 साल बाद मिलेगा तो वैल्यू 90 पैसे के बराबर है, 0.909, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए विद द अमाउंट, सो विल बी टॉकिंग अबाउट 90,900। इसीलिए मैंने नीचे लिखा जस्ट थिंक अबाउट योर इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। पॉइंट टू पॉन्डर, पॉइंट टू थिंक। वो क्या है
कि हमारे जो फाइनेंसेस लगे हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी। कोई हमें बोल दे कि 20 साल बाद मुझे 5 लाख मिलेगा, डू हेल विद दैट 5 लाख, बिकॉज 20 साल बाद उस 5 लाख की वैल्यू अगर आज के 50 के बराबर है, समथिंग वेरी रॉन्ग। वी हैव टू एनालाइज कि होना क्या है। और हमारी एनालिसिस के लिए अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न लेना हो तो आप सिर्फ एक काम करिए, आपकी रिटर्न आप लोगों को कितने बेस्ट के ऊपर दे सकते हो, दैट्स इट। मीन्स इफ 1 लाख इज विद मी, आई कैन लेंड इट टू समबडी, वो बंदा मुझे इंटरेस्ट कितना देगा, बैंक कितना देगा। एक सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% मिलता है, तो वो कहेगा मुझे अगर मैं 5 साल के लिए पार्क कर रहा हूं तो 9.5 मेरा बेसिक है, ये मुझे हर हाल में मिलना चाहिए। This is something which is used into both aspects, corporate entrepreneurship business में भी और हमारी personal life में भी। This is called wealth maximization. Basically wealth is nothing. Wealth refers to market price of a share. एक कंपनी का मार्केट प्राइस कहां तक जाता है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। आप अभी स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे, मैं बात करूंगा इन्वेस्टर की। मुझे पता है यू ऑल आर वंडरफुल एंटरप्रेन्योर्स और आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपके बिजनेस के शेयर्स खरीदने हैं, दैट्स इट। आपको मैं जानता हूं पर्सनली, आपके ऊपर मैं वर्क कर चुका हूं, मींस आई नो योर क्रेडिबिलिटी, योर एबिलिटी, योर मैनेजमेंट, योर टेक्निकल स्किल, एवरीथिंग आई नो। ओनली वन थिंग आई विल डू, आई विल बाय द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, थैंक यू वेरी मच। बाकी घर जाके सो जाऊंगा, आप काम करिए आराम से, मेहनत करिए, सुबह शाम मेहनत करिए, मैं सो रहा हूं, फायदा मुझे भी होगा। क्योंकि जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ग्रो करते करते जब उस बिजनेस की वैल्यू अच्छी हो जाएगी, तो आपके बिजनेस की वैल्यू में मेरा भी हिस्सा है। इट मींस जो शेयर प्राइस मैंने आपका सस्ते में खरीदा, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टॉक अबाउट मार्क जकरबर्ग, याद है द यंगेस्ट, क्या बोलते हैं, बिलियनियर। उसने वो कैसे बिलियनियर बना, ही वेंट ऑन टू इशू द शेयर्स ऑफ द फेसबुक। ओनर था, फेसबुक के शेयर्स को मार्केट में उतार दिया, लोगों ने धड़ल्ले से शेयर्स खरीदे। शेयर्स थे किसके, जकरबर्ग के थे। उसने कुछ हिस्सा रखा, बाकी इक्विटी बेच दी, जो बाकी इक्विटी बेची बदले में प्राइस आया, पैसा आया। वो जो पैसा है, ही इज अ बिलियनियर प्लस द वैल्यू ऑफ द शेयर। अभी मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू सपोज करिए 510 रुपए है, उसके पास 5 लाख शेयर पड़े हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं हंसता होता था कई बार खुद के ऊपर कि मैं हमेशा सोचता था यार वर्ल्ड के टॉप 20 रिच पीपल कैसे काउंट करते हैं, क्या वो हर एक नोट को गिनते हैं? नो, हाउ डू दे गो फॉर टॉप रिचेस्ट पीपल? They evaluate the person with the number of shares he is holding multiplied by the price of the share. माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स डोमिनेटिंग रहा 10 साल के लिए वर्ल्ड की रिचेस्ट की नंबर 1 लिस्ट में। वारेन बफेट साहब उसके पीछे पीछे सेकंड नंबर पे रहे लगातार। कारण वारेन बफेट और बिल गेट्स ने अपने शेयर के प्राइसेस को गिरने नहीं दिया, हमेशा किसके ऊपर फोकस रखा, बढ़ने के ऊपर फोकस रखा। जितना वो प्राइस बढ़ता जाएगा, अब क्वेश्चन आया बढ़ता कैसे है। हम लोग सारों को पता है, एक सिंपल सा फंडामेंटल है हमारी इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई। ज्यादा डिमांड होगी, सप्लाई लिमिटेड है, प्राइस अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हमारी रूटीन लाइफ में होता है। तो जो प्राइस को, डिमांड को बढ़ा सके, इट मींस आई हैव टू टेक दोज डिसीजंस जो डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मतलब डिसीजन कौन से लेने हैं, जिसमें सारे इन्वेस्ट करें, सारों का इंटरेस्ट बने, यार ये कंपनी अच्छी जा रही है, और अगर जितनी ज्यादा अच्छी जाएगी हमें प्रॉफिट हो सकता है, शेयर्स खरीद लो इसके। जितने शेयर्स खरीदेंगे प्राइसेस उतना बढ़ेगा, बिकॉज एवरीबॉडी वुड डिमांड, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड सप्लाई, प्राइस बढ़ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, स्टार्टअप के शेयर को टाइमली परचेज करना है और फिर सो जाना है। मेहनत सब कुछ होगी, आपका शेयर प्राइस अपने आप बढ़ेगा। And you need not to do anything. Yes, you have to keep on having a check. क्या बिजनेस ठीक चल रहा है, कल को नुकसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज टू मेक अस अवेयर कि कल को अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें पता हो, एज हैपेंड विद सत्यम। किसी को क्या पता था कि सत्यम के साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है। सो वी हैव टू बी अ विजिलेंट, थोड़ा सा ध्यान रख के। सो दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्राइस कंपनी का 50 है, 100 शेयर है तो 5000 हो गया। और अच्छा काम करेगी कंपनी, काम रेफर्स टू द डिसीजन। मैं हमेशा फोकस करता हूं, वो टाइम चला गया जब पैसों का अरेंजमेंट करना सिर्फ एक फाइनेंस मैनेजर का काम होता था।
एनरॉन, द वर्ल्ड्स की बोलूंगा बिगेस्ट अकाउंटेंट फर्म, खत्म हो गई। उसके सीएफओ के नीचे जो मैनेजर फाइनेंस था उसने एक डिबैकल कर दिया, गड़बड़ कर दी, और पूरी की पूरी कंपनी शटर डाउन हो गई सिर्फ एक गलती की वजह से। अभी मैं आपके साथ आगे चीजें डिस्कस करूंगा जिसमें एक डिसीजन, चाहे वो कोई भी हो, टॉक अबाउट मारुति सुजुकी, मानेसर प्लांट में उनका जी स्ट्राइक हो गई, एग्जीक्यूटिव मार दिया, ठीक है जी, यूनियन की आपस में गड़बड़ हो गई, दे वर नॉट एबल टू मैनेज। नुकसान किसका हुआ? कंपनी का। 700 करोड़ का नुकसान हुआ ब्रदर्स। एंड 700 करोड़ के नुकसान में जो कंपनी का शेयर, because everybody was thinking that they are not able to manage the strike, how would they manage the market fluctuation? Thank you very much। मतलब सेल करो इसका शेयर, सेल करो मतलब सप्लाई बढ़ेगी, खरीदने वाले नहीं है, प्राइस मार्केट में डाउन आएगा, मतलब आपकी वेल्थ रिड्यूस हो जाएगी, गड़बड़ है भाई। सो यू हैव टू मेक एंड डू केयर ऑल द डिसीजंस ताकि मार्केट का प्राइस कम ना हो, बस यही चीज हमें देखने लायक है। दिस इज समथिंग मार्केट की वैल्यूएशन करना। लुक एट द फिगर, द 1 + k + 1 + k2 1 + k3, k refers to the opportunity cost of capital। आप यहां बैठे हैं तो बाहर चाय की चुस्की नहीं ले पा रहे हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू आर हियर, यू आर नॉट अर्निंग, यू मे गो समवेयर आउटसाइड और उसको लेक्चर दे सकते थे, अर्निंग कर सकते थे। इफ दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost refers to the next foregone opportunity which we have lost। तो that is what which is required। तो आप जो पैसा कमा रहे हो और आने वाले सालों में जो कमाओगे उसको आज के प्राइस पे लेके आना। लेट अस सपोज एक कंपनी बोलती है मैं 1 करोड़ का एक कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही हूँ, मशीन खरीदते हैं, ओके, देखना ये है क्या वो मशीन 1 करोड़ रुपया कमा के दे देगी। और अगर मैं बोलूं कि ओवर द 5 इयर्स ये 20-20 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया या जितना भी बनता है वो कमा के दे देगी और मेरा पैसा पूरा हो जाएगा, इसके लिए मैंने कंपनी में नहीं लगाया। 5वें साल जो मुझे पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू आज के लिए बराबर नहीं होगी। 1 करोड़ कब जा रहा है? आज जा रहा है। आई वॉन्ट टू मेक इट, इसकी वैल्यू आज के सेंस में कितनी है। इट मीन्स डिसीजन, और वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपके पास पैसा किसी और का होता है। टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा डेंजर सिचुएशन क्या है? पैसा किसी और का है, और अगर आपने गलत किया तो उसका पैसा डूब सकता है, वो पैसा विथड्रॉ कर लेगा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है जो बिल्कुल राइट डिसीजन हो। दिस इज समथिंग विच इज द बेसिक स्लाइड। दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द इंटरनेट बिकॉज दिस इज समथिंग विच वाज सूटेबल टू एक्सप्लेन कि ये मैनेजमेंट है क्या। एक साइड में देखिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटी को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, रेफर्स टू पैसा कहां से आएगा। बिजनेस चलाना है तो पैसा लाना है भाई, और पैसे को लाना रेफर्स टू फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब पैसे का अरेंजमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को लगाना कहां है, दैट्स कॉल्ड ब्रिंगिंग द एसेट्स। और वो जो पैसा लगाया वो लगाया इसलिए था कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हो, इसलिए एरो देखिए कहां पे मार्क हो रही है, प्रॉफिट्स की तरफ मार्क हो रही है। और फिर सारे का सारा जो प्रॉफिट कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इज कॉल्ड डिविडेंड। आई विल बी रेफरिंग इट फर्दर, और इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसलिए मैंने बोला मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू, मतलब आपके शेयर प्राइस को कभी भी गिरने नहीं देना। वारेन बफेट के पास जितनी भी कंपनीज थी वो सारी कंपनियों को साल में एक लेटर लिखता था और एक लाइन उसमें बेसिक होती थी, और उसकी एक लाइन में ही सारा का सारा कुछ आ जाता था। हम क्या कहते हैं जी, ओके कंपनी का ये ऑपरेशन ठीक करो, ये एचआर वाला बंदा ठीक नहीं है, ये डिसीजन गलत लिया, ये लिया वो लिया। इट डजंट से एनीथिंग, ही जस्ट यूजेस वन लाइन, लेट नॉट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स गो डाउन, दैट्स इट। लेट नॉट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स गो डाउन, दैट्स सफिशिएंट। वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर क्या है? मार्केट प्राइस विद द नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब किसको नहीं गिरने देना? मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस गिरेगा कब? जब हमारा कोई डिसीजन रॉन्ग होगा। तो मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन हो रॉन्ग नहीं ले सकते आप। मैगी लॉस्ट 700 करोड़, मोर देन 700 करोड़ जस्ट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग कंटेंट और समथिंग विच हैज बीन प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मेरे लिए ये है कि वो एक विवाद में फंस गई, प्राइसेस इमीडिएटली क्या हो गए? डाउन हो गए। अब एक चीज याद रखिएगा, प्राइसेस डाउन हुए तो किसी ने बेचा होगा शेयर,
जिसको नॉलेज थी उसने खरीदा होगा। और मैं हमेशा कहता हूं व्हेन अ डील इज मेड इन द मार्केट समवन इज रॉन्ग, क्योंकि जो बेच रहा है वो ये सोच के बेच रहा है इसके बाद ऊपर, और जो खरीद रहा है वो क्या सोच के खरीद रहा है, ऊपर आएगा। अब देखिए मैगी दोबारा मार्केट में है, और वो जो जिसने सस्ते पे शेयर उठाया अब वो आराम से मल्टीप्लाई करेगा अपने पैसे को। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइमिंग, और हम टाइमिंग कहां बर्बाद करते हैं, फोकसिंग ऑन आर सब्जेक्ट, trying to make the money, not to manage the money which has been earned. I would say have a balance between the two. Making of the money is more important, but side by side spend some time about reading these all things whereby we are talking about managing the money. I think जो मिस्टर सिद्धू है उन्होंने टाइम मल्टीप्लीकेशन की बात की होगी, भी टाइम को मल्टीप्लाई करना है। मैं बात करता हूँ मैनेज करना है। मैनेज रेफर्स टू कि किस तरीके से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। हम सबका फोकस होता है मैक्सिमम कमाने के ऊपर। नाउ 4 डिसीजंस के ऊपर हमारे शेयर प्राइसेस डिपेंड करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग है, वर्किंग कैपिटल है, डिविडेंड है। पहला, हम लोग घर खरीदना हो, बाइक खरीदनी हो, कार खरीदना हो, या फिर कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट खरीदनी हो, हम देखते हैं बेनिफिट क्या होगा। रेपुटेशन में बेनिफिट होगा, अर्निंग में बेनिफिट होगा, या किसी और चीज में बेनिफिट होगा। मैं फाइनेंस वाला हूं, मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा घर मेरी लायबिलिटी है। कारण क्या है, घर ने मेरा पैसा ब्लॉक कर दिया है। कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं उस पैसे को यूज करूं और पैसा कमाऊं, और उस और कमाए हुए पैसे से मैं क्या करूं, घर बनाऊं। बट आई से यू मे टेक दिस रिस्क। अपना घर जरूरी है, कंजर्वेटिव अप्रोच चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि घर की बात करें। मैं कहता हूं इसके अलावा भी तो बहुत पैसा होता है, उसको ही मैनेज कर लें, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। होता गया लोग लोन पे गाड़ियां लेते हैं। I say agreed. It is okay, required, show of reputation, this all is required. But make sure कि उस गाड़ी जो हमने ली है उससे हम इतना रिटर्न जरूर जनरेट कर लें कि उस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और प्लस उससे कुछ प्रॉफिट्स में रहें। होता गया है हम इंस्टॉलमेंट पे लेते, इंस्टॉलमेंट प्लस पेट्रोल, मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट लिया जो पैसा दे नहीं रहा, पैसा ड्रेन आउट हो रहा है मेरा पैसा। आई डोंट से यू डोंट टेक, प्लीज डोंट माइंड इट। ये पर्सनल लाइफ के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं फाइनेंशियल एंगल के साथ जोड़ रहा हूं। रेपुटेशन के लिए सब चीज जरूरी है, हर बार पैसा नहीं देखा जाता। बट आई, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेक श्योर पहली प्रायोरिटी जहां से पैसा आए। जब पैसा प्लस है तो लग्जरी के ऊपर स्पेंड करने में प्रॉब्लम क्या है। वॉरेन बफेट ने क्या किया, शुरू में कमाई के लिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना, दैट्स इट। एक इसमें स्टोरी आती है, छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। देयर वर 2 यंग chaps, young boys, and they were you know सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या सेल्फ एम्प्लॉयड था, गांव था उनका 2-3 किलोमीटर रिवर से, और पानी वहां पर नहीं आता था। तो दीज 2 guys used to fill the buckets from that 2-3 kilometers, and फिर वो गांव में आते थे, 50 पैसे या बकेट, 1 रुपया बकेट बेचते थे। दिन में 15-20 चक्कर लगाए, पैसा कमाया और बकेट्स बेचते रहे। कमाई अच्छी भली थी, यंग थे हमारे जैसे, हम सभी इस टाइम फर्स्ट क्लास एज में हैं, एंड वी कैन अर्न और वर्क जो भी कर सकते हैं, वंडरफुल। एक कहता है यार कल को जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आई कांट कैरी द बकेट्स। नंबर 2, मार्केट में कॉम्पिटिटर भी आ जाएंगे और यंग जनरेशन भी जुड़ जाएगी। नंबर 3, क्या पता इस बिजनेस में कल को प्रॉफिट रहे ना रहे। तो ही गॉट वरीड, कहता नहीं यार, आई नीड टू डू समथिंग टुडे बिकॉज आई एम यंग टुडे। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, एक हाफ जो डे का था वो सप्लाई करता था बकेट्स, पैसा कमाता था। वी ऑल नीड द मनी, हम सभी को पैसे की जरूरत है। सेकेंड हाफ में उसने एक फावड़ा उठाया एंड स्टार्टेड गोइंग फॉर डिगिंग, डिग करना शुरू कर दिया। क्या डिफरेंस ऑफ द फ्रॉम द रिवर टू द विलेज। और दूसरा जब पास करता था तो हंसता था, पागल हो गया है, वेस्ट कर रहा है, पैसे कमा ले, क्योंकि उसने रेट बढ़ा दिया था, बिकॉज ही वॉज द सोल सप्लायर, ही डिड नॉट गॉट वरीड। वो कहता नहीं भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा। जिस दिन उसने पूरी खुदाई कर ली, पाइपलाइन बिछा दी, गांव के एक जगह पे चेयर लगा के बैठ गया और उसने एक ढक्कन लगा दिया बंद करने के लिए। एंड ही सेड 10 पैसे a bucket. Can the boy who was manually lifting these all, can he compete in the? No, there is no way.
क्या उसको कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, जो भी कमाएगा उसका अपना है, बिकॉज ही हैज गॉन ऑन टू चैनलाइज द एफर्ट्स ऑन टू द राइट डायरेक्शन, कि उससे उसको जो रिटर्न है वो आता रहेगा. व्हाट आई मीन टू से आइडेंटिफिकेशन हर चीज की जरूरी है. उसने टाइम को सही जगह में लगाया. अब यही चीज हमारी पर्सनल लाइफ में जरूरी है, कंपनीज भी यही करती हैं. इन्वेस्ट करना है पैसा वहां पर होगा जहां से रिटर्न ज्यादा आएगी, क्योंकि अगर आप रॉन्ग डिसीजन पे पैसा लगाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. फाइनेंसिंग का मतलब पैसा उधार लेना. जब हम लोन लेते हैं तो दो तरह के रेट्स मिलते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. फ्लोटिंग का मतलब होता है मार्केट में चेंज हुआ आपका भी चेंज हो जाएगा, और फिक्स्ड का मतलब फिक्स है. हमें कौन सा अच्छा लगता है? जनरली फिक्स्ड, क्योंकि हम सैलरीड क्लास हैं, हमारा एक बजट होता है, बजट में 20,000 पे हमें पता है कि यार इतना जाएगा. फ्लोटिंग की तरह टेंशन तो नहीं है, कभी बढ़ गया और कभी कम हो गया. माय फ्रेंड एडवाइज्ड एंड वी डिस्कस टुगेदर, मार्केट आने वाले टाइम में ग्रो करेगी कि पीछे जाएगी? ग्रो करेगी. बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. जब एक कंट्री प्रॉस्पेरस होता है तो क्या उसके इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं या बढ़ते हैं? गिरते हैं. तो क्या मुझे फिक्स्ड में लेने का फायदा है? नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा? रेट्स गिरेंगे. तो क्या लेने का फायदा है? फ्लोटिंग लेने का फायदा है. जस्ट थिंक अबाउट, हमने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ एक इकोनॉमी सोची, बिकॉज हम हमारे देश को यंगिस्तान बोलते हैं, रेफर्स टू कि आज की डेट में यंग जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है. छोटे वाले 15 से बिलो वाले भी कम है, बुजुर्ग भी कम है. हम यंगिस्तान में आते हैं बिकॉज हमारे पास लेबर जो वर्किंग जो है, जो वर्किंग पीपल है, पॉपुलेशन है, वो सबसे ज्यादा है. दैट्स व्हाई वी आवर नेशन इज कॉल्ड एज यंगिस्तान. तो लुक एट द एस्पेक्ट कि ग्रो करेगा तो फ्लोटिंग रेट में लेने का फायदा रहेगा, ना कि हमारी थॉट, क्योंकि कंजर्वेटिव है. दैट्स अ फ्लोटिंग के अंदर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें चीट इज अ डिफरेंट थिंग. वो आपकी विजिलेंस के ऊपर डिपेंड करता है. वो भी आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, तभी ये चीजें होती है. आई विल बी शेयरिंग विद यू. इसमें भी कई बैंक्स हैं, वो तो देखिए माल प्रैक्टिसेस बहुत होती हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि पैसा है. मैंने पहले ही बोला, कमाने पे जोर है, मैनेज करने पे नहीं रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट. पैसा लगाना है, जो पैसा शेयर होल्डर का है. सही नहीं लगाया चले जाएंगे, मार्केट से आउट. एग्जाम्पल सत्यम का मैंने आपके साथ शेयर किया, दोबारा शेयर करूंगा. Right project would refer to the one which would give highest rate of return from the available investment projects. For example, investments made by Tata Group in buying new ventures. टाटा वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंपनी थी और इसने कोरस को 2nd लार्जेस्ट स्टील कंपनी को खरीदा था. टाटा की गाड़ियां लोग शायद पसंद ना करते हो, बट चाइना के अंदर जगुआर जो है वो टाटा ने ही परचेज किया हुआ है, एंड लैंड क्रूजर एज वेल. सो जो टाटा ग्रुप की इन्वेस्टमेंट्स है, रतन टाटा ने जब लेफ्ट किया और जब पिक किया था, अब उसमें बहुत कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है. उसने कैसे किया? उसके राइट डिसीजंस. जब वो किसी चीज को पिक करता था तो डिसाइड करता था कहीं पैसा डूब ना जाए, लगाना वर्थवाइल है या नहीं है. और सबसे बिगेस्ट मार्केट में रिस्क तब आया था जब इन्होंने कोरस को खरीदा, एंड दैट वाज ऑल कैश डील. 11.5 मिलियन कैश डील. मार्केट के शेयर प्राइस बढ़ने चाहिए थे. बढ़ने चाहिए का मतलब एक कमजोर ने एक ताकतवर को हरा दिया. रेफर्स टू 7th लार्जेस्ट स्टील मेकर ने 2nd लार्जेस्ट स्टील मेकर को खरीद लिया. बढ़ने चाहिए थे, मार्केट में शेयर प्राइसेस गिर गए. फर्स्ट वीक गिरे रहे, एंड दे ऑल वर वरीड, भाई गिर क्यों गए यार, कमाल हो गई. द फैक्ट वाज कि इट वाज ऑल कैश डील. कहते भाई पैसा कम हो जाएगा तो तुम अपना बिजनेस कैसे चलाओगे. देन ही रेफर्ड, गिव द क्रेडिट पोजीशन, और फिर जाके मार्केट में उसके शेयर प्राइसेस अप हुए. इसको मैं आपके साथ आगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन का हमारे पास एक डिस्कशन है वो करूंगा. तो कहने का मतलब, रॉन्ग डिसीजन मार्केट फुटिंग आपके लिए ट्रबल है, राइट डिसीजन मार्केट फुटिंग यू आर गोइंग वंडरफुल. मतलब मार्केट 1% भी रॉन्ग डिसीजन अफोर्ड नहीं करती है. अब ये कौन है जो अफोर्ड नहीं करते हैं? जो विजिलेंट इन्वेस्टर्स है, जो लोग सही डिसीजन के ऊपर फोकस करते हैं. मैंने आगे बोला, सिमिलरली राइट डिसीजन ने टाटा ग्रुप को बिग कॉन्ग्लोमरेट में कन्वर्ट किया, एक रॉन्ग डिसीजन ने सत्यम को खत्म कर दिया. लुक एट सत्यम्स डिसीजन टू बाय मार्केट्स, माइटस, नाउ सत्यम इज नोन एज टेक महिंद्रा. इसी के साथ जो इन्होंने पॉइंट आउट किया, बैंकिंग सेक्टर,
एक हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007, 8, 9। उस टाइम हमारे बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज मतलब गवर्नमेंट में शिफ्ट करना चाहते थे, और हमारे लिए बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन थी, because we have gone for the right decision if we are into the government sector or we are into the teaching whereby we are getting something which is quite wonderful and handsome salary, and हमें डर नहीं था कि हमें रिट्रेंचमेंट हो जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर में सब प्राइम, ये जो हम इसको नाम देते हैं सब प्राइम लेंडिंग, सब प्राइम लेंडिंग का मतलब है गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स ने अपने 4 पैसे कमाने के लिए उन लोगों को भी लोन दे दिया, दोज वर नॉट वर्थ। और ये चला कहां से? अमेरिका से। और हुआ क्या था कि उन्होंने लोन उनको दिया जो वापस नहीं लौटा सकते थे, होम लोन था, उन्होंने कहा लौटाओ वापस, नहीं तो हम आपका होम रख लेंगे, वो कहते रख लो। एवरीबडी स्टार्टेड डिफॉल्टिंग। हुआ क्या? होम की ही सप्लाई बढ़ गई, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो जो होम 40 लाख का 50 लाख का उस वक्त लोन पे खरीदा होगा, बैंक ने सिक्योरिटी रख ली, वो मार्केट में 20 लाख का भी बिकने को तैयार नहीं है। जैसे हमारी रियल एस्टेट मार्केट में स्लम्प आया हुआ है। एंड इट ऑल वेंट, बैंक्स को बोला भैया अपने पैसे कवर कर लो, तुमने सिक्योरिटी रखी थी, घर रखा था, टेक इट, नाउ लीव अस। इंडियन सेक्टर उस वक्त, इंडियन कंजर्वेटिव बैंकिंग को उस वक्त बहुत अप्रिशिएट किया गया। उससे पहले इंडियन कंजर्वेटिव बैंकिंग को बहुत बुरा कहा जाता था। और मैं बोलता होता हूं हमारे बैंकर ऐसे हैं जैसे अपने घर का पैसा उधार दे रहे हो, ऐसे डील करते हैं, ट्रीटमेंट ऐसे होता है। वो कहते हैं कि नहीं दैट वाज फाइन, अदरवाइज हम भी बहुत बड़ी चपेट में होते। और वो सब प्राइम लेंडिंग में इतना ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो जो बैंक्स ने पैसा अरेंज किया था वो घर का उनका अपना नहीं था, दे हैव टेकन इट फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। अब यूरोपियन बैंक्स अमेरिकन बैंक से कहते भैया पैसा वापस करो, रिटर्न दो, रिटर्न तो आगे से आनी थी, आगे वाले डिफॉल्ट हो गए। किसने पे करना है? बैंक्स ने पे करना है। बैंक्स का इसका मतलब सारी इनकम तो गई, डिफॉल्ट का डर साथ में जुड़ गया। इंश्योरेंस, उसमें 150 years old GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, गॉट बैंकरप्टेड, फेल हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि एक रॉन्ग डिसीजन, क्या सब प्राइम लेंडिंग मतलब एक गलत बंदे को लोन देना, पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया। यू कैन जस्ट चेक आउट, लोन देना मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा दे रहे हो। इसीलिए हमारे बैंकर जब पैसा देते हैं अपना समझ के देते हैं तो वो कई बार ठीक भी लगता है कि भैया कोई बात नहीं, यू आर राइटिंग फिल्टरिंग अस, एटलीस्ट मार्केट और हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल ठीक चलेगी। सेकंड आ गया पैसा लाएं कहां से, बिकॉज किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है पैसे को लेना। जो मैंने आपको फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट के ऊपर बात की थी उसी के ऊपर आ रहा हूं। पैसा वो लाना है जो सस्ता हो, तभी हम रिटर्न की ज्यादा बात कर सकते हैं। मैंने 12% पे किसी से पैसा उधार लिया, कमा रहा हूं 14%, आई वुड बी इन डेंजर। डेंजर का मतलब सिर्फ 2% दूर हूं, किसी भी परसेंट 2% ऊपर नीचे हो सकता है। आई वॉन्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ ह्यूज डिस्टेंस, मतलब 10% पे लूं, 25% कमाऊं, 50% कमाऊं, तो ही मैं सेफ हूं। इसलिए दोनों तरफ से हम एफर्ट्स मारते हैं। 40% कमाना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 50% के लिए भी कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मतलब वहां लगाऊंगा जहां ज्यादा रिटर्न मिले, एक रीजन। दूसरा बोलूंगा मुझे कम से कम रेट वाला मिले, जहां से मुझे ऐसा पैसा मिले जो सबसे सस्ता हो। और अगर मार्केट में उस वक्त सस्ता नहीं है, चेकआउट कि आप फ्लोटिंग रेट पे ले रहे हो, आज सस्ता नहीं है कल को सस्ता हो जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा फ्लोटिंग रेट, फिक्स्ड पे ले लो, बट एक कंडीशन लगा देना, दैट कंडीशन इज एज एंड व्हेन आई वुड लाइक टू पे यू बैक आई एम अलाउड। जिस दिन मार्केट गिरी सस्ते से उठाओ महंगे वाले को, बिकॉज एफर्ट इज दोनों लेवल को एफर्ट करना है। अगर आपने रॉन्ग किया, मैं भी 50 रुपए कमा रहा हूं, मेरे कॉम्पिटिटर भी 50 कमा रहा है, मैं 15 रुपए एज ए कॉस्ट दे रहा हूं, वो 10 रुपए एज ए कॉस्ट दे रहा है, मैं उसका मुकाबला कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सही डिसीजन है। ऑपरेटिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, वो तो सब बाद की बातें हैं, फाइनेंशियल डिसीजन ही सही नहीं है, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट है वो क्या है, महंगा पड़ रहा है मुझे, तो 5 रुपए में दूर हो गया। इट वुड डिपेंड ऑन, सो फैक्टर कौन से हैं, कहता है आपके पास शेयर्स हैं, आप मतलब जनता से पैसा ले सकते हो या उधार ले सकते हो। जनता से उतना ही ले सकते हैं जितनी जनता दे सकती है, रेफर्स टू वो जितना आपके ऊपर बिलीव करेगी, उससे ज्यादा जनता आपको पैसा नहीं देगी। इसीलिए मार्केट में वही शेयर आजकल आते हैं जिनकी एक रेपुटेशन होती है, और वही बहुत ज्यादा बिकते हैं। फेसबुक सोल्ड लाइक एनीथिंग,
क्यों? एवरीबॉडी वाज नोइंग सोशल सेटअप है, सोशल मार्केट है और ये बहुत ज्यादा सेल होगा। दूसरा, उधार ले लो। उधार से हमारे इंडिया में फायदा है क्योंकि एक हमारा टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है, क्योंकि मेरा अपना पैसा है तो गवर्नमेंट मुझे बोलती है 1 लाख रुपया कमाया तो भैया लेट अस सपोज 50% रेट ऑफ टैक्स है तो 50,000 दे दो, तो मुझे बचा कितना? 50,000। मैंने अपना पैसा नहीं लगाया, 2 लाख रुपया लोन ले लिया 10% पे, तो गवर्नमेंट मुझे अलाउ करती है 2 लाख का 10% 20,000 इज अलाउड एज अ डिडक्ट एज अ टैक्स एज अ डिडक्शन। तो 80,000 के ऊपर टैक्स लगा 40,000। देखिए मैंने 5 लगाया, कमा रहा था 50, मैंने 2 उधार ले लिया, 3 लगाया, कमा रहा हूं 40,000। यू कैन जस्ट चेक आउट, परसेंटेज बढ़ गया क्योंकि मुझे टैक्स का बेनिफिट मिला। जब मैं उधार लेता हूं तो मुझे टैक्स डिडक्टिबिलिटी मिलती है, अपना पैसा लगाता हूं तो टैक्स की डिडक्टिबिलिटी नहीं मिलती है। रेफर्स टू कि आपको चेकआउट करना है कि आपको सस्ता कौन सा लोन मिल रहा है। फर्स्ट इज पैसा कहां से आ रहा है, सस्ता होना चाहिए। दूसरा, लगा कहां रहे हो, मैक्सिमम आउटपुट देने वाला होना चाहिए। गलत डिसीजन लिया, अब इसमें हम बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। आज कोई चीज हमें ज्यादा रिटर्न दे रही है, मैं बोलूं आपको 50 लाख रुपया लगाते हैं और 5वें साल जाके ये मुझे 5 लाख या 10 लाख देगा, और पहले 5 लाख 1-1 लाख देगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते जाएंगे ना, अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, और अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी हमें उतना ही डर होगा, और डर होगा तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। तो हमेशा फोकस किसके ऊपर करते हैं? जो पैसा जल्दी जल्दी वापिस आ जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिक्विडिटी डिसीजन। पैसे का अरेंजमेंट इज ओके, पैसे को लगाना इज ओके, बट अगर पैसा डे टू डे ऑपरेशन के लिए नहीं होगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा घर में या एटीएम में रखते हैं, दूध वाला भी है, घर के खर्चे भी हैं, रूटीन के एक्सपेंसेस भी हैं, सर्दियों के कपड़े भी हैं, व्हाटएवर, एवरीथिंग यू पे ऑफ। व्हाई वी टॉक अबाउट, अगर दूध वाले को पैसा नहीं देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू द मिल्क। मिल्क तो चलो ठीक है, नहीं देगा चल जाएगा, रेपुटेशन गिर जाएगी, और रेपुटेशन एक बार गिर गई दोबारा नहीं बनती है। ऐसा ही कुछ किंगफिशर के साथ हुआ। किंगफिशर का मार्केट में न्यूज कब आया? जब वो अपने पायलट्स को सैलरी नहीं दी पाई, यही सुना था हम सबने। और अदरवाइज हमारे लिए जहाज पे जाना है, एरोप्लेन पे जाना है, तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट एयरलाइन होती थी? किंगफिशर एयरलाइन। इवन द कैबिन क्रू स्टाफ जो जॉब करने के लिए मार्केट में आता था, उसकी पहली ड्रीम होती थी एयरलाइन किंगफिशर एयरलाइन। एक टाइम आया एवरीबॉडी स्टार्टेड लिविंग, क्यों? क्योंकि किंगफिशर सैलरी नहीं पे कर पाया। कहां गया पैसा? सैलरी नहीं पे कर पाया, इसका मतलब उसने लिक्विडिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। और जैसे ही वो मार्केट में न्यूज गई, लोगों ने कहा ओ माय गॉड, इस कंपनी के पास तो सैलरी पे करने के लिए भी पैसा नहीं है, इसका मतलब है कल को कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। दे स्टार्टेड सेलिंग द शेयर, सेल होने शुरू हो गए। भैया मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ गई, खरीदने वाले कहते हैं अभी रुक जाओ, प्राइस क्या होना शुरू हो गया? डाउन। मार्केट वैल्यू गिरी नहीं, कंपनी खत्म। यू कैन ऑल आइडेंटिफाई कि मार्केट में उसकी आज वैल्यू नहीं है। और मैं इसके साथ फोकस करता हूं कि दो तरह का इसके हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है, एज शोन इन द पीपीटी। एक है जनरेशन ऑफ इनकम, एक है मेंटेनेंस ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम रेफर्स टू मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जनरेट करना। मशीन लगाऊंगा तो जनरेट होगा, मतलब मैंने एयर बस खरीदा जनरेशन के लिए, ज्यादा एयर बस होंगे तो ज्यादा मैं लोगों को ले जा सकूंगा, इनकम बढ़ेगी, जनरेशन ऑफ इनकम। मेंटेनेंस ऑफ इनकम मतलब उस एयर बस को चलाने के लिए और उसके बाकी खर्चों के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। अब अगर किंगफिशर ने वो जो पैसा सारा एयर बस को खरीदने पे लगा दिया और पे ऑफ करने के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए नहीं रखा, तो आप सब जानते हैं कि उस एयर बस का कोई फायदा नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी डिसीजन। एंड सिमिलर इज विद आवर लाइफ। लिक्विडिटी, अब इसमें एक और सवाल पैदा होता है, ज्यादा लिक्विडिटी भी डेंजरस है। अब कहते हैं चलो एक्स्ट्रा रख लेते हैं, वो जो एक्स्ट्रा रखा उसने जनरेशन ऑफ इनकम को स्टॉप कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कितना रखें? इसके लिए मैनेजमेंट, थॉट प्रोसेस, प्लान करना पड़ेगा। फिर 10% कंटीजेंसी का रख लीजिए कि ओके इतना कंटीजेंसी हो सकती है, बाकी हम सारा का सारा जो हम बोलते हैं ना प्रिकॉशनरी मोटिव, हम कुछ पैसा अपने बैंक्स में प्रिकॉशन के लिए रखते हैं, उस मोटिव से रख लीजिए। बट दैट मस्ट बी इतना, इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा होगा इसका मतलब वो नुकसान कर रहा है। आपकी पॉकेट्स में 5,000 है, जरूरत ही नहीं है।
1000 2000 सफिशिएंट है, 3000 एटीएम में रखिए, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। 3000 का 4% साल का 100 या 12 रुपए, 120 रुपए बनता है। कोटक 6% दे रहा है, सो यू कैन जस्ट चेक आउट, 180 रुपए हो गया। डिपेंड्स अपॉन बॉदरेशन की बात है, और पैसा पॉकेट में रखना भी डेंजरस हो जाता है आज की डेट में। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, आई वुड एक्सक्यूज अपोलॉजी फ्रॉम द लेडीज, गोल्ड के ऊपर पैसा लगाते हैं और फिर गोल्ड को कहाँ रख देते हैं, सेफ में। अगर तो प्राइस बढ़ रहा है फिर ठीक है, अगर 26 खरीदा 26 ही है और सेफ में पड़ा है, नुकसान है। मैंने पहले अपॉलॉजी मांगी है, आई विल नॉट गो फर्दर। फाइनेंस के एंगल से आई एम मूविंग बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज हमारे लिए फाइनेंस, मैं हमेशा बोलता हूं, बोल के पैसा कमा रहा हूं भाई, आप भी बोल के ही कमाते हैं। हर कोई बंदा कोई ना कोई स्किल करके कमाता है, तो जब कमाया है तो मैनेज करने में इसमें शर्म क्या है। एंड लिक्विडिटी में मैंने आपसे बात की, टाटा बोट कोरस कैश डील थी, प्राइस गिर गया, किंगफिशर एयरलाइन मार्केट से गायब हो गई। दीज आर ऑल लिक्विडिटी डिसीजंस। अब इंपॉर्टेंट आता है जितना कमाया कितना शेयर होल्डर को दे दें, क्योंकि शेयर होल्डर जो आपके साथ शेयर्स उसने खरीदे हैं वो दो सोच के साथ आया होगा। पहला, या तो वो रेगुलर इनकम मांगता होगा या वो कैपिटल गेन मांगता होगा। कैपिटल गेन रेफर्स टू आज 10 रुपए का खरीदा, 10 साल बाद 100 रुपए का है, कहता 90 रुपए का फायदा हो गया। कैपिटल गेन बोलते हैं इसको। कैपिटल गेन, आपने, आपके पास एक घर है, घर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा, आफ्टर 5 इयर्स यू सोल्ड इट, तो जो डिफरेंस कमाया वो आपका कैपिटल गेन है। तो शेयर जो आपने खरीदा उसके ऊपर जो आपका कैपिटल गेन है। बट कुछ लोग कहते हैं डिविडेंड भी मिलना चाहिए। डिविडेंड रेफर्स टू जो कमाया उसका कुछ हिस्सा हमें हर साल मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर हमेशा डिबेट रहती है। और इसलिए हमने कहा इट मींस दैट पार्ट ऑफ अर्निंग्स व्हिच हैज बीन पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स वुड बी कॉल्ड डिविडेंड। अब मैं लास्ट 2 लाइंस, दिस डिसीजन वुड कैरी ट्विन इफेक्ट्स। पैसा बांट दिया, कंपनी वुड हैव लो कैश अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। पैसा नहीं बांटा, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टिंग रेगुलर इनकम में सेल योर शेयर्स, ब्रिंगिंग योर शेयर्स वैल्यू डाउन। दोनों के बीच में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इतना जरूर बांटे so that they stay with you, but इतना भी ना बांटे कि your projects are going to get affected। इसमें एक हमारे पास बहुत अच्छी कोट है, लास्ट लाइन पढ़िए। The important is a bird is yours when it is in, refers to पक्षी तब तक ही आपका है जब तक आपके हाथ में है या आपके कंट्रोल में है। The moment you throw, उड़ गया, आपका नहीं है। मतलब जो पैसा मिल गया वही पैसा आपका है। आपने सत्यम को देखा ही है। हम लोग कहें कि रेगुलर इनकम नहीं लेनी है, हमने क्या करना है, वेट करना है कैपिटल गेन, क्या पता कब वो बर्ड उड़ जाए। बट इसके साथ एक अटैचमेंट भी है, ऊपर वाली लाइन पढ़िए। इफ ग्रोइंग कंपनी नो मैटर ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोइंग रेफर्स टू एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ज्यादा गुड एस्पेक्ट के साथ मार्केट में है और आपको पता है ये ग्रो करेगी। मैं हमेशा बोलता होता हूं, एक ऐसी मार्केट है जो कभी नहीं गिरती, फार्मास्यूटिकल। अगर तो खुशी है तो लोगों का खुशी से बीपी बढ़ जाता है, मतलब पैसा ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। फिर हम कॉस्मेटिक्स भी ज्यादा खरीदते हैं, थोड़ा बहुत सेहत के ऊपर भी लगा लेते हैं, वैसे ही क्रीम खरीद लेंगे। मतलब एक्सेस ऑफ मनी, देन ऑल्सो फार्मास्यूटिकल का हाई प्रॉफिट है। अगर पैसा कम है तो वैसे तो फिर बीमारियां तो है ही है, तो फिर तो फार्मास्यूटिकल ने फिर भी चलना है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इंपैक्ट हमेशा ऐसे ही रहता है। तो कहता है अगर सैचुरेटेड कंपनी है तो डिविडेंड बांट दीजिए। दैट्स वाई एग्जांपल है 90s में माइक्रोसॉफ्ट ने लगातार 5 साल कोई डिविडेंड नहीं दिया, बट किसी ने शेयर नहीं बेचा। हर किसी को पता था, क्योंकि 90s के अंदर अगर आपको पता हो टेक्निकल का जमाना था, गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रही थी और हर तरह से आईटी एंड सॉफ्टवेयर, दैट्स वाई उनके प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहे। बट एक ऐसा लेवल भी आता है कि अगर आपने सही टाइम पे प्राइसेस शेयर डिविडेंड नहीं बांटे तो आपके शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आर देयर। व्हाट आई वांट टू सिंथेसाइज, जो फाइनेंस है उसमें सिर्फ 4 ही डिसीजन हैं, और 4 डिसीजन अगर मैं पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ूं, कॉर्पोरेट लाइफ के साथ मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपका पैसा कहां लग रहा है, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। पैसा कहां से आ रहा है, दैट्स कॉल्ड फाइनेंसिंग। पैसा रूटीन अफेयर्स के लिए कितना रखा है, क्योंकि ज्यादा रखोगे जनरेशन ऑफ इनकम खत्म है, कम रखोगे तो आपके लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। चौथा,
पैसे का डिविडेंड कितना बांटा, डिविडेंड रेफर्स टू कंजम्पशन पे कितना लगाया। क्योंकि जितना आपने, मैंने क्या बोला, अगर आपने ज्यादा पॉइंट पैसा बांट, देखिए इफ डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी वुड हैव लो कैश अवेलेबिलिटी, मतलब क्या है, अपना पैसा निकाल के कंजम्पशन पे लगा दिया तो हमारे पास फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं रहेगा। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बात आपके साथ शेयर करता हूं। फाइनेंस के मामले में मैं आपसे बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास सैलरी आती है सो वी ट्राई टू कीप द मनी असाइड। कैसे असाइड रखते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस इतना, अदर एक्सपेंसेस इतना, फ्यूचर के लिए इतना, फ्यूचर रेफर्स टू लेटर ऑन, मतलब पहले सारे खर्चे, फिर कुछ बच जाएगा तो क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे। मतलब हमारे लिए सेविंग्स का जो रेफरेंस है वो एंड में आता है। और रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है पैसा ज्यादा हो तो भी एडजस्टमेंट ही होती है, कम हो तो भी एडजस्टमेंट ही होती है। इसलिए सबसे पहले पे टू योरसेल्फ। पैसा आया, सैलरी आई, पहले सेविंग्स कर लो, फिर बोलो भैया ये अमाउंट है, इस अमाउंट में हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। द रीजन बिहाइंड, बिकॉज इससे आपका फ्यूचर सेफ हो रहा है। But I'm not saying do not adjust with your present, with your today's consumption. Go ahead, but at least we should have a habit of giving it a priority. और वो प्रायोरिटी कब होगा, 1000 रखें, 2000 रखें, हम नहीं कह रहे 5000 रखो, 10,000 रखो, जितना चलता उतना रखो, बट रखो तो सही, और किस लेवल पे, नंबर 1 पे। That's what which is important. I hope we have been able to go through, and this is all from my sides. I think आप लोगों ने enjoy करा होगा। Your questions are most welcome. फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ जी हाँ जी। हेलो सर, इट्स फ्रॉम धौलपुर सर। हाँ जी सर, इज देयर एनी मेथड ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर एम्प्लॉय लाइक वर्कर्स? हाँ जी हाँ जी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। और आप उसको अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। और इसके लिए सब कुछ नहीं करना, आई वुड एडवाइज यू, सिर्फ एक एमफी साइट है, AMFI, एमफी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सारी कंपनियों के सारे सिप की परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। बस आइडेंटिफाई कर लीजिए किसकी ज्यादा रिटर्न है और उसके ऊपर सिप लगा दीजिए। अब सिप लगाने का एक और आपके साथ ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं पैसा लगाना चाहता हूं, किस लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है या टैक्स सेविंग के लिए लगाना है। तो टैक्स सेविंग का सिप अलग है, लॉन्ग टर्म का सिप अलग है, रेगुलर इनकम के लिए सिप अलग है, हर चीज के लिए अवेलेबिलिटी है। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी सिप एमपी के पास से अप्रूवल के बिना नहीं आती है और इनका पैसा मार्केट में लगता है, बस इतना याद रखिएगा। मार्केट में लगने का मतलब है मार्केट रिस्क, अगर मार्केट गिरी तो भी आपकी, मार्केट चढ़ी तो भी आपकी, इसमें बस ये रिस्क आपको साथ रहेगा। बट लेकिन परंतु किंतु ओवर द पीरियड हमेशा आपको ग्रोथ ही मिलेगी। हाँ जी, थैंक यू सर। प्लीज सर। हाँ जी। दो इन्वेस्टमेंट ये है, नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 80 ईयर का प्लान जी, every year I have to invest 35,000. how much you are getting after 6 years? After 6 years, just double of sum. नहीं, सम अश्योर्ड कितना है? 3.60। पहले 6 इयर्स के डाउन द लाइन को इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कंपेयर करिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप दे रहे हो हर साल 30, तो जो आपने दूसरे साल 30 दिया उसकी आज वैल्यू 28 हो सकती है, जो तीसरे साल 30 देंगे उसकी वैल्यू कुछ कम होगी। टोटल करें कितना आपकी तरफ से जा रहा है इन टूडेज टर्म, जो आपको 360 मिलेगा आफ्टर 6 इयर्स। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास मोबाइल्स हैं और उसमें कैलकुलेटर चलता है तो छोटा सा तरीका आपको बता देता हूं। कुछ मत करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लीजिए भी मैं कितने पे इसे ब्याज पे दे सकता हूं। मैं इसे कॉमन मानता हूं 10%। अपने मोबाइल पे सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेटर खोल के करिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 9.909। वेट हियर, होल्ड ऑन। मेरे एग्जाम्पल पे 1 लाख रुपए का 90,900 बनाया था, 0.909 को 2 से 0 लगा दीजिए, 90,900 हो गया। दोबारा से इक्वल प्रेस करके देखिए, कैलकुलेटर चलता है आपका, 0.826। मतलब क्या है, दूसरे साल वाला जो लाख रुपया उसकी वैल्यू कितनी है आज, 82,600। ऐसे चलते जाइए,
6 इयर्स तक चले जाइए, जितना पैसा दिया उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लीजिए, 360, 6 साल का निकालना जरा, 2 बार इक्वल प्रेस करके आप। नहीं, कईयों का चलता है, कईयों का चलता है। नहीं नहीं, बाकी इस पे नॉर्मल मोबाइल्स पे भी चलता है, बस किसी में वो चीज ना हो। 6 इयर्स बाद प्रेस करिए इक्वल, कितना आता है? इसका मतलब समझिए अब आप, 0.564 का मतलब है 6 साल बाद जो 1 रुपया मिलेगा उसकी आज वैल्यू 56 पैसे है। बस सीधा सीधा फंडा, 360 मल्टीप्लाइड बाय 56 पैसे, देख लीजिए कितना पैसा बनता है। बस फिर तो वो जो आपको लुक्रेटिव ऑफर के नाम पे जो दे रहा है वो सिर्फ हमें बेफूल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें फाइनेंस के फंडामेंटल्स नहीं पता। बट ऑब्वियस, अब रिस्क लेना है तो रिस्क कैसा है? अगर तो आपको रिस्क है हेल्थ का और क्या बोलते हैं लाइफ का, तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए। तो टर्म इंश्योरेंस इज सेपरेट दीज डेज, और जो आपका रिटर्न वाला इंश्योरेंस वो सेपरेट है। क्योंकि पहले क्या होता था, कॉम्बो प्लान आते थे, कॉम्बो प्लान को आज सेपरेट कर लीजिए। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सेपरेट रखिए, 15,000 में 1 करोड़ का मिल जाता है मेरे ख्याल में, 50 लाख का तो है ही है मिनिमम। LIC 16,000 समथिंग में आपको 1 करोड़ 50 लाख का देती है। इसी तरह रिटर्न वाले को अलग रखिए। दैट इज इमटेरियल टू मी। मैं 15,000 लगाऊंगा, 50,000 लूंगा, 50 लाख लूंगा, और रिटर्न वाले को फोकस करूंगा सिर्फ रिटर्न के ऊपर। देखिए मिक्स नहीं करना, बस मेडिकल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए अलग है, टर्म के लिए टर्म ले लीजिए, और उसके लिए रिटर्न के लिए रिटर्न। क्योंकि जब आप रिटर्न के लिए लेंगे तो आपके पास ऑफर्स बहुत हैं, म्यूचुअल फंड में लगाइए, शेयर्स में लगाइए, कहीं और लगाइए। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कहता होता हूँ, मैच ढूंढना हो ना, खानदान से लेकर के, लड़के से लेकर के, लोकेलिटी से लेकर के पूरा शहर छानते हैं, तब सही मैच की बात करते हैं। क्योंकि जिंदगी बितानी है, वो पैसा जिसके लिए जिंदगी लगा रहे हैं, काइंडली उतनी मेहनत कर लीजिए। ये पैसा कहाँ लग रहा है, कंपनी क्या करती है, कंपनी को चलाने वाला कौन है, वर्कर्स कौन है, किस किस में ये काम करती है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, हम छोड़ देते हैं, हमारे मतलब का नहीं है। मुझे लगता है यही तो चीज है जो हमारे मतलब की है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाकी तो मीन्स है, डिपेंड्स अपॉन चॉइस क्या है। मैं हमेशा मानता हूं कि मैंने पैसा लगाना है, मुझे चाहिए क्या, मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो मैं SIP लगाऊंगा, एक पीरियड के लिए रिटर्न मांगूंगा। और अगर हाँ, अब देखिए वापस निकाल लिया तो प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म वाले कम होंगे। आप प्रॉफिट्स चाहते हो, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहते हो, तो आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाओ। गुरु मूवी देखी है? पैरालिसिस का अटैक था अभिषेक बच्चन को, स्टेयर्स चढ़ रहा था, एक भाई उसको मिलता है बुजुर्ग, वो बोलता है गुरु आपको कुछ नहीं होगा, आपके शेयर्स को बेच के मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी की है, और तीसरी बेटी की भी इंशाअल्लाह शादी कर लूंगा। रेफर्स टू व्हाट? आप छूट के आओगे, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, शेयर प्राइस हाई जाएंगे। मैंने जो खरीदे थे आपके शेयर, उनके प्राइस इतने बढ़ गए कि 2 बेटियों की शादी करने के बाद भी शेयर्स बचे हुए हैं, ये भी बेटी की शादी हो जाएगी, आप वापिस आओ, शेयर प्राइस बढ़ाओ, इसको बेच के भी मैं तीसरी बेटी की शादी कर लूं। लॉन्ग टर्म। जी। Yes, sir. One question from both person. देखिए, जो हम कैलेंडर एनोमलीज की बात करेंगे, इसके ऊपर ना हमने काफी एक्सटेंसिव वर्क किया है, बट उसमें एक चीज निकल के आती है, ओवर द पीरियड ना मार्केट एवरेज कर देती है, तो इसलिए कभी कम कभी ज्यादा एनोमली खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा कहूंगा 30th को जाके कराओ, क्योंकि आपके पास 29 दिन के लिए क्रेडिट पड़ा है। किसी को दिखा के मोबाइल में देखो मेरे पास इतना पैसा है, आप उधार ले सकते हो, 30 को निकल गया क्या फर्क पड़ता है। मतलब फॉर द टाइमिंग यू कैन मेक अरेंजमेंट्स। सर, Slim sir. हाँ जी Sir, it is a question whether the PPF is more safe than SIF or SIP. देखिए, अब बात करेंगे सेफ्टी की, 2 चीजें जरूरी फोकस करनी है। आप बात करेंगे सेफ्टी की तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो सेफ ही सेफ है, बट एक चीज याद रखिए, मैंने 2 चीजों को बोला, रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क का एलिमेंट। अगर आप डिफॉल्ट रिस्क नील चाहते हैं तो आपको सिर्फ इन्फ्लेशन का बेनिफिट होगा, और इन्फ्लेशन का बेनिफिट रेफर्स टू 5-6%, 7%। और अगर आप बाहर जाएंगे, जैसे सिप में चले गए, तो सिप में क्या जा रहा है, डिफॉल्ट का रिस्क है। हायर द रिस्क एलिमेंट हायर द रिटर्न, इसलिए जितना जितना डिफॉल्ट का रिस्क लेना की आपकी कैपेसिटी है। इसलिए मैं बोलता हूं तो हमेशा, जब पैसा इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करो शुरू में वो पैसा लगाओ जो एक्स्ट्रा है,
घर वाला नहीं। हमारे लोग शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं। और हमारी स्टॉक मार्केट में एक बहुत बढ़िया मार्केट में एक सेइंग प्रचलित है, कहता है अगर आपने मार्केट में पैसा लगाया और कमाई की तो आपकी कोठी घर आपके पास है, याद रखिएगा, सिर्फ उसमें एसी लगते हैं। और जिस दिन आप मार्केट में से लूज करोगे कोठी बिकेगी विद एसी। कारण क्या होता है? लालच आ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप सिप लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, पहले इन्वेस्टमेंट करिए, सिप लगाइए, शेयर्स में मत जाइए। हम लोग अपने फील्ड के अपने माहिर हैं, तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि वहां लगाएं जहां सेफ हो। अभी हमारी एजुकेशन फाइनेंस की नहीं है, सिप लगाइए, म्यूचुअल फंड लगाइए, सेफ्टी की तरफ जाइए। कोशिश करें, आप जैसे कह रहे हैं पीपीएफ गवर्नमेंट वाला, वहां लगा लीजिए। जब वो कुछ हो गया, अच्छा अमाउंट हो गया, ठीक है, फिर मूव कर दीजिए सिप की तरफ। फिर थोड़ा सा और अच्छा हो गया, सिप में भी आ गए, फिर थोड़ा और रिस्की की तरफ चले जाइए। और बात आ जाती है इन्वेस्टर की। मैं बोलूंगा इसमें सबसे बढ़िया क्या है फाइनेंस की, आप नॉलेज लीजिए। 1-2 साल अपने इन्वेस्ट फाइनेंस पे करिए। जैसे उसने एक वो बनाई थी ना, क्या बोलते हैं, पाइपलाइन बिछाई थी। आपकी पाइपलाइन है फाइनेंस की किताबें, उसको पढ़ के कंपनी को एनालिसिस करो। बिल गेट्स, वारेन बफेट के घर, उससे मीटिंग कभी पसंद नहीं करता था। उसने कहा कि लेट्स मीट वारेन बफेट। ऐसा क्या है उस बंदे में? क्योंकि वारेन बफेट के बारे में मशहूर है, वर्ल्ड का रिचेस्ट, सिर्फ 2 कमरों का घर, कार भी पुरानी, उसके घर में कोई इंटरनेट नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर्स हैं और सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स हैं। कहता है ऐसा कैसा बंदा है? वो कहता है सिर्फ ओके। उसने अपने स्टाफ को बोला 15 मिनट मिलेंगे और फिर मैं आ जाऊंगा, रेडी रखना। अंदर तो घुस गया भाई साहब, 3 घंटे बाद निकला। और उसके बाद बोलता है ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, सच अ वाइज पर्सनैलिटी। कारण क्या था? क्योंकि वो हमेशा एक चीज बोलता था, उसके कोट्स, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। और इसलिए अगर पैसा कमाना है, मेहनत जैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मैनेज के लिए भी करिए। उसके लिए आज 1-2 साल धीरे धीरे पढ़िए, नॉलेज लीजिए, फिर सामने वाले से क्वेश्चन करिए। मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आता है, मैं उसको पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं क्या भाई ये रेट है, कंपेयर कर। वो कहेगा जी इतना तो मुझे पता नहीं है। मैं बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच, मैं इंटरनेट से अपने आप ले लूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ जी प्लीज सर। हाँ जी, एमपीएस रेफर्स टू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। एनपीएस, यू आर टॉकिंग अबाउट पेंशन स्कीम। सो पेंशन स्कीम के अंदर फिर आपका सेफ्टी आ गया। ये एनपीएस हम वहां पे बात करते हैं जो आपका पैसा लगाएंगे, आज सिर्फ आउटफ्लो है। आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद आपको एक फिक्स रिटर्न आना है एज अ काइंड ऑफ पेंशन के रूप में। अब डिपेंड अपॉन जो लोग अपने फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर सकते, रेगुलर इनकम फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, उनके लिए एनपीएस बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैंने, जैसे म्यूचुअल फंड है वैसे एनपीएस है। होता क्या है, म्यूचुअल फंड में भी हम अपना पैसा किसी को दे देते हैं, वो मार्केट में लगाता है, हमें रिटर्न दे देता है। एनपीएस में भी क्या हो रहा है, हम अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, वो एक्सपर्ट है, वो मार्केट में लगा रहा है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको क्या है, इवैल्यूएशन होता है। एनपीएस में क्या है, आपको रिटर्न कब आना है, आफ्टर 20 ईयर्स आना है। आपको जो पेंशन मिलेगा वो एक टाइम के बाद मिलेगा। तो दोनों में वो फर्क है। और मैं मानता हूं किसी चीज में आज पैसा लगाओ, इवैल्यूएशन जरूर करो, पैसा कहां लग रहा है। क्या पता एनपीएस वाले ने जहां पैसा लगाया वो ठीक ना लगाया हो। यूटीआई म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए थे, आपको भी पता होगा कितना बड़ा स्कैम हुआ था। तो फिर कहने का मेरा मतलब है, पैसा जो बंदा जहां लगा रहा है, मेक श्योर वो सही जगह लगा रहा हो। अब हमें पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन आ गया ना, पता कैसे चलेगा? यही तो आपका रिस्क और रिटर्न का एलिमेंट है। हाँ, तो बेटर यही है, जिसके सुने हुए उसमें लगा दीजिए। उसका कारण है क्योंकि जिसका आपने सुना हुआ, थोड़ा सा विश्वास डबल हो जाता है। और मैं ये मानता हूं रिक्शे वाले को 10 रुपए फालतू कभी नहीं देते। और पर जो जब इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो इन पैसों के बारे में कभी सोच नहीं होती, क्योंकि एफर्ट नहीं मारते। कारण क्या है, मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग मैं लगा नहीं सकता क्योंकि वो खाली हो गया ऑलरेडी, मैं कहीं स्पेंड कर चुका हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट माइंड, आई एम नॉट किडिंग, ये मैनेजमेंट है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। Thank you, sir, for this fruitful lecture. Now we can call it a day and reassemble tomorrow at 9:30. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Okay. हाँ जी सर। सर एक आपको वो देना मुझे।
चलेगी क्या?